Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave. While we are all aware of the importance of medium, small and micro enterprises that drive the Indian economy, today we come together to celebrate and spotlight the driving force behind Delhi's economy, its thriving MSME and emerging business sector. With nearly 2 lakh registered MSMEs creating close to 30 lakh jobs and a significant contribution to exports, emerging businesses are the backbone of not only Delhi's but India's growth story, shaping its journey towards becoming a $5 trillion economy. This conclave is a platform to explore the immense potential of emerging businesses, to discuss the challenges that they face and to uncover innovative solutions that will propel them forward. We are honored to have with us an illustrious lineup of political leaders, experts, industry leaders, and entrepreneurs who will share their insights and experiences to inspire us and guide us. Together, we aim to chart a roadmap for MSMEs to thrive in this changing economic landscape. So let's get started with a day filled with thought-provoking discussions, actionable ideas, and a shared vision for a stronger, more resilient MSME ecosystem. Once again, welcome to the NDTV Emerging Business Conclave, where Delhi's growth engine takes center stage. Before we begin, let's thank our sponsors as well. The NDTV Emerging Business Conclave is co-presented by Panasonic and Motorola. Our strength partner, Ambuja Cement. Banking partner, SBI, driven by Volkswagen. Eyewear partner, Titan Eye Plus. Special partners, Axis Mutual Fund and RRP Electronics. Co-powered by Agarwal Namkeen, Zupi, Prayag Bathware, Gold Plus Float Glass, Amba Shakti, Sri Giriraj Sweetie Supari, Protens Antacid Gel, Servocon, Rungta Steel, and Vectus Tanks. For our first session, how is technology revolutionizing the business landscape? What are the opportunities and challenges that emerging businesses face in leveraging technology to drive growth and innovation? Join us in welcoming on stage Rajneesh Kumar, Chairman of MasterCard India, as he shares his expertise in this insightful session with NDTV's Mario Shakil. Hi there, and welcome to the first session of this day-long conclave. We have lots packed in for you, and I can see a very energetic young audience. So a huge round of applause to the young audience which is sitting right there. Rajneesh ji, welcome. Why are we beginning this session with regards to technology? Because technology is no longer a luxury for small businesses. Ladies and gentlemen, it's the ultimate game changer. From the digital payments to AI-driven platforms, tech is helping MSMEs break barriers and to explore how technology can truly empower India's emerging businesses. I'm being joined by someone who's seen as a leader on the center of India's digital transformation. Mr. Rajneesh Kumar is the chairman of the MasterCard India. So welcome to NDTV. Thank you very much. Let's begin with the thought, which is particularly to do with MasterCard, because you represent MasterCard. MasterCard, sir, has been at the forefront of digital payments. My question is, how are digital innovations in particularly that infrastructure space like UPI, AI-driven credit assessments, changing the way small businesses operate and scale? Yeah, your question is very wide-ranging. It covers everything in the question. As you said and rightly mentioned in your opening remark, the technology is all pervasive. It is for individuals, it is for large business, small business, medium business, nobody is untouched. And if anyone can think that they can survive without adoption of technology, it is going to be extremely difficult. MasterCard India, of course, MasterCard as an international payment system provider
and the other network also, Visa, for example. So they were in the forefront of payment technologies where they created a massive international network of merchant acceptance. And from India's perspective, UPI became a game changer and now a competitor to these networks. So India as a country and we as Indians are very proud of what India has achieved as far as adoption of technology is concerned in the payments and banking business both. And I joined the State Bank of India in 1980. It was all manual, everything. And the real work in digitization and adoption of technology started when Indian economy was opened up in 1991. That's right. Prior to that, technology existed. I won't say that it didn't exist, but it was more in the back office operations. And after 91, when private sector banks came in, and they came without any baggage and brought in new technology, after that, India has not looked back. And it is the entire ecosystem where banks, of course, are at the core because they provide the capital, they are capital providers. But if you look at today, any aspect of banking, but I will focus particularly for SM, whether it is their collection or whether it is loan underwriting. End-to-end loan underwriting today happens. And there are various stages of loans, pre-sanction, post-sanction, monitoring, collection, and if the account goes bad, then the other recovery mechanism. Today, everything is being done through technology. If the corporate is bigger, then loan underwriting cannot be through digital. But when it comes to MSME, again, for example, I chair the board of BharatPay, which is a fintech, which came into existence just in 2018. And millions of merchants where we put our QR code and all their collections comes through an escrow account. And based on that, we facilitate loans to these merchants digitally, end-to-end process. They don't have to go anywhere. It is all on the click of a button, seamless process. In 10, 20 minutes, you can get a loan. So that is the power of technology and availability of credit today for the masses. Masses means, if we are talking in the context of MSME, the people which we always talked about that they don't have access to formal credit. It was very difficult when technology was not there to reach each and every corner of the country or to the smallest or smaller business. The technology enablement has helped the lenders, which are banks and non-banking finance companies and supported by fintechs like BharatPay, to reach out those segments of the economy who otherwise would have been excluded and very difficult for lenders to reach out to them, underwrite their loan and give loan to them. So that is the power of technology which is reshaping the whole ecosystem around which and the manner in which businesses are conducted. Lending is only one aspect. But as I said, from lenders end to end and from businesses also, whether it is their production, marketing, finance, accounts, management, everywhere you have to use technology. And interestingly, it is the youth or the young population of India, which is right there in this audience, which is driving that technology. You know, Mr. Rajneesh Kumar, most of the people here would be moving out of their homes without any cash, without any wallet. Okay, raise your hands. How many of you go outside your house with just a phone, without any cash, without your wallet? I am also included in that. Even I do that. Even my 10 rupee payment is done by my phone now. I scan and I pay. Yes. So that is the impact of technology, how closely it has touched our lives. You know, but the challenge certainly is that the MSMEs, how are they trying to adopt themselves to cost complexity, and also there are trust issues which are involved,
how do you think then technology can make small businesses more affordable? No, the whole idea around technology is to bring in the cost of operations down. Yes. As I said that today, I'll give an example again because I was chairman of State Bank of India, so I can't avoid that reference at all. So today, State Bank serves 50 crore customers. Yes. Imagine, like, how can you serve 50 crore customers if you don't have the technology? It is impossible. You can't do that. So same applies for MSMEs. So the younger people or the startup, there are two issues. One is, of course, when they come out, then need lot of holding around how the business is conducted. There the role of mentorship also can play a very critical role. So it is not only about technology, first is about understanding how the business operates. So that is one. Ideas, yes, definitely. The ideation happens at their level. Second is availability of capital. So capital is also available in different forms. Obviously, when it is a startup or a new company, the bank lending is not available, right? At that stage, it is the venture capital, and you would have some series A, B, C, D, E, F. So what it does represent that when you are just new, you have an idea, you have to find a venture capital is to fund that idea, believe in that idea, and that capital operates on the principle of high risk, high reward. Whereas bank capital, it works on the low risk, low reward. So venture capitalists will take risk. If the idea is acceptable, they will fund 10 startups, 8 may not succeed, but 1 or 2 succeeds and they get their return. That's how it works. So it is the capital, that is one. So lending capital would obviously be not available. At the early stage, it is all around venture capital, private equity. As the business matures, then the bank lending becomes available. The other way is, as I was giving example of a business like we have millions of businesses which are in retail trade. And every nook and corner of the country, whether it is urban, rural, semi-urban, you find people are in retail business. There the technology has enabled what we call cash flow based lending. The example which I gave, that the people have put their QR or a swipe machine, and the lender has access to that cash. And typically the model works is that the cash flows into the account and the installment of the loan gets recovered from that cash flow, and rest of the money is available to the business. So the lack of capital or the very high cost of capital, which was through informal sectors, what typically we call margin system of it. So the technology has enabled the access to formal credit to these people who are called, what you call as financially excluded. So their inclusion has happened on the credit side. But sir, in all of these, one issue which is dominant or which is large in terms of trust. And particularly at a time when we know about the challenges with regards to fraud prevention and data security. You know, we constantly get that call that there's nothing called digital arrest. How is MasterCard helping create safer spaces, So particularly for MSMEs, and in general having that faith that it's okay to go ahead with these businesses? Yeah. So MasterCard, normally we associate a MasterCard with say payment, but the bigger power of MasterCard, the network lies in its capability to study the patterns, use the power of data analytics, where the fraud can be prevented, protected, the identity theft can be prevented, and many a times if you use MasterCard, you will find that if you do a transaction in some of the overseas suspicious territories, I won't name any country, but you will immediately get an alert. So how does that alert come? Because there is a power of data analytics which is working behind this. So the power of data analytics, the access to the consumer behavior which we have at MasterCard or for that matter, any network. So that power enables us
to help in fraud prevention, detection, take measures, and there is a very active, in fact, a separate business vertical in MasterCard who are not only doing this, but also it is a revenue center for us in MasterCard. And, when you were at the SBI, I had the honor of interviewing you several times as the chairman of the SBI. You have always been seen as this ideas man. So now, in your new role as the MasterCard chairman, I want to understand from you again, particularly with regards to financial impact of MSMEs in the next 5 years and merging that or marrying that with the AI and emerging technologies. So it's not merger, AI is a tool. Yes. And there is HI, human intelligence, and there is artificial. So what is artificial intelligence doing? And there is a lot of course, no discussion can be complete unless you bring in AI. But the fact is that treat it as an agent. Instead of human, there is an agent based on whatever that agent has been taught and its own capability to learn. So AI can be used in any field for that, whether it is health, education, as I said, banking. So it is not merger. It is about that how do you combine the power of HI and AI. We are in an age where AI is a tool to augment the brain power. And that's why it is called fourth industrial revolution. So far, everything was around like your muscle power. Industrialization was around augmentation of humans' physical capability. A is around. You have used a very interesting phrase, and I want you to delve a little more on that. It's fourth industrial revolution. AI is that. Yeah, that's what my understanding is, and that is all where, as I said, that so far it has been all around that your physical capabilities get out. No, but then industrial revolution ensured more job opportunities. Will AI be taking away jobs or creating more jobs? The shift will be there in the skills, and this argument is a very old argument, I think. When we went for computerization of the banks in a massive way, and there was a huge debate, there was huge concern and resistance from the banking unions that the computerization will take away jobs from the bank. So that is a fact that some jobs might have come down, but the industry has grown. So it got compensated. If you look at the size of the industry in mid-80s and the size of the industry today, there's a massive difference. And industry as a whole, the number of people have not gone down. But if you think that we were doing manually and then like State Bank employs now today 250,000 people, and in 1980 also it was employing almost an identical number of people. So today, if it was to do manual, number one, the industry or the bank would have not grown the size to which it has grown. Second is the IT sector jobs. There was a shift. So earlier it was only you join IAS, you join bank. But then the 90s, I think people don't think even IAS in certain geographies, not necessarily North India, as an option. They don't consider bank PO as an option. It is all around IT. So the job shift happened and the jobs went to IT sector and it flourished in India on the strength of BFSI is a big user of technology. So I believe same thing will happen. The productivity gain will be there as far as economy is concerned. And even if when I read the newspapers and many people who are in IT industry, they have commented on this and they have said that there is reskilling which will happen. So there is a fear, genuine fear, and how it will shape up, very difficult to predict. But I have always believed that an idea whose time has to come, Yes. you can't stop it. Yes. The jobs
may go in different direction. And even in manufacturing industry, say, again, I'm giving an example. Earlier, a job which 8 welders would do with a great risk to the person. Today, robots are doing the job, right? So you can prevent it. Now, AI becomes the master or the servant. So the real danger is around that it should not become the master. It should remain a servant. Absolutely. Who will dominate? Whether AI will dominate human intelligence or human intelligence will ensure complete dominance of AI, that will be the future. Certainly, my last question to you, and this is with regards to how India is almost being watched by the world as a country which has given direction to digital public infrastructure. You know, our UPI is watched. There's a lot of curiosity and also the global attention. How do you see platforms like ONDC transform level playing fields, or should I say expand their scope of businesses, particularly of the small and emerging businesses? So it provides market access. What ONDC does, it is providing market access and bringing all platforms together. If you would have heard surely of GEM portal of Government of India. Now, lakhs of crores of procurement of the government, it is happening on GEM. And it democratizes, it brings in transparency, capability of SMEs to provide to the government departments their products. Earlier, it would have not been possible but for a portal like GEM. So the transparency, democratization, commoditization, that is all an outcome of the technology. And as I said, that it makes an enterprise more productive. And when the enterprises become productive, and if you see the aggregate effect, then the economy as a whole benefits nation. We as a nation benefit, we become a more productive. So even today, of course, it's a great thing to be amongst the largest economies. But fact of the matter still is that when measured by productivity, we as a country are very low in the ladder. And because Indians have a natural flair for technology, that I can say. I've National seen. fear. Yeah. Adoption is fast. Is a huge task. Everybody. In general, and across class, across societies. Across society. So adoption is fast. So for improving the productivity, and if we continue and should continue and will continue, I am very confident about it, that we use technology extensively to improve the productivity of the Indian economy. And only then we will go up the ladder, will be able to improve our per capita income. We have achieved a sort of a landmark in terms of the size of the economy, where now we are counted amongst world's largest economies. But the real benefit would be when in terms of per capita income, removal of poverty completely, when that happens, then we will be counted amongst the developed economies. And that is possible only when we have a very positive attitude toward technology. We should adopt technology. We should continue to innovate. And there is still many countries maybe ahead of us. So we should not deny that aspect. We should be proud of our achievement. Absolutely no doubt, it is good. But we should also be aware of the ground reality that much more work is happening around the globe. And we may be amongst the forefront, but we are not the leader in that sense. I think that is the right note to end this discussion. Mr. Rajneesh Kumar, pleasure having you on our platform. Thank you so much for this illuminating discussion. Thank you. Pleasure talking to you as always.
Thank you, Mr. Rajneesh Kumar, for sharing your expertise and your wonderful insights. On to our next session that will focus on strategies for businesses to achieve growth while prioritizing sustainability and environmental responsibility. Moderating the session is NDTV's Sikta Deo, who is in conversation with Mr. Hemant Jain, President PhD Abhishek Gupta, Chairman Clean India Ventures, Dr. S.N. Chandak, Chairman Shield Biotech Limited, Mr. Mohit Singhvi, Head Corporate Affairs, Chakra Innovation, and Abhay Mahajan, Managing Director, Asian Consulting Engineers. And the guests are going to join us in a short while. Meanwhile, the Delhi police is going to just go around this space and frisk this space to check the security. One, two, three, one. One, two, three, four. One, two, three, four. Number four. One, two, three, four, five. Six, last. Check, 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 check. Seven number, seven number. Seven. All right, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Hemant Jain, President PhD Abhishek Gupta, Chairman Clean India Ventures, Dr. S.N. Chandak, Chairman Shield Biotech Limited, Mr. Mohit Singhvi, Head Corporate Affairs, Chakra Innovation, and Mr. Abhay Mahajan, Managing Director, Asian Consulting Engineers. Today, we are not just discussing business, we are discussing the future.
Sustainability is no longer a choice. It is a foundation on which successful businesses are being built. Our MSMEs are the lifeline of economy, agile, innovative, and resilient. Now is the time for them to lead the way towards a greener and a stronger future. आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देख रहा, वो प्रोसेस भी देख रहा है. आज के इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देख रहे, वो पर्पस भी देख रहे हैं. Sustainability is not about slowing down growth, it is about building growth that lasts. It is about making businesses future-proof, market-ready and globally competitive. हमारे MSMEs के पास ये golden opportunity है दुनिया को दिखाने की कि innovation और responsibility एक साथ चल सकते हैं. Today, we are joined by incredible MSME leaders who are already showing how sustainability can transform production lines, open new markets and create impact at scale. आज हम सीखेंगे कैसे एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल बनकर हम अपने सपनों को, अपने देश को और अपने प्लैनेट को एक बेहतर कल दे सकते हैं. हमारे साथ एक बेहद खास पैनल, मिस्टर हेमंत जैन, प्रेसिडेंट PhD CCI, अभिषेक गुप्ता, चेयरमैन क्लीन इंडिया वेंचर्स, डॉक्टर SN चंडक, Chairman Shield Biotech Limited, Mr. Mohit Singhvi, Head Corporate Affairs Chakra Innovation, Abhay Mahajan, Managing Director Asian Consulting Engineers. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, a warm welcome to this stage. Mr. If I can start with you, is being sustainable the only way ahead for our MSMEs? I think, like you said, it is the only way. The process has to be followed, but I would say the infrastructure which large corporates have, the MSME don't have. So I think it is important for government to incentivize MSMEs to get into the sustainable factor. Today, if you talk about the top 500 Fortune 500 companies, out of that, at least 300 to 400 of them have made it mandatory for the suppliers to be sustainably compliant. If they're not sustainable, you can't sell the product there. And I think this is only going to grow as we move forward. So I think for large corporates and for small, I think sustainability is the only way forward. But they would, for MSME, like they said, the CEO of MSME is like a entrepreneur, manager, and all put together. So there will need to be a government support and incentivize for us to move forward. Right. अभिषेक, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि आजकल के MSMEs के लिए क्वालिटी और प्राइस नहीं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी एक अहम इशू है? ये बहुत बड़ा इशू है. मैं थोड़ी रिसर्च करता हूँ और मैं अपना वेस्ट मैनेजमेंट के काम में, तो मैंने ये देखा है कि पिछले 3 साल में 4 साल में जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो क्वालिटी पे जा रहे हैं रैदर देन द कॉस्टिंग. तो वो क्वालिटी किस सेंस में आ रही है, whether the company has green certifications or not, whether they are a quality product. Let's say a motor, in our machine motor एक बहुत essential part है, तो आप वो quality motor लगा रहे हो या नहीं. So that has sustainability has become a very big factor for big corporations as such, as my experience, and I think yes. डॉक्टर चंदक, अगर मैं आपसे पूछूं, आज के बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी का competitive advantage मिलता है, does that give that edge? Smita, first of all, I congratulate you that you have chosen this subject of MSME. MSME is not today only the marginal small industry. It is a solution to national problem. If you today's prospect, if you see what are the national problems, there are 3 major. First of all, first issue is Pelgam, how to handle, number 1. And second is unemployment. Third is inflation. So MSME is the only sector which can help this to eradicate problem of these sectors, unemployment. If we spread this MSME, it's the only area which can be spread into 728 districts of the country. Big industries cannot go to 728 districts, but MSME definitely can go to 728 districts. It can create employment, it can create industrial development, it can create the income of the farmer, it can create the income of marginal small entrepreneurs, and today the contribution of MSME in the industry is the 30% of the GDP is contributing by MSME. I think if we have a target, if the nation has a target for 50% share,
then there will be havoc. The entire scenario of the country will change. Entire production system will change, entire entrepreneurship, entire poverty, per capita income, and but as a MSME has got some other issues also, which we have to handle. There are some problems of the availability of finance. Banks are insisting them for the collateral security, which of course is a larger issue which can be handled by the Ministry of Finance. Of course, they are considering it, but it needs to be done. Then there are some other issues of the branding. Other multinational companies are coming with a brand value. MSME are small industries. They cannot create brand value because of lack of fund. They need investment for the brand value. So these are some of the issues. Then digitalization is another issue. AI is the another issue, which of course MSME has to adopt, and government has to devolve some system to support them. Then definitely this sector can create a remarkable growth and improvement in the development of this country. Mr. Mahajan, talking about the global trends around environment and climate, are Indian MSMEs rethinking and reconsidering the way they work and now to be more sustainable and catching up with the global trends? I think it is not a choice, but it is become a necessity, because there are many government legislations are coming as a fallout of the Paris Convention that has happened, and there is a lot of awareness that has happened worldwide about the, I would say, clean businesses, circular economy. So obviously the MSMEs need to be part of that entire process, and they are required to be involved into that to make themselves future proof, because it is necessity for them to do that, to stay competitive in the market. Abhishek, how has sustainable practices improved efficiency, reduced cost and open markets? Cost, when we talk about the cost for our machines as such, the way we take it, because we are MSMEs, so we have certain regulations and certain guidelines that we follow. Right. When we follow with the vendor, so they need to give that product, and since MSMEs are very they don't have financial resources as such, they have I think they have a huge bargain power with the vendors. अब मोहित, आप एक परसेप्शन होता है लोगों का कि अगर आप सस्टेनेबल हैं, ग्रीन प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, तो फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, आप एक महंगी कंपनी बन सकते हैं. आप इस पर से पर्दा उठा सकते हैं? सो ऑफ कोर्स देखिए, कॉस्ट पे थोड़ा तो इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन एक एमएसएमई बड़ी कंपनी बनना चाहती है, राइट? तो जब भी बड़ी कंपनी बनना है, उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लेके आने पड़ेंगे. अगर वो आज नहीं लाते हैं, जैसे हमारे केस में हम भी एमएसएमई हैं और हम भी सीख रहे हैं कि हमें हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या लाना है, अपार्ट फ्रॉम जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो हेल्प कर रहा है सस्टेनेबिलिटी में हमारे कस्टमर्स को. लेकिन एज अ कंपनी हमें क्या सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस चाहिए, बिकॉज जब हम बड़े बन जाएंगे तब जो हमारी कॉस्ट आएगी वो उससे 10 टाइम्स हो जाएगी. और अगर आज ही हम वो प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करेंगे, थोड़ी कॉस्ट बढ़ेगी यस, लेकिन जब हम आज हमारे पास 2 प्लांट हैं, हमारे पास 1200 लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कल वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तब चेंज लेकर के आना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, हमारे वेंडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. तो अगर अभी से हम लोग धीरे धीरे करके छोटे प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं कंपनी में, और वो माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है. और इसमें हमारे कस्टमर्स भी हेल्प कर रहे हैं. जैसे सर ने बोला था कि बड़ी कंपनीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं उसको कैसे करना है, और हमारा काम है हम उसको सिर्फ उन कंपनीज़ के लिए नहीं, लेकिन बाकी कस्टमर्स के लिए भी, जो बाकी छोटे एमएसएमईज़ हैं, उसके लिए भी कैसे उसको इम्प्लीमेंट अभी से करना शुरू कर दें. तो ये हमारा टारगेट रहता है. कॉस्ट इम्प्लीकेशन है ऑफ कोर्स, लेकिन फ्यूचर में वो कॉस्ट जो है वो मतलब एसेट बन जाएगा हमारे लिए. बिल्कुल. और आप वो रास्ता दिखा रहे हैं, तो जो एमएसएमईज़ हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आप लोगों की राह भी मुश्किल हुई होगी शुरुआत में. उनको मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टोरी किस तरह से आप उनको बयां करेंगे? हमने हमारे प्रोडक्ट जनरली प्रदूषण कम करने के हैं. हम लोग कुछ बैटरीज भी डेवलप कर रहे हैं, और हम जब एमएसएमईज़ के पास भी जाते हैं, हमारे क्लाइंट्स बहुत बड़े क्लाइंट्स, फोर्ब्स 500 कंपनीज भी हैं, हमारे बहुत छोटे कस्टमर्स भी हैं. हम सभी को यही समझाते हैं कि ये करने से जो हमारे प्रदूषण कम करने वाले जो इक्विपमेंट हैं, डीजी सेट से हम लोग प्रदूषण कम करते हैं, उससे उन्हें क्या फ़ायदा है,
उन्हें आगे क्या फ़ायदा होगा, उनके क्या कंप्लायंसेस मीट हो रहे हैं, वो हम उनको सिखाते हैं कि ये छोटी कॉस्ट है लेकिन फिर भी आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसका, और उससे इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी आज की डेट में हमारे 30% जो कस्टमर्स हैं वो MSMEs हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े कस्टमर्स को ही हम वो दे रहे हैं, हम छोटे कस्टमर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके सस्टेनेबिलिटी ड्राइव में। बिल्कुल, जो what you are saying is that's the future and you have to move towards it. There's no other choice left rather than being sustainable. Mr. Jain, has sustainable practices opened up new customer segments and new market and new businesses? I think before I answer that, I would just like to take a line from him. Ki the problem with MSME is that once you try to be sustainable, the capital cost goes up. Initially आपकी capital cost बढ़ जाती है, but बाद में जैसे अगर आप solar power लगाएंगे, तो आपका solar power cost is cheaper than the normal electricity you get, but आपको initially एक investment करनी पड़ती है पूरी। तो what I was saying earlier was that अगर उसमें थोड़ा government support मिलता है, and if that's one thing, and second is mindset change. जो ये आपका प्रोग्राम कर रहा है आज, जो आप लोगों के, आई एम श्योर यू विल गो ऑन टीवी एंड अदर थिंग, तो माइंडसेट चेंज एंड अवेयरनेस कि दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड जो ये आप कर रहे हैं आज, आई थिंक दैट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। एंड वंस द माइंडसेट चेंजेस, आई थिंक अलॉन्ग विद दैट आई थिंक थिंग्स विल ऑल चेंज। सो कैन आई हैव योर क्वेश्चन अगेन प्लीज? सॉरी, आपका क्वेश्चन दोबारा बताएंगे सर? So, what I wanted to know was, like, has these practices, the greener practices, the sustainable practices, has it opened up new customer segments, new markets for new businesses and MSMEs? So I would say they have opened up the markets also, or it has become mandatory also in some cases. कि आज कई सारे, मैंने बताया, पहले ही बताया था, जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, वो माल ही वो लेती हैं जो सस्टेनेबल हो, कंप्लायंट हो। शेल है, एक्सॉन है, लार्ज कॉर्पोरेट्स, उनका एक नॉर्म है कि हमको 2040 तक या 2030 तक हमको कार्बन न्यूट्रल होना है। तो कार्बन न्यूट्रल तब हो पाएंगे जब वो कार्बन न्यूट्रल मटेरियल लेंगे, तो और कार्बन न्यूट्रल मटेरियल तब लेंगे जब हमारे ऐसे MSME लोग भी उससे ग्रीन कंप्लायंट करेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रही है। और अगर जैसे बाहर के देशों में आज के दिन में वहाँ पे ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं, अगर यहाँ पे एक MSME के लिए भी अगर एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि आज अगर आप सपोज आज शेल है, बाकी हैं, इफ़ दे बिकम कार्बन न्यूट्रल दे गेट ग्रीन क्रेडिट्स विच इज़ ट्रेडेबल। अगर वो यहाँ पे भी इंडिया में भी शुरू हो जाए, स्पेशली फॉर MSME, तो एक MSME को इंसेंटिवाइज रहेगा कि आप ये काम कर रहे हैं इसलिए आपको एक ग्रीन क्रेडिट भी मिल रहा है। बट येस, आई थिंक मेनी डोर्स आर ओपनिंग फॉर बीइंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, फ्रॉम द सप्लायर साइड, एंड जनरली आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ बिकम, आज के दिन में कहते हैं ना, एक ट्रेंड हो गया है। तो टुडे सस्टेनेबल इज बिकम द ट्रेंड टुडे, इज अ न्यू बज़वर्ड। बिल्कुल। आप, क्योंकि बहुत सारे दर्शक, हमारे टीवी के दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं और यहाँ पर जो लाइव ऑडियंस है वो भी, इसलिए कस्टमर्स के की जो सोच है उसको समझना भी इस वक्त ज़रूरी है। क्या सस्टेनेबिलिटी को लेकर उनके एक्सपेक्टेशंस आपने देखा है कि धीरे धीरे बदले हैं कस्टमर्स के, जो आम कस्टमर्स हैं? You can see it very well that there is overall demand for organic food products. There is overall demand for the products which are green labeled or green certified, like ISO 14000 certified, or the products that have sustainability certificates, and people are ready to pay prime prices for that. So overall, yes, there is a I would say demand for this kind of products, because overall public has, especially the young generation, they have realized that that is the only way to forward, because it's not the resources that we would like to consume today, but we would like to have those resources available tomorrow as well, and that is only possible through following these sustainable practices. So yes, there is a overall demand and there is overall growth for that. So while the production companies are realizing this is the way forward, there is also an expectation from the customers. That's what you're saying? Yes, there is an expectation from the customers, and there is a demand for that kind of products in the market. So like people prefer to go for 5-star air conditioner compared to a 1-star or no star air conditioner or refrigerator, and people are ready to pay premium price for that. So that's the reason, basically is because there is awareness, there is a realization that this is the only way we can go forward. ये तो बात रही customers की, Dr. Chandak. If we talk about the investors, are investors also curious to know who is practicing sustainable practices, who is taking it forward, and those are the preferred MSMEs for the investors too?
Smita, I would want your opinion also on that. Your question is absolutely correct. See, basic fundamental hai, investor is looking for the profit. Investor is looking for the opportunity. Investor is looking for the growth. So MSME, as Mr. Jain has rightly pointed out, that there is enormous scope. Now there are certain sectors which are only for MSME. Agra ka the leather industry of Agra, it is only MSME. Export, handicraft export, only MSME. There are Bhilwada mein, there is a textile segment entirely. So we have to create more hubs, MSME hubs in the country. Then only the real target we will achieve. The opportunity will increase, the turnover will increase, the investor will definitely get attracted, because investor needs money, return of the investment which he is making, plus the employment, as I rightly told you earlier also. So there is an enormous opportunities for MSME and support of the government, which of course lately it is only, and at the time of Atal Bihari Vajpayee, that separate ministry has been created for MSME. Right. Now government is giving focus, but it needs more focus, so that we, public, the investor, the own citizens, industrial development, export, all can get benefit. The import substitution, we have to reduce the imports, and MSME can definitely help. And the slogan, Narendra Modi ji's slogan, for India for India. So we can achieve all these by creating more, we give to more focus to the MSME. That is only possible. Thank you. Tell us the mantra of attracting more investors through sustainability. I think you have said the golden words. These are truly the golden words. Today we see Adani Green, the P ratio is over 100 because they are sustainable. This is focus of government. तो अगर आज कोई भी बिजनेस, अगर आज दे आर स्पेसिफिक फंड्स टुडे, आज स्पेसिफिक फंड्स हैं जो खाली सस्टेनेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जैसे ही आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो जाता है, आपका जो मार्केट कैप है, जो आज के जिसमें कंपनी को आज वैल्यूएशन माना जाता है, तो मार्केट कैप डेफिनेटली गोज अप बिकॉज ऑल द पी फंड्स आर लुकिंग एट, all the bankers, local institutions are all looking at the P ratio of a company which is sustainable and not sustainable. There is a marked difference in that, and this is the way the world is looking at today. तो आज के दिन में I think today जो MSME की बात कर रहे हैं, उनके सबसे बड़ा ड्राइवर है, if they want to create value out of the business, अगर उनको अपने बिजनेस को में लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है, तो सस्टेनेबल करने से उनके पास अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड. बिल्कुल. एंड आप दोनों से हम समझना चाहेंगे अभिषेक पहले आपसे कि क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से आप जो कस्टमर ट्रस्ट है वो आप लोगों ने क्या देखा, एक्सपीरियंस क्या रहा है, बढ़ा है, और जो फंडिंग है क्या वो बढ़ी है क्योंकि आप लोगों ने वो प्रैक्टिसेस अपनाए? जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ फेस किया है, earlier I didn't have any sustainable practices to follow as such, but as the momentum went up, I researched and then I started doing the sustainable practices. Then client ने देखा कि हाँ हमने we followed up the practices, and even the clients referred to us are for other clients कि they are a company which follows certain practices and they have to be they are a very good company. I'm taking an example, and so yes, we must follow the sustainable practices. And for as far as investors concerned, I didn't have any experience as such because my company owned by mine own. Right. So, Mohit, if we can understand from you, has the customer trust increased following sustainable practices and funding opportunities? You've seen a change in that? So, as I told you, we are in pollution emission reduction, right? What we have seen is the decision making for these products typically is taken by the top management. And the trust that we are getting from there is such that now they trust us not only for their emission reduction, but any other thing that is required for them to become compliant with air pollution, etc. They ask us. So we are now becoming their solution providers. So they call us directly and ask us, grab period is coming in Delhi, what should we do, how do we run our DG sets, etc. So that trust is extremely important for us. As far as investors are concerned, as long as the business model is important and it is something that the future is there, and like air pollution is where we are, and air pollution, they know, the investors also know that it is a big problem to solve. It will take few years for us to solve. So they know that there is money to be made here,
and they are more than happy to, invest in companies like this. So if the problem is there, lastly, I wanted to add something which you had asked earlier. It is not just private companies, even government departments, government companies also have their R&D budgets, etc., where they are spending a lot more on sustainability now, because that is the future, and we get a lot of grants, we get a lot of prize monies, etc., also from them. So we keep participating, and departments, I mean, the associations like PHDCCI and others help us, reach out to those government departments, government institutes who are providing them as well. So overall, the entire ecosystem is helping companies develop products for sustainability as well as make it mandatory and, make it a part of the entire ecosystem. Right, and we are reaching the end of this conversation. So I really want to get an idea from all of you about the future ahead for MSMEs, for sustainability. आपसे जानना चाहेंगे जैन साहब कि MSMEs अपनी sustainability efforts को effective तरीके से अपने customers, अपने investors को कैसे पहुंचा सकते हैं? So I will just take a lead from him. He's in air quality. If we go to abroad nowadays, we see air quality index. आज से 5 साल पहले air quality index नहीं होता था. I think companies like him are doing a good job. तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा ये वहाँ पे होटल में तो घर पे भी करिए. So I think the word is spreading across, and this will do. I think how do we get through to people at large? I think it's something which is already spreading. आपका जो ये एक event है, ये भी एक process है उसके अंदर. We at PhD CCI, we have 1.5 lakh members, direct and indirect, who are part of the industry association. So we are spreading this news. We are also the leader in the green hydrogen business. We have a center of excellence. So आज के दिन when we speak to industry segments across, I think everybody is aware of it. We just need to change the mindset. Like I said, the decisions are taken from top management side. जब हम industry leaders से बात करते हैं और ये message बार-बार बोलते हैं, तो ये message जाए. I think there's no choice. People have to do it. The more the message we give it, it will happen faster. Yes, keep talking about it, and that's the way to create awareness. Abhay Mahajan, one piece of advice if you want to give to the MSME owners who are still scared of taking that first step towards greener practices, sustainability. I think the MSME owners has taken the biggest challenge of starting a company, and he is operating a successful business. So when he is heading an organization, he is looking after functions like technology, he is looking for production, marketing, he is human resources, labor and compliances. So these are different domains which he is overseeing and heading over that. In addition to that, I would suggest that he should have some sort of a sustainability advisor with him. There is a lot of information available on internet. I mean, somebody can deep research into that, like a knowledge researcher, knowledge bank, and provide some inputs to him. And sustainability need not be a very complex solutions. It can start with a very simple solutions which they can start implementing by discussing with their different team heads. And there is also a need taking from him that we need to also market what we are doing it. So like there are a lot of platforms available, LinkedIn, Instagram, there are a lot Keep talking about it, that's what you're saying. Yes, keep talking about it. Let people know that what you are doing it, share your ideas, and ensure that you have proper certifications in place for your products, so that automatically the visibility increases and there is a new market that opens for them. Right, right. अगले 5 सालों में sustainability और MSMEs का future आप क्या देख रहे हैं? अगले 5 साल में there are a lot of scope, because all the MSMEs are going for tech, and this with the support for the technology they are going for R&D, because the R&D is the backbone. Until unless they go for R&D, technology will not improve, and they will not be able to compete the multinational. So the demand will increase, but at the same time MSME people have to give quality. Then only the customer faith will be there. So for that, continuous all ongoing effort has to be done on technology, R&D, creating infrastructure, and compete all other people, so that they can capture the biggest market share of the country, where entire world is looking for it. Right. So sustainable practices and sustainability is the future and the road ahead. And like the panelists here are saying, keep talking about it. If you are doing it, then let's talk about it. Thank you so much for joining for this lovely conversation. Thank you. So nice, very well handled.
Shivani? Shivani? I'm saying let them clear the stage. Let them clear the stage. फिर मैं जा रहा हूँ ऊपर because बहुत ही हौच पौच हो जाएगा. Ladies and gentlemen, up next is a thought-provoking discussion on empowering women entrepreneurs and the role of female-led MSMEs in India's growth story. Our guest for this conversation will share insights on the challenges and opportunities faced by women in business and explore strategies to support their success. Please put your hands together for Naina Lal Kidwai, who will be in conversation with Suchitna Ray. Thank you, Osama. India's growth story will be incomplete without the full participation of women entrepreneurs. As India hurtles towards a developed nation status by 2047, we would need to enable more and more women to lead, grow, and scale. And in that, MSMEs will be critical. To discuss how we can bridge the gap between women, wealth, and work, I'm joined by someone who has been a trailblazer herself, Ms. Naina Lal Kidwai, an ardent advocate for gender inclusion and entrepreneurship in leadership positions. My first question to you, ma'am, let's keep it topical, and I'll have to ask you about the reciprocal tariffs which has been spelled out by the US. And so which are the sectors will be most impacted? You know, the crystal ball gazing that must happen with the reciprocal tariffs is one which we will be doing for the next year, because it's one that unfolds, and now as July comes in, we will have a much greater idea as to where these tariffs will actually settle. I would just say that I was looking at a study done by FICCI, which is talking about, at the moment, what looks like negative impact and where the opportunity lies. So let's start at where and which sectors the opportunity lies. And I think the MSME sectors that will benefit are huge therein, because what has been identified in this report is apparel, made-ups, footwear, and I was just talking with someone where it's not just leather footwear, it's synthetic footwear as well. So, you know, I'm thinking, what and does it take for us to be the manufacturers for the Adidas and the Nikes, etc. Gems and jewelry looking very difficult, as in one that is negatively impacted. Electronics and furniture as positives. And the ones that look negatively impacted is quite a wide range. Marine, tea, honey, bakery products, dairy, spices, guar gum, these are the negatives. Carpets, gems and jewelry, and medical devices. And then there's a whole bunch of sectors which are not impacted, which includes pharmaceuticals, steel, aluminium, copper, automobile, auto components. But I would just add, as of now, because it's not as if these are not in the crosshairs.
So a lot evolving, but some fortunately which are standing out. And for the MSMEs that are either in there, okay, to look at it, again, looking at apparel, made-ups, footwear, furniture, electronics would be areas to certainly begin to see the export potential of India. This particular export potential, I think, can happen through direct connect, through e-commerce, which is an enabler, through government policy, which I think is required to help and aid. And if you want, I could even touch on what, as MSME manufacturers, as associations representing MSMEs, what we might be required to do. But that's really your call, if you want me to touch on that. I'll come to that in a bit, but before that, since we are enumerating the factors which will enable MSMEs to play a bigger role, one critical factor has been finance and access to finance. And this is where I'll bring in the gender aspect of it. You know, there's data which shows that the finance gap in MSMEs is 5.7 trillion. Yeah. Women-led enterprises in the MSME sector represent 23% of all MSMEs, but they account for 32% of the finance gap. Is there any empirical evidence against women entrepreneurs which keeps lenders away? So, you know, this has been an area of deep concern. I can only say that we started from a huge gap, which is closing. It's closing because government has itself focused on programs to help women entrepreneurs, women startups, and that is working. So the gap is closing, but as you've correctly highlighted, there is a gap which shouldn't be there because empirical data, and maybe we don't collect this sufficiency, rating agencies should be collecting this better for us to see how do women entrepreneurs, women-led MSMEs perform vis-a-vis male-dominated ones. And I would think that the collective data there would actually show that it's at least equivalent, if not better. But the perceptions that have been there and the ability of bankers and financiers to address this predilection to favor male-dominated industries remains. And I think recognizing that there's a perception gap, ensuring that we can correct it with the data that is available, because if the data is showing that these women-led industries are indeed strong and good, I think we will be able to get over these perception gaps better. I think there's progress made, but a lot more progress that needs to be captured and covered on this score. And you'll find in the startup industry, and in fact, as we were discussing earlier, that there is a favoring, certainly by the offshore venture capitalists and even the PE firms, to favor industries or startups which have at least one woman in the core founding group. Thank you, brought it up, ma'am. I wanted to take off from there. There's data that I had crunched about a year back, and it was basis the stated, vision of PEVCs to look and fund startups which have at least one woman in the founder set. However, when it comes to startups, especially the tech startups, when they are founded by only women, we see funding go down year after year since post-pandemic. Now, again, perception gap there? Yes, clearly a perception gap. And I think that is why we have to assemble data to prove why that perception is really coming from a very male-centric thinking, and that it is wrong and that it needs addressing, which can happen to some extent from some of what government enables through the funding schemes that it has. But clearly, I think data and analysis and people like you pointing it out become very important to wider dissemination of sector. that analysis you made. Also, when it comes to budgets, budget after budget, we see there's intent from the government, specific women-centric funds are announced, and you were mentioning that there has been some change on the ground. But however, we still have 32% of women MSME owners suffering from finance gap. Yeah, so it's really back to exactly this, that it's a fact, no one can deny it. What do we need to do to close that gap?
And I think at one level, the technical training and skilling that happens with women, because women have traditionally not been so much in the tech startups as in startups that are much more in sort of apparel, arts and crafts, fashion, jewelry. And there's, again, I think, a focus really on those sectors rather than recognizing that women also come into the STEM fields. Right. They do actually come out of universities with these degrees. Why are they not there in that startup universe? So we have to work both at the skilling and the encouraging at one end, but on the other with the perception gaps that exist by those that belong to my erstwhile industry, which is the world of banking. I have to ask you this question. You know, ma'am, when you were heading HSBC, there was a long gap before the next batch of women bankers came about occupying the corner room. Again, once all of them had gone, it's been almost a generation we've not had a batch of women bankers occupying the top position in banks. Again, what I think, goes in there? You'll find that the public sector has thrown up some. Yes. But you're right, in the private sector, after we saw the ICICI women sort of spring Yes. out of the leadership change that happened there, we haven't had that same level of CEO heads at the same time, because there were, other than Chanda Kochar, who took over at ICICI, there were 3 others that Shikha. emanated Yes. because of that. Shikha, Kalpana Moparia. We saw it also in the innovation areas with multiples coming up as well. But I think, we will just have to continue to nurture the women that are coming up through the system. And there's no dearth of women in the banking system now. So I don't think it's an area to focus on. It's an area that has been proven. I don't think women need to now prove the fact that they make for good banking heads. Right. So it's now just a natural process as they come through the system. And the good news is there are many there. And it isn't such a gap if you look at the fact that the public sector banks have thrown these up. The private sector can do better now, again, in terms of We'll come back and the to- gap, yes, when you say a please. long gap, I mean, the gap between when I was CEO and this next sort of clutch came up was about 5 years, Right. which is not a decade. No, after so we you can demitted tolerate office, that. it's been after you demitted office and after we saw the batch which included Shikha, which included Chanda, retiring, we've not seen again a batch They'll of... come. Okay. I wouldn't worry. And I don't think it's an area that needs work on anymore. It's proven, it's done. Women are very much part of that banking system, and may the best person lead. I don't think there's discrimination there. The system will throw up the best, and they will come through the system in the natural course as the next CEOs and heads. And if you look at the financial sector as a whole, NBFCs, Aditya Birla Finance, etc., there are lots of very prominent women heading finance companies, NBFCs, insurance companies, asset management companies, and indeed banks as well, through the public sector banks right now. No dearth of women there, no discrimination there now. In my previous conversation with you, you've always pointed to the fact that while there is no discrimination anymore, because women have managed to establish that they make for great heads of finance firms, but perhaps mentorship is what is important. And with that, I'll connect to the MSME sector. How can we have more and more women pushed into the workforce? So I think this is an important aspect, employment. And employment of men and women, job creation, and the MSMEs become critical in terms of what manufacturing means for employment. I don't believe big manufacturing is ever going to create the jobs. For 50,000 crores in an aluminium plant, you may employ 200 people. So the capital investment versus employment for large industry is never going to give India what we want in terms of job employment. But what we do need is the supply chain that will go into these large companies, which will generate more employment, and the MSME sectors, standalone as they are, in terms of employment generation. Now, this will vary. So you get
the sort of SME or even MSME sectors, for example, apparel. Right. And I remember a decade ago visiting one of our clients in Tamil Nadu, actually set up by one of the large Sri Lankan apparel manufacturers, making intimate wear. And the entire plant was staffed with women, entire plant. So working in such a manner that even though I had come in, there were a bunch of us, clearly as visitors, not one of those women looked up. They were so busy doing their little stretch on the machine before they handed over to the next. Beautiful production line. Their supervisors were women, and they had entirely hired, including those supervisors, had all come from the neighboring villages. So these were like, not more than, they'd studied maybe to the 8th or to the 10th grade, that's it. But they were here also being supervisors, so they were encouraging these women to rise to be supervisors. And what was remarkable was it took just 5 years for the social structure of the village to change, where a village where how the system is, women get married, they move to the village of their husband's family. These women began to insist that the men move to their village because they didn't want to give up their jobs. It took just 5 years for that social change to happen, that the men began to move to the village where these women had these jobs. And the focus that was given on the nutrition for these women at the factories, the tests and checkups, checking for anemia, giving them that milk and banana in the morning as they come, managing their entire food cycle, just superb. So we have that kind of example. It took a Sri Lankan company to show us what we needed to do, and there's fortunately a lot of replication of that. In Sri Lanka, they had the same success. Then you come to the MSME sectors, which, if they are higher tech sectors, we need to basically have more women joining sectors which stem from STEM, that we need to ensure that they see the job employment opportunities therein as well. But I should just say that across the board, the employment generation, whether men or women, and the focus that we can provide through MSME is a very big one for us. And as we look at supply chains, I think there e-commerce plays a key role. Big buyers play a key role. Yes. I was just meeting with some executives from Walmart, and so you get the sort of Flipkart chain, and their desire to buy from India, to buy toys, to buy furniture, to buy home products, whether it's photo frames or home textiles, apparel. These companies across the world, will buy $20 billion of product from a single country. Can we ensure that they see India as a supplier to the world much easier than each individual company trying to sell directly, but rather to rely on big buyers and be part of their supply chains as they supply to the rest of the world? And do we favor large aggregators of this order? I remember talking to Li and Fung, which was one of the big apparel aggregators out of China. They used to do $20 billion of product a year out of China into the rest of the world. And they were probably buying from a lot of small and large-scale manufacturers, pulling it all together, providing the product to the JCPenney's and the H&M's and buyers around the world. So we need more of such players who can help provide that avenue from our MSMEs across products into what the world wants. And I think if we go back to where, the list I'd given of those export products which can work, many will end up being smaller size companies. And it's hard to access your buyer each time or have the negotiating power with that buyer at the end of the chain. However, if there's someone who can play this role, or e-commerce itself as an enabler, then we have that potential to become a big exporter to the rest of the world. India is not a big success story on exports at all thus far, except services. So how can we become a strong export story, nascent successes in electronics and iPhones,
Uh, we are not even a big apparel player. I mean, you know, you well know that aside from China, Vietnam, Bangladesh, etc., all do a better job than we do. So where are our export strengths? Why are we not a large exporter? And it has a little bit to do with capital costs, finance, which is more expensive than it should be. There is everything to do with logistics, which we are still better than where we were, because the logistic costs, thanks to the efforts of this government, is dropping to single digits, but it's still not competitive enough. We need to halve our logistics costs further to be truly export competitive. And then there is the paperwork and the bureaucracies that go with the export market. So how do we clean this up to truly be an exporter to the world? And that's, I think, where our MSMEs have to play a critical role, identifying what you need and what needs to be done so we can really play into the advantages that this tariff war is going to throw up for us in India. Of course. There's another story which India has been concentrating on, which is to get the developed nation tag by 2047. And from the examples, and you've been trying to underscore how MSMEs have played a critical role in China, or whether it's America in its early years of massive economic growth. You think it's mission critical also for India to ensure growth in its MSME sector to achieve that target? So I've seen a study which says we cannot achieve developed company status in 2047 if our GDP isn't growing at 8%. Right. I'm just the math of it. And we are not at 8%. In fact, the estimates are all showing more like 6.1 to 6.5 right now. So how do we bring that whole GDP growth up to 8 very quickly? Because the longer we take to reach that 8%, the longer it takes us to reach the 2047 developed economy status. And I think the only way will be if we can get, of course, our service sector, that success done, employment generation through some of the service sector, because that is a very rich employment generator. It's IT, tech, all of that, but tourism could be such a big employment generator. And what employment generation does is it creates huge domestic demand, and domestic demand drives growth. Right. And MSMEs can play in the tourism sector in every way, you know, supplies into those services that are required. But then also the manufacturing, where again, the employment generation of MSMEs, as I mentioned earlier, is a huge opportunity and a critical one for us to deliver that 8% growth, which we so badly need. But in order to do that, I think if we are to really gain from the disruption in the world's trade flows right now, and it is a huge opportunity for India, there's a lot that we need to do to make sure that we can achieve it. For example, just having helplines set up, which helps MSMEs and companies to really navigate what this change looks like. There may even have to be support and subsidies for those that need to now actively... Access to information would be as critical as... Absolutely. Information, where and how best to play, what does this mean for us, how and what do we need to tide us over the tough parts. Government itself being very vigilant on dumping. I think the big fear here is if China's biggest market, the US, goes south, then where is China going to dump its product? Dump it will. And how do we protect on that? What do we protect? How do we stay competitive as industry? Because if we are not competitive, then in the long run, we are not going to survive either. So many aspects of how we have to transition in ways that enable us to take advantage of the benefits. Absolutely. Both in terms of the near term and the longer term. Absolutely. In terms of availing of that. Thank you so much. We've completely run out of time, but it was a pleasure speaking to you, ma'am, and thank you for taking the time out. But before you go, we would like to request you to felicitate some of the business leaders over here.
Thank you for that wonderful conversation, Suchitna and Nanaji. Nanaji, I would request you to please stay with us as we recognize some of the business leaders and their contribution to business growth and innovation. I would like to invite on stage Arshad Nizam, Alliance Advertising and Marketing Private Limited. Mr. Rajinder Kumar, Executive Vice President, MGH Spices. Vishnu Sharma and Sapna Sharma, co-founders, Efficacy Worldwide Private Limited. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Up next is a conversation with Mr. N.K. Singh, President of the Institute of Economic Growth and Chairman of the 15th Finance Commission. Mr. Singh will share his expertise on India's economic landscape, fiscal policies, and growth prospects. He will be in conversation with NDTV's Mario Shakil. May I please invite you both on stage. Hello, everyone. And Mr. N.K. Singh is a veteran Indian policymaker and the chairman of the 15th Finance Commission. He's seen as one of the most foremost voices when it comes to policy formulation in India, and hence, for all the youngsters out there, you must listen to this conversation because it will give you insights that you would have never got before. Mr. Singh, Dr. Singh, thank you so much for your time here on NDTV. Sir, the nature of this conclave and the title is Emerging Businesses. And in the emerging businesses domain, MSMEs, that is the micro, small and medium enterprises, they form 90% of the businesses and employ nearly 3/4 of workers in emerging markets and developing economies. And hence creating jobs and better jobs depend on them. The recent World Bank report, as we were discussing over the weekend, sir, highlights the gap challenges. How do you think we as a nation, and you as a policymaker who gives vision and options to the government of India, can achieve the goals that have been set by the government? And also, how can we harness the challenges being highlighted by that report? Well, thank you very much, Maria. It's always a great pleasure to be at the functions of NDTV. And you have, of course, been one of the great anchors which followed your transit from one vantage point to another. Your question today has 3 dimensions. You have sought to focus on the MSME. Now, you know, it's true that I pointed out to you just 4 days ago that the annual spring meeting of the IMF and the World Bank, which has just concluded day before yesterday,
each spring meeting has an annual document. The last year's spring meeting had the document seeking a new roadmap for the World Bank and the IMF. Last year's document was shared poverty, shared prosperity in a livable planet. This year, the document is about jobs, and in the jobs, the World Bank group has assigned an important place to the role of the MSME. Now that in itself signifies the high priority. Not only that the jobs are necessary, because we realize that this is one of the very serious global problems, the issue of how to harness technology productively with creation of value-added jobs. This is a challenge which the society in general is facing all over, harnessing technology and gainful employment. In this context, the World Bank report has suggested a number of steps and the important role that the MSME can play. In India, which you correctly pointed out, 30% of India's GDP comes from the MSME. And out of the MSMEs category, particularly the micro sector constitutes 90% of this category of MSMEs. The problems that I can see, which that report has brought out in encapsulating in a sentence, is one, on the access to credit, assured credit. Right now it looks as though something like 25 lakh crores is still the remaining credit gap. The formalization of the sector itself is far from complete, and only 14% of the MSME sector has been formalized. The last report, which you know was done by a colleague of mine, UK Sinha, who did that report to say that a very small percentage forms part of the formal sector. So access, assured access, and bridging the credit gap is one very big overarching issue. The second very big overarching issue is how to enhance its ability to upgrade its productivity and upgrade its skill. And skill and productivity upgradation remains a challenge. Third, of course, is access to marketing and growing technology changes. And the last, of course, is its important contribution to the GDP of the country as a whole and enhance its contribution to India's export effort. All these are quite symmetric to India's own vision of 2047, and in that vision, the integral role of the MSME remains a very, very important critical component. Dr. Singh, you know, since we are talking about the World Bank report, you have worked and led multiple financial institutions world over. In terms of best practices around the world, what can we learn from other countries? It's a nice question, because I could turn the question, Maria, the other way around. That as I looked at the typology of progress and the overall architecture of the progress done by other countries, not only what we can learn, but there's an enormous amount that others can learn from us. We have indeed on every important parameter. Take the big parameter of what is talked about, the great Kenyan example, or the South African example, or the Brazilian example, or the Vietnamese example. What do they relate to? They relate to three important factors. They relate, if you sum it up, one is enhancing access to formal credit. I just mentioned to you that that's work in progress. We have done a great deal. The South African example is about vocational training. We have skill development programs. It can be, of course, significantly improved, enhanced, and be aligned to technology.
there are these examples of Vietnam on developing labor-intensive export hubs. We are doing that in some measure. That, of course, needs to be greatly enhanced. I mean, we have begun the obvious ones where the labor-intensive components are critical, namely on textiles, on toys, and leather, and so on. And that's one example. We have the use of our digital stack is something which the world has been taken aback. In fact, we have as much to learn, and we must always recognize that we have a lot to learn, but the world recognizes that they have a lot to learn from our own experience, which has been a very positive one. Dr. Singh, since you spoke about certain countries, my next question would be around these countries, and what about developed nations? What are they learning from India? Many would say that our digital payment infrastructure is everybody's envy now. They look towards us and they keep wondering, how did India achieve so much, particularly to do with UPI and the digital payment? And it is all a phenomena in the last 10 years. It is of the Modi era. Well, certainly, I think that the world is quite a bit in awe of our digital stack. They recognize that in terms of the matrix of government, that the way in which, for instance, and this is repeated, Maria, very frequently, India was able to deal with the pandemic is quoted as a global example in terms of the way in which food supplies, vaccines, healthcare, best examples. We made the fullest use of technology. That suggests to the world that India is more than ready to be in a position to be an important shaper of improved governance models, because the use of digital technology is an improvement on the governance variables which we have. And far from government coming in way, I think that we have had a lot to learn. Now, let me tell you, where I feel we still have to learn a great deal is two factors, Maria, has really troubled me. One is that the complexities of our compliance regulations, far too many compliances, far too many rules, far too many draconian rules. I think this is recognized when the Prime Minister has announced some time ago that he is seriously thinking of a deregulation commission. The Finance Minister recognized this in the light of the economic survey, that we need to get out of the way. Get out of the way is, if you look at it, the number of compliances at beginning from the third tier of government to working up to state level, to multiplicity of organizations and entities at the state level, and then, of course, the central government, the various departments of the central government. The burden of compliance is quite high. We need to certainly give that a priority. The fact that the Finance Minister mentioned this, and there is already a group working on how to improve and bring down the total number of compliances, led by the Cabinet Secretary, is a positive thing. But the Prime Minister has gone a step further in mentioning about not a compliance, but a deregulatory commission, suggests that India over the period has become mature enough, and many of these rules have become handicaps. Rules are necessary because the rules are necessary to ensure that appropriate conduct and compliance with the broad framework has been done. But when the rules do not serve the purpose, but serves a purpose which is entirely different, has become a handicap,
to creativity, to growth, to productivity, to employment, and indeed to the growth strategy. I end by saying that, you know, these rules are hurting India's investment climate in general. Take, for instance, two areas on the rules. I've often felt that the entire legal rubric and the entire legal framework has remained substantially unreformed. The world recognizes that India has one of the most transparent legal systems, but they often joke with me that that's true, Mr. Singh, but when do we see the end of the interlocutory processes? Hopefully, they believe, in the lifetime of this project. So I think that the India's legal complexities is one area which requires a fundamental change and a restructuring of the entire legal architecture to serve the broader objective of societal necessity in terms of conformity to law and order, to security, to the basic principles of the rule of law. That's not questioned. What is questioned is the cumbersome systems which have got accumulated, which has deterred against speedy dispersal of a just and free system about which we are rightly proud of and which the world upholds. And now I'm coming to a question which is very close to my heart, and this is with regards to women-led enterprises, women-led governance. There's the statistics which has, of course, been shared by the World Bank report that women-led enterprises represent 23% of all MSMEs, but they account for 32% of the financing gap. When informal enterprises are included, the finance gap actually rises to almost $8 trillion. And this is linked to women enterprises, women-led development. Besides, you know, we have often seen women as the beneficiary of the government schemes and policies, and particularly coming from the state where both of us come from, in Bihar, women have always been seen as a captive vote bank because of them being beneficiaries of the state. How do you mainstream gender in MSMEs? Well, I think that it's a very important question. Certainly the World Bank report which you point out has highlighted that the financing gap is disproportionately higher in the case of women-led enterprises than in respect of the other categories. And I think that requires to be redressed in very special ways. First and foremost, of course, we know that there is budgeting, gender budgeting for government initiative needs to be intensified, needs to be closely monitored. The credit availability given to women entrepreneurs, and we did talk about the fact that out of the great number of MSMEs which exist, 90% of them are micro ones. A very small percentage of it is really in the small and then in the medium ones. So I think we especially need to refocus programs for closing the gender gap in terms of the availability of funding, and to at least let us take upon ourselves the target that in the next 12 months or so, in the next update that the World Bank does to this report on employment, the issues of the gap, financing gap for the women-led entrepreneurs would have been substantially closed and come in at footing with the normal amount of finances available for the rest of the sector. The second is that they require special help in technology, skill upgradation, and becoming part of the value-added chain, marketing issues, and becoming part of the value-added chain in this country. I'm not even talking about global value-added chain, but becoming integral to the value-added chain for India's supply factors would be a very, very important thing. So I think we need to harness this great untapped potential. Just as we look at Viksit Bharat, we expect that instead of 30% coming from the MSME, it should be 40%.
that as far as exports are concerned, a very substantial increase of export capability from the MSME sector, we look equally to the women entrepreneurs playing a more important role in this entire process as the MSME sector become integral to India's quest for a Viksit Bharat. Since we are talking about Viksit Bharat, let's look at India's quest for becoming the third largest economy and a developed country. What role do you think MSMEs can play in a broader context? So for India to get to by 2047, we need to sustain at least about 8% GDP growth in real terms, which hoping inflation to be around the inflation band, 11 to 12% sustained growth for the next several decades to bridge the income gap. We need, first of all, policies which will enable this growth rate to be sustained, reforms to be sustained, which means continued reforms of the factors of production, land, labor, capital, significant improvement in the infrastructure, a significant improvement in India's export capability to sustain really the current account deficits to be more or less in the same region, to have the continued symmetry on the macro policies between monetary and fiscal policies. These are, of course, to be taken for granted. Now, your question was, what can the MSME sector, the important role they can play? I did mention that if today they constitute 30%, I think that the targets which have been laid down by experts and expert committee reports is to take this 30% to 40% coming from the MSME sector for India to become a developed economy for 2047. Equally, in terms of the women empowerment, since that was a subject we talked of earlier, taking it significantly upwards from the current about 30% or so to about 45, 50% coming from women entrepreneurs, since we are talking in terms of micro and medium enterprises where it's very easily possible. Considering the skills in the labor-intensive sector, some of which are also export sector, which I have mentioned, women can have an increasingly important role to play. So the role of MSME sector in India becoming a developed economy is not only a supporting productivity role in terms of improving the capital output ratio, total factor productivity, but becoming really a higher proportion of the GDP coming from this sector with an increasingly higher proportion of women making an important role to play. Women and the full empowerment of women is one of our secret weapon, apart from the harnessing of what technological capabilities in terms of leapfrogging technology and blending it with the availability of higher value-added employment. And technology and women empowerment would be two of our very important instruments for enabling us to reach what is our legitimate quest of making India a developed economy by 2047. So put women particularly up right there at the center of the development story of India. Thank you so much. And of course, along with technology. Dr. Singh, always a pleasure speaking to you. Thank you so much for this fascinating conversation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Singh, for sharing your expertise on various subjects, including the current economic landscape of the country, as well as the growth prospects. Thank you very much. Micro, small, and medium enterprises are driving North India's economic growth. But what are the challenges faced by MSMEs in this region, and how can we unlock the MSME potential for North India's economy? Our next guest, Dr. S.P. Sharma, Chief Economist, New Economists Organization, will share his thoughts with NDTV's Aditi Rajput. A huge round of applause.
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा जो आज का कॉन्क्लेव है उसमें आप अलग अलग एक्सपर्ट के जरिए समझ भी रहे हैं कि किस तरह से एमएसएमई जो है एक नई भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है। रोजगार पैदा करने से लेकर क्षेत्रीय विकास और इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है ये क्षेत्र। और अगर हम सिर्फ उत्तर भारत के कंटेक्स्ट में, सिर्फ उत्तर भारत के संदर्भ में देखें तो 2020 और 21 के डेटा के अनुसार उत्तर भारत में एमएसएमई क्षेत्र जो है उसका कुल योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 30% था और ये करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार प्रदान करता है। इस सत्र में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसएमई क्षेत्र जो है उसकी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के इस खास पेशकश में आपका। डॉक्टर शर्मा, अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखते हैं तो एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। क्या बदलाव आपने देखे हैं पिछले, अगर हम 1 से 1.5 दशक की बात करें? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि एमएसएमईज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एमएसएमईज का रुझान है नॉर्थ इंडिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रीजन ज़्यादातर एमएसएमई से ही डोमिनेटेड है। यहाँ पे अगर हम लार्ज कंग्लोमरेट्स की बात करें, लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करें तो बहुत कम, या मैं कहूँगा कि गिने चुने हैं, जबकि एमएसएमईज बेशुमार हैं। और अगर नॉर्दर्न इंडिया की ही बात करें तो लगभग कोई 30 से 35% का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमईज की ही तरफ से जनरेट होता है, क्योंकि ये जितने भी उद्योग हैं, खास करके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि नॉर्थ इंडिया एक फूड डोमिनेटिंग रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चर, हम कहेंगे कि जैसे हम भारत को एग्रीकल्चर प्रधान देश बोलते हैं, तो उसी तरीके से जो नॉर्थ इंडिया है वो एक सुपर एग्रीकल्चर प्रधान देश है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कमर्शियल क्रॉप्स, और ये सब चीज़ें जो है कुल मिला के भारत के जीडीपी को खाली कंट्रीब्यूट ही नहीं करती, सपोर्ट करती हैं, रेजिलियंस क्रिएट करती हैं। जब हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में बहुत ही जो इंडस्ट्रीज थी बहुत डिसलिरेट कर रही थी, तब हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है स्टिल ग्रोइंग मोर देन 3%, जिसने एक बहुत अच्छे से सपोर्ट किया पूरे भारत के जीडीपी को। तो नॉर्दर्न रीजन जो है वो खास करके मैं ये कहूँगा कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रेजिलिएंट रीजन है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक कड़ी मजबूत सपोर्ट देता है। बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर हम बात करें इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की, तो उसके इस्तेमाल के बिना अब किसी भी छोटे से छोटे उद्योग को चलाना भी मुश्किल नहीं है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं? अगर आप कोई उदाहरण भी दे पाएंगे तो यहाँ पर लोगों को समझने में और आसानी होगी कि उत्तर भारत में खासकर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अब हर क्षेत्र में आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, जो नॉर्दर्न रीजन है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में या फिर टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन में बहुत तेज़ है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है। और ख़ास करके मैं, जैसे आपने बोला कि कुछ एग्जांपल अगर दे पाएँ, तो मैं एक बार चाइना से ट्रैवल कर रहा था, हम वापस इंडिया आ रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे साथ में बैठा था, तो उसने बताया कि सर मैं पंचकुला में फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, और पहले मैं 100% इम्पोर्ट करता था चाइना से, तो अभी मेरा जो इम्पोर्ट है वो 50% रह गया है। अच्छा। 4 साल के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, मैंने भी अपना रोबोटिक अप्लाई कर दिया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी 50% ही इम्पोर्ट करता हूँ। आने वाले टाइम में मेरा मकसद है कि इसको कम करके 0 पे ले जाऊँगा, मेरे को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन बाय द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, जिसमें हम कहते हैं कि वो बहुत जल्द जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडॉप्ट करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये हमारे ख़ास करके जो एजुकेशनल सेंट्रिक स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में
भी बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैं उधर की बात अगर करूं कि पंजाब और हरियाणा में तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत तेज़ गति से प्रभाव हुआ है। लेकिन जो यहाँ का कनेक्टिविटी है सप्लाई चेन्स में, वो उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग नहीं है। जो बात हम करते हैं एक्सपोर्ट्स की, एक्सपोर्ट्स आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन। जी। खाली जो एक्सपोर्ट है, जैसे हम MSMEs की बात करते हैं कि 45% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय MSME इन द टोटल एक्सपोर्ट्स, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया का एक्सपोर्ट है वो लगभग कोई, मैं ये कहूँगा रफली 15 से 20% तक का ही होगा जो एक्सपोर्ट्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। सर, अभी जिस तरह से आपने बात किया, आपने एक एग्जाम्पल दिया जिन भी शख्सियत का, तो वो बाहर जाते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख कर आते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं सबके पास वैसे मौके नहीं होते। तो फिर उस स्तर पर क्या वाकई में सरकार की तरफ से, पॉलिसी मेकर की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि हम वाकई में आत्मनिर्भर बने, हमें बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पर निर्भरता ना हो, टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज, या दूसरे तरीकों के लिए भी? कहाँ दिक्कतें आप यहाँ पर पाते हैं? देखिए, दिक्कत तो कहीं भी नहीं है। जो हमारी अडॉप्शन है, जो हमारी गति है, जो एक आत्मनिर्भर बनने की गति है, वो बहुत सुदृढ़ है। लेकिन एक नेचर है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी की क्या नेचर है कि वी मूव फ्रॉम स्लो टू स्टडी देन फास्ट टू फास्टेस्ट। हम पहले बहुत स्लो थे, 1960s में 70s में हम 2-3% पे ग्रो कर रहे थे। उसके बाद हमने रिफॉर्म्स देखी 1991 की, उसके बाद हमने ग्रो करना शुरू किया 5% पे, 6% पे। आफ्टर मैनी रिफॉर्म्स नाउ वी आर ग्रोइंग एट 6%, 7% और इवन 8% ऑल्सो। सो adoption is very, very important, but our adoption becomes more and more strong with the passing of time. जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो अडॉप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ होती जाती है। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे जहन में है सर कि जब हम MSMEs के लिए अगर उत्तर भारत में बात करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी, तो उस तरह के अवसरों की अगर हम बात करें तो हमें किस तरह के कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं? आप पानी ले लीजिए। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि MSMEs के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके अवसरों को बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरह की ज़रूरत है, किस तरह की मदद चाहिए? देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत का काफ़ी रुझान है और हमने देखा कि ओवरऑल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज आर इंक्रीजिंग इन ए सिग्निफिकेंट वे। और अभी तो हमारी जो 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं पूरे भारत में, और खास करके जो नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम है बहुत तेज गति से हुआ है। आप देखेंगे रोड्स एंड ब्रिजेस, यहाँ पे जो पब्लिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स, लेबर फोर्स इन द रीजन, जहाँ से इसको बहुत तेज गति आगे मिली है। कई बार जो हमारी जो वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो बिहार से या कहीं दूर दराज के प्रांतों से इधर आती है, खास करके पहले एग्रीकल्चर के लिए आते थे, तो नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन आल्सो। तो एक बहुत अच्छा सुदृढ़ जो योगदान है वर्कफोर्स का, उसने एक जो सपोर्ट दी है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे एम्प्लॉयमेंट के बहुत अच्छे संसाधन भी पैदा हुए, जिसमें कि स्टेट्स जब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आई वुड से दैट इज़ कंपैरेटिवली एट अ मोर हाई स्पीड एज कम्पेयर्ड विद अदर स्टेट्स इन द कंट्री। जी। जो खास करके अगर हम पीछे के 10 साल में देखें तो जो गति है यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जो कैपिटल फॉर्मेशन की, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर्ड विद अदर स्टेट्स। बिल्कुल। और जब सर सरकारी योजनाओं के एग्जीक्यूशन की बात आती है, तब वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? और क्योंकि बात असल में यही की जाती है कि आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुँचे, आखिरी व्यक्ति जो है वहाँ तक योजनाओं का फ़ायदा पहुँचे, तो इसमें हम अभी भी देखते हैं कि एक लंबा सफ़र हमें तय करना है, यहाँ पर अभी भी कमियाँ हैं। कैसे सुधार किया जा सकता है? देखिए, जो आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुँचे या फिर जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं जी, वो लास्ट माइल तक पहुँचे, या फिर हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं वो फैक्ट्रीज तक पहुँचे, बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, हमने 142 से 63 तक का पैमाना एक हासिल किया वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने रिफॉर्म्स की, हमने ब्रैप रिफॉर्म्स की,
लेकिन अभी भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट शुड हैपन एट द फैक्ट्री लेवल, तब जाके हमें लगेगा कि जो फैक्ट्रीज हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस महसूस कर रही हैं। दूसरा जो चैलेंज आपने बात की थी शुरू के क्वेश्चंस में कि क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जो एमएसएमईज को खास करके है वो कॉस्ट को लेके, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है, जिससे कि उनके प्रोड्यूसर्स के प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। ये कॉस्ट क्या है? 5 मेजर कॉस्ट हैं जो इनको इम्पैक्ट करती हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसेस, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। जी। तो इन 5 कॉस्ट के ऊपर अगर हम आगे भरपूर प्रयास करें तो एमएसएमईज बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। दे कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली हायर देन एज दे आर कंट्रीब्यूटिंग राइट नाउ। मैंने कुछ एमएसएमई से बात की, कुछ सर्वे था हमारा, तो उन्होंने बोला कि अगर हमें फाइनेंसेस का जो बड़ा इशू है अगर वो रिजॉल्व हो जाए देन वी कैन ग्रो डबल ऑफ द करंट रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हम अभी 20% पे ग्रो कर रहे हैं देन वी कैन ग्रो एट 40%। देयर इज इमेंस पोटेंशियल इन आवर बिजनेसेस एंड वी कैन मूव फास्ट एंड वी कैन contribute more in the fastest moving economy in the world economic system. So जो एक प्रॉब्लम है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस से शुरू होती है जी, एंड दैट ऑल्सो स्प्रेड्स टू दी कंप्लाइंसेस। सरकार ने बहुत सारे कंप्लाइंसेस कम किए हैं। अभी हम बात करते हैं कि 42,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस को सिंप्लीफाई किया गया बिल्कुल पीछे के 5-6 वर्षों में ही। तो इनका भरपूर फायदा जो है एमएसएमईज को मिल रहा है, लेकिन हमें और भी आगे तेज गति से बढ़ने की जरूरत है, जिससे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है खास करके जो नॉर्दर्न रीजन में, जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स ओनली कंट्रीब्यूट ओनली 18 to 20% इन द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि $821 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर 24-25 में, जिसमें मर्चेंडाइज लगभग कोई $437 बिलियन था। अगर हम रफली इसमें 45% ऑफ द एक्सपोर्ट्स बाय एमएसएमईज पे जाएं तो $190 बिलियन के आसपास जो है एमएसएमई का एक्सपोर्ट था पूरे भारत से। और अगर हम नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो 18 to 20% अगर हम इसका देखेंगे रफली टोटल एक्सपोर्ट्स का, तो नॉर्दर्न रीजन से जो एक्सपोर्ट्स होंगे $30 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट होंगे। बिल्कुल। तो हमें इस एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी को इंक्रीज करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट से ग्रोथ आती है, एक्सपोर्ट से एम्प्लॉयमेंट आती है, एक्सपोर्ट से एफिशिएंसी आती है, एक्सपोर्ट से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बिल्कुल। और इनके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम $30 बिलियन इन 1819 टू 40 in 1920, then 50 in 21-22. Now our agriculture exports are at around $50 billion. But still, we are only less than 1% of the total world exports of the food and agriculture products. बिल्कुल। Despite an agrarian economy, our contribution in the global exports is less than 1%. So we have a great potential to move forward to enhance our trajectory of agriculture exports, particularly from the northern region. जो मैंने ये आपको बताया कि 18-20 बिलियन डॉलर का जो फिगर है एक्सपोर्ट्स का, वो कहीं डबल, ट्रिपल और 5 टाइम्स हो सकता है आने वाले 5 साल में, क्योंकि हमें वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनी इनपुट फॉर दीज प्रोडक्ट्स, कि उसके ऊपर ग्लोबल मंदी या ग्लोबल तेजी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि हमारे इनपुट्स हमारे पास हैं। बट वी हैव टू प्रोसेस दोज इनपुट्स टू मूव फॉरवर्ड एंड टू एस्केलेट आवर ट्रैजेक्टरी ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन। बिल्कुल। और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ उन चीज़ों को, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वी आर वेरी गुड इन अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी वेरी सिग्निफिकेंटली। तो उसकी ही वजह से जो एक फूड प्रोसेसिंग में जो एक उछाल आएगा, that will accelerate the overall export trajectory of the Indian economy. बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि दुनिया में जो आपने 1% बताया, जो बिल्कुल शॉकिंग फिगर है, वो आने वाले कुछ सालों में हम अचीव करें। और that too despite an agrarian economy. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आप पोटेंशियल देखिए कि मैं तो ये समझता हूँ कि दिस इज द अनदर IT सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी। आने वाले टाइम में जो एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग में जो रोजगार पैदा हो सकता है, शायद वो IT सेक्टर में भी ना हो, अगर हम इस पोटेंशियल को और अच्छे तरीके से उजागर करें।
और तमाम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो जाए, वो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, वो जितना ज़्यादा ज़मीन पर आता जाएगा, धरातल पर आता जाएगा, वो उतना आसान होता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डॉक्टर शर्मा आपने हमारे साथ साझा की हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रोशनी डालने से बहुत फ़ायदा जो है वो भी MSMEs को पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you very much, Dr. S.P. Sharma and Aditi. Our next session is titled Navigating the Sustainable Future, and who better to talk about it than somebody who is known for her commitment to sustainability and innovative designs. Ladies and gentlemen, please welcome Reena Dhaka for her insights on the intersection of fashion and sustainability. She will be in conversation with Suchetna Ray. Hello. Few names have shaped the story of Indian fashion like Reena Dhaka, a designer known not just for creativity but for her deep commitment to sustainability and craft revival. Today we explore how fashion, MSMEs and mindful innovation can come together to create a more inclusive and sustainable fashion future. Thank you so much, ma'am, for joining us. My first question to you, you've long championed traditional crafts and sustainable fashion. Can you talk about the critical role that MSMEs, especially, say, weaving clusters, artisan communities play in making all of this possible? See, at the base of our, the great history of India is our craftsmen. That is what interests designers or communities from all over the world, where fashion and our textiles will be like lead inspirations for students of fashion, for designers, not just in India, for the world. A lot of the inspiration comes from our tradition of weavers, and it is tragic that now a lot of the traditional generational passing of knowledge to the weavers and the weaving families, a few sectors are very poorly they are not able to sustain themselves, and a lot of them are leaving these trades to maybe survive in towns and metros, maybe as security, as drivers, as guards, as all that. And they are giving up the family-run heritage of learning how to carry on with the practice of weaves and sustainable craft forms. Some weaving techniques have gone on to do very well with the incentive, with the push of fashion and the buying cycles. Right. You know, rewear, rebuild, revive could easily be the name of this session. So let's start with your appeal for rewear. You have advocated the cause of 30 wears rule, but in an age dominated by social media, you know, where we are mostly showcased unattainable fashion goals, where only a handful of celebs regularly advocate rewearing clothes, what has been your experience with your appeal? You know, the Peter repeater is actually the way one has to be going forward, because as we experience, especially living in Delhi, so many hardships relating to pollution, skin ailments, all thriving from somewhere where we all can contribute ourselves. It's not very hard to do. Simple, men are generally the pioneers in this. They do rewear a lot of their fashion. So I'm grateful to them, and they become, let's follow them, is to rewear your clothes, because mostly, averagely, they say 20% of your wardrobe is what women rewear. 80% is probably one wear. And the more we wear the same clothes, the lesser the chances of us, you know, adding to the pollution caused by clothing, filament, and the leftover salvages of clothing. If you know, in Delhi, in Gandhinagar, we already own 4 mountains such of katrans or leftover fabrics, and nothing has been done about it. So let's not make another mountain of it, because that is where it ends up.
And also to not to wash our clothes so much. So night suits, things we wear every day. I understand we're in a hot city, but at least 2 runs or 3 runs we can do of some of the clothes to reduce the use of bleach and other chemicals. Water is going to be scarcity. So how to, the cycles have to be reduced basically. Simple tricks like that really help me. And I hope people in my audience will go back and start repeating their clothes. Right. While you have advocated the 30 wears rule, how do you think we can popularize them more? I think by just telling them it's cool to rewear your clothes or to be seen in them. Because we seem to have this fear that if we go out and I've just worn this, I can't wear the same thing again to the party because all my friends have seen me in it. And if you see Angelina Jolie or Kate Middleton, they are being praised by media all over because they go on to publicly rewear the clothes they have worn. In fact, once I remember there was a joke, a friend of mine, because a working person, I was re-wearing a dress which sort of fitted, worked for a party, and I quickly said, oh, the same guys are not going to be there. And I wore the same dress 3 nights in a row. Right. And a friend of my husband said to him, tere kol paye hue nahi hai, ye roz ye same kapde pehndi hai. Right. We'll move back to our conversation about MSMEs. You are a front runner when it comes to promoting Indian traditional crafts. And there are many MSMEs in India who specialize in exquisite handwork but struggle to scale or even access markets. As a leading designer, what do you think needs to change? Policy, maybe better business models, so that these MSMEs can be promoted? I think joining the dots. I understand the government is spending. I understand the government is making all these initiatives for the MSMEs and other schemes to bring many such traditional skills to life or to be able to sustain them. The problem is skilling. Like say in Jharkhand, when I worked with Jharkhand, the government, their fabric of the weavers and the tribals, now that fabric was very good for home. And for countries like Scandinavia, they would welcome it because it felt so good on the hand because it was sustainable, it was organic. But there was nobody who was an expert to advise the right guys that let's put these and expose there. So someone who has knowledge, especially when it comes to textile, or it could be accessorization, it could be jewelry. You need experts from the industry to join hands and to be able to make quick changes because these things have to be done quickly. It is no point if they go through millions and millions of undoable paperwork, which nobody in real life has time to do, especially the guy who is your weaver. The weaver either will earn a dihadi to survive or he has to go on to earn his day's bread. He has no time to attend speech or doing these things. So he needs just a direction, the right markets and the right joining of the dots. Then the ability to able to change the design. If the design has to be tweaked to times, somebody needs to be able to convince them or give them the money to do it. You've been a front runner in talking about Indian textiles, fabrics. You think designers like you could come together and that could be the first step towards helping these, because most of them are not even MSMEs, they're actually small businesses. Exactly. So I would love to do it because it's kind of a passion, and my wish would be that some art form which has gone kind of extinct, almost like a fossil, we need to revive it. We need to make it more contemporary, where people like me, you, and some in the audience, both men and women and children, are able to wear it and to use it in their daily life. And there is a trickle-down effect of these things. It will go back and generate income for the people of that tribe or whatever they're doing it. Like Northeast has its own virtues. South India will have its own virtues, but there are many such art forms. Like Delhi itself has a great weaving centers here. We need to the Mexicans would love it because they're like ribozzo. They make those very well. Well, it's, a pleasure listening to you just talking about all of this. Have you ever thought of perhaps, liaising with the government to make it and advocate whatever you're saying? See, we would love to do it. It's just that it seems so complicated.
to be honest. Right. But is it so complicated? It is complicated but there are experts we can identify for every field. Right. People like us who have been in the trade for so long. Right. And, bring in the specialist because he will give back. Which one of us won't give back to our country? We will. Of course. We love it. It would be like a pleasure. And to see it bloom and for it to give us benefit because it's not just a one-way street. Right. So you're saying the initiative has to start perhaps from the government? Because they're already doing it. It's not like they're not spending. They've just complicated it. They need to simplify it. Let me ask you a simple question. In an era of fast fashion, how can partnerships between designers and small businesses help promote slower and perhaps more sustainable consumption? So India is a country of slow fashion, actually. Our saris, the way we wear it. In fact, if you go back into the lives of our grandmas, they were right. They never threw anything. Right. They just recycled it into a patchwork gadda or something. It became a throw, but it stayed on for a lifetime. So, or the raddi wala took it and remade it into a bag. So, the learning is from them. So, I feel fashion and its wearers are now both have to be responsible, where they need to understand that if they're buying fast fashion, to limit its use. You must limit it or wear it many times for God's sake. That way you're limiting it. Yes. And then fast fashion is also, look, it's a catch-22. Our city, our country, we produce a lot of the fast fashion. It also gives employment to a lot of our people in our trade. So if fast fashion is to work, it has to work with conscience. But a lot of the fast fashion buyers internationally, like I work with anthropology, now we cannot ship our goods in plastic anymore. So there are changes people and big companies are making, and we will need to adopt these same policies ourselves. You've been part of initiatives like Re.Purpose. Sustainable Romanticism was the name of one of your collections. How can designers inspire more and more Pret labels to adopt eco-friendly practices without making it, economically burdensome for them or even for the consumers? Well, the supply line, basically the eco-friendly fabrics, like Levi is doing a lot of good work, even though it's in rayon and all. And just now I met Mr. Jain, who said he recycles plastics and he makes his plastic bottles into fiber or fabric. But to be aware of the storyline. And the other thing is the supply line is still higher priced. Yes. Than what the other choices a person has. But if with the demand growing, which can only grow if we as consumers are aware and we start consuming it, not maybe in excess, but the demand will then grow and the price ranges need to come down to become contemporary. So basic economics, the economies of scale need exactly. to balance. My final question to you before I let you go. If you had to imagine the future of Indian fashion 5 years from now, what would it be and what role would small businesses play in it? I think India's fashion story has just begun. We will have a very big role to play in the whole world. Our design community is well trained today. We've had a good 20 years of having fashion schools in India, which have taught these to young students very well. And my biggest dream, if I may say, to this important people platform is that we need to remove that katrans. Everyone needs to take a train ride to Gandhinagar and see them for themselves and find ways to be able to get rid of them and to reduce that waste and the colossal damage it is doing to each one of us. Thank you so much, Reena. It was lovely listening to the sustainability threads that you wove in front of us. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, I would request everyone to kindly settle down. Please sit down.
We've had some really insightful sessions so far, but this next one, it is going to be really, really special because our next guest is literally writing a new chapter for Delhi. She made history by becoming the third woman chief minister of Delhi and the first BJP chief minister in 2.5 decades. Ladies and gentlemen, please welcome the dynamic Srimati Rekha Gupta. She'll be in conversation with NDTV's senior managing editor, Nikunj Garg. I would request you to please come on stage, ma'am, please. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं मुख्यमंत्री जी, आपने समय निकाला आपके व्यस्त शेड्यूल से एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और उसके बाद मैं ये आपसे पूछूं कि अभी आप एक कार्यक्रम से आ रही हैं जिसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस सिटी, एटलीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटल, 70 साल के ऊपर के तमाम लोगों को एक हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड हमने रोल आउट किया है। क्या आइडिया है इस बुनियादी हेल्थ सुविधा को देने के पीछे आपका नेशनल कैपिटल के सिटीजन्स के लिए? मैं एक्चुअली बताऊं, सच में जो 70+ एज ग्रुप के हमारे रेजिडेंट हैं देश के, उनको ये हेल्थ एश्योरेंस मिलना सरकार की ओर से कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी किसी तकलीफ़ में, आपकी किसी बीमारी की स्थिति में सरकार विल टेक केयर ऑफ़ यू, आपकी पूरा ध्यान रखेगी, आपका इलाज कराएगी, आपकी टेस्टिंग्स, आपका हर वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपको अपने बूते पे करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बार आपके बच्चे भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, कई बार सिचुएशंस बड़ी ऑड होती है। ऐसे में सरकार जो अपने सीनियर सिटीजन्स की केयर टेकिंग कर रही है, ये ना केवल दिल्ली के लिए, मैं बताऊं पूरे विश्व में आप कोई देश उठा के देख लीजिए, ऐसी योजना आपको मिलेगी नहीं। ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक विजनरी योजना है जिसमें आप अपने देश के, अपने शहर के 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों का इलाज करा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ देयर इनकम स्टेटस। उनका धर्म, जाति, स्टेटस कुछ भी इसमें काउंट नहीं करता। आपके पास उस शहर का आधार कार्ड हो, आप वहाँ के लोकल रेजिडेंट है, दैट इज़ एनफ। आप सोचिए कितनी खूबसूरती है इस योजना में कि एक अमीर आदमी जो अपने सब कुछ उसके पास होगा उसके लिए भी ये योजना है, और एक गरीब रेडी बटरी वाला व्यक्ति भी, उसके लिए भी वो सेम योजना है। और सही बताऊं, अमेरिका हो या कोई और बड़ा देश हो, अगर उन्होंने कोई हेल्थ का प्रोविज़न अपने सिटीजन्स के लिए क्रिएट किया होगा तो केवल उसका क्राइटेरिया है आप टैक्स पेई हैं कि नहीं है। अगर आप टैक्स पेई हैं तो गवर्नमेंट विल गिव यू हेल्थ असिस्टेंस। पर ये जो योजना है, वेदर यू आर टैक्स पेयर और नॉट, कुछ भी आपका स्टेटस है, आपको ये योजना समान रूप में हर एक बुज़ुर्ग को मिल रही है। मैं सच में थैंक्स करना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज दिल्ली के सब बुज़ुर्गों को उनको एक बहुत ही खूबसूरत लाभ मिला है, योजना मिली है और जीने का एक नया अधिकार मिला है। और मैं ये इसी बात पे आने वाला था कि प्रधानमंत्री का पर्सनल फोकस इस योजना को लेके बहुत रहा है। पर्सनली उन्होंने खुद पुश किया है 70+ की आरोग्य स्कीम को देश भर के लिए, और काफ़ी दिनों से ये रुकी हुई थी नेशनल कैपिटल में, और अब आपको लगता है कि आप इसको पूरा स्प्रेड दे पाएंगी। वो लोग खासकर जिनको कि इस तरह की चीज़ों की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जो लोगों को जानकारी हो जाती है वो तो जानकारी से सुविधा का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको भी आपकी सरकार कोशिश करेगी कि क्या उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे और वो इसका फ़ायदा ले सके? मैं प्रॉमिस करती हूँ दिल्ली के हर एक 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग को कि आप हम तक पहुँचे या ना पहुँचे, सरकार आप तक पहुँचेगी और एक एक बुज़ुर्ग का रजिस्ट्रेशन करा के उसको इस हेल्थ योजना का पूरा लाभ मिलेगा। So Chief Minister, that you promised from the NDTV's forum, thank you very much. एक और बात बताइए मुख्यमंत्री जी, आप यू आर ए यंग चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के शासन में पहली बार एक महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में, और दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस जो था उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी।
कुछ इश्यूज़ को लेकर के आपके अपने मन में, क्योंकि आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी है यहाँ पे, आपके अपने मन में एक नेशनल कैपिटल की क्या छवि है, कैसे चेंज देखना चाहती हैं आप उसमें? मुझे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप दिल्ली को कैसा बनाना चाहती हैं, लंदन बनाना चाहती हैं, पेरिस बनाना चाहती हैं, क्या बनाना चाहती हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूँ। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका एक अपना इतिहास गौरव है, दिल्ली का अपना एक कल्चर है, दिल्ली एक मिनी इंडिया है। पूरे देश के हर राज्य के लोग यहाँ आकर के बसे हैं, उनके लिए ये उनका होम टाउन है। और ऐसे में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का हेल्थ, दिल्ली का एजुकेशन, दिल्ली हर मायने में दिल्ली अप टू डेट होनी चाहिए। पूरे देश में सबसे टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड शहर होना चाहिए, पूरे विश्व में इसका एक सम्मान होना चाहिए। पिछली सरकारों के राज में आप देखेंगे एक नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक नेगेटिव इमेज दिल्ली शहर की बिल्डअप हुई, और आज भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लेवल पे कहें, यमुना जी की सफाई के लिए कहें, दिल्ली का जब नाम पूरे वर्ल्ड फ्रेम में आता है तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कहाँ है, दिल्ली में है जी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, दिल्ली में है जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली की इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। दिल्ली में ये जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। दिल्ली के लोगों को वो मिलना चाहिए जो दिल्ली का अधिकार है, और दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल लगना चाहिए यहाँ, ऐसा मेरा सोचना है। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की छवि बदलनी चाहिए, और आपने पोल्यूशन और यमुना की क्लीनिंग के दो बड़ी चीज़ों की बात करी। दोनों ही मुद्दे आप भी जानती हैं, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट डेज से यहाँ पॉलिटिक्स कर रही हैं, रहने वाली हैं, रेजिडेंट हैं दिल्ली की। दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो कि जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये ओवरनाइट सॉल्यूशंस इन इश्यूज़ का हो जाए ऐसा संभव है नहीं। तो एक बड़ी कैपेसिटी आपकी गवर्नमेंट को, आपको खुद और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में डिस्प्ले करनी पड़ेगी अगर हम इन दोनों इश्यूज़ को हमें सेटल करना है तो। ऑफ कोर्स करनी ही पड़ेगी। आप देखिए, पॉल्यूशन जो है एक बहुत सीरियस मैटर है, और पूरी दिल्ली का हर एक नागरिक इससे बहुत इफ़ेक्टेड है। छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, अनेक तरह की बीमारियां इस पॉल्यूशन के कारण से आज दिल्ली के लोगों को लगी है। पर समाधान क्या दिया पिछली सरकारों ने, मैं आपको बताती हूँ। समाधान के नाम पे एडवर्टीजमेंट, हम पराली की दवाई बनाएंगे, वो दवाई बेच देंगे, अन्य राज्यों को देंगे, पराली ख़त्म हो जाएगी, हवा साफ हो जाएगी। ऐसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट सरकारों ने खर्च किया। पर आप तो मीडिया चैनल हैं, आप मुझे खोज के बताइए तो कि वो दवाई बनी क्या, किसी को मिली क्या, कोई इलाज उसका हुआ क्या, कोई लाभ मिला क्या? नथिंग। करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट के बाद ना कोई दवाई मिली, ना कोई दवाई बनी, ना किसी स्टेट में गई, ना पराली खत्म हुई। हाँ, उनकी सरकार बन गई इसलिए पराली खत्म। अब पंजाब का कोई रोल नहीं है पराली में। अब सारी की सारी पराली जो है वो बीजेपी गवर्नड जो राज्य है वहाँ से आती है, अब पंजाब की दिशा से आना बंद हो गई। तो ये उनका सॉल्यूशन था। अगला सॉल्यूशन ऑड इवन। अब बताइए, इतने समझदार लोग हैं, इतने सारे पर्यावरणविद भी यहाँ पर हैं, ऑड इवन करने से कितना पॉल्यूशन कम हुआ भाई? ये 3 मेजर स्टेप मैं बता रही हूँ जो पिछली सरकारों ने किए। एक, पराली की दवाई बनाएंगे, दूसरा हम ऑड इवन करेंगे, और तीसरा एक स्मोक टावर बनाया गया। कहाँ है वो एक स्मोक टावर? हमने खोजा, पता चला कि कनॉट प्लेस में बना था, 6 महीने चला, कॉस्टिंग उसकी 2 करोड़ थी, उस पर एडवर्टीजमेंट 30 करोड़ का था, और आज वो वर्किंग नहीं है। अब बताइए, ये समाधान सोचेंगे तो एयर क्वालिटी ठीक होगी क्या? आज भी आपको लगातार जब पता चलता है कि जी आज भी एयर क्वालिटी ख़राब थी, आज भी, तो ये वो काम नहीं है कि साल के 2 महीने सर्दियों का मौसम आया तो आपने एयर का सोचना शुरू किया, तब आपने ग्रैब लगा दिए, तब आपको कोट फटकार लगा रहा है, तब आप काम करने की सोच रहे हो कि अब क्या करें, और कुछ नहीं मिलता तो दूसरे पे इल्ज़ाम, ये हरियाणा का प्रॉब्लम है, ये यूपी का प्रॉब्लम है, ये बाकी केंद्र सरकार का है, इसमें पीएम नहीं है, इसमें एलजी नहीं है। नहीं भाई, अगर आपको सच में एयर पोल्यूशन ख़त्म करना था तो एक उसका डिटेल स्टडी, उसका सॉल्यूशन, उसमें कंसल्टेंट्स, उसमें ऐसे लोगों की राय कि करना क्या चाहिए,
हमने जब सरकार आने के बाद इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया, इस समस्या पे घंटों के लोगों की कंसल्टेंसी ली, तो ये समझ में आता है कि जो इसके कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन के, चाहे वो आपकी डस्ट हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा शहर तो आपका ओपन है, वहाँ पे ना ग्रीनरी है ना आप वो सीमेंटेड है। दूसरा इसमें व्हीकलर पोल्यूशन कि आपके जो व्हीकल पूरे शहर में चलते हैं उसका पोल्यूशन होता है। और ये जो डस्ट पार्टिकल एयर में रहते हैं ये कोई 2 महीने के लिए नहीं आते, ये साल भर है। वो आज गर्मी के मौसम में भी है, वो सर्दी के मौसम में भी है, हर समय है। तो हमने आते ही जितनी योजनाएं बनाई, हमने वाटर स्प्रिंकलर्स थे, हमने जो स्मोक गन्स थी, पूरा साल भर चले एक्सेप्ट मानसून मौसम, क्योंकि उस टाइम तो ईश्वर बारिश कर रहा है। तो पूरा साल भर स्प्रिंकलिंग हो, पूरा साल भर स्मोक गन्स चलें ताकि जो एयर पॉल्यूटिंग कंटेंट हैं वो बैठ जाएं। ये साल भर की योजना बनाई, डिटेल्ड बनाई कि आपके अगर दिल्ली में 250 वार्ड हैं तो उन 250 वार्डों पे 4-4 मशीनें उनको अलॉट करनी है। उसके लिए बजट क्रिएशन किया, उसके टेंडर लगे और अब वो जनता के बीच में आने की शुरुआत पे है। तो ये जो काम किया, मतलब अब व्हीकल का पॉल्यूशन है तो व्हीकल मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कर लेंगे तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी कर लेते हैं तो जो दिल्ली के बाकी शहरों से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ रहा है वो प्राइवेट गाड़ी आ रही है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट की बसेस आ रही हैं, राजस्थान से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, पंजाब से आ रही है। तो क्या आप उनका पोल्यूशन चेक कर रहे हैं? तो ये भी तो कंपोनेंट है दिल्ली के पोल्यूशन में। तो इसके लिए क्या नीति बनाई, इसके लिए क्या किया? तो इस सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली की आपकी अपनी ये सरकार अब इस पे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चल रही है। हर एक जो सेगमेंट पॉल्यूशन का है उस पे काम किया जा रहा है और हर एक को समाधान दिया जाएगा। और सेम यमुना पॉल्यूशन के लिए? यस, यमुना। देखिए यमुना जी पे भी केवल बातें हुई, सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार को दिया, अब वो उन्होंने कहाँ खर्च किया, क्या कर दिया, पर यमुना को सॉल्यूशन नहीं मिला। कस्में खाई, वादे किए, बाद में माफ़ी भी मांग ली, पर होना क्या चाहिए था। आज यमुना जी का जो सेगमेंट हमारी दिल्ली में आ रहा है, प्रयागराज से शुरू हो, प्रयागराज पे ख़त्म होते हैं और यमुनोत्री से शुरू होकर यमुना का जो जितना हिस्सा दिल्ली के अंतर्गत है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इसलिए है कि उसमें 22 बड़े बड़े नाले जो कि नदी से भी बड़े हैं वो सारे जाके यमुना जी में एज इट इज़ गिरते हैं, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसमें आपका डोमेस्टिक वेस्ट और हर प्रकार की गंदगी, केमिकल सब उसमें है। तो सबसे पहला इलाज तो ये है कि इन सभी नालों की डिसिल्टिंग हो, इन सभी के ऊपर एसटीपीज़ बने। ये जो जिस नाले को आप कर्व नहीं कर सकते वहाँ डिसेंट्रलाइज एसटीपी बने। आप यकीन मानिए कि मैं आपको पिछले 15 दिन पहले की, 1 महीने पहले की रिपोर्ट, देखो सरकार को अभी 65 दिन हुए हैं, एक भी एसटीपी वर्किंग में नहीं था उनकी सरकार के समय का, एक भी डिसेंट्रलाइज एसटीपी उन्होंने बनाया नहीं। आज हमारी सरकार के माध्यम से हमने 9,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में रखे और उसमें से 500 करोड़ के केवल डिसेंट्रलाइज एसटीपी की, जो आपके नाले को देन एंड देयर वहीं सफाई करके उसके बाद उसका बीओटी ठीक करके उसको नाले में छोड़ेंगे, उसके बाद उसको यमुना जी में छोड़ा जाएगा। तो ये इस काम करने की ज़रूरत है। आज जब मुझसे लोग पूछते हैं जी कब तक साफ़ हो जाएगी, इसीलिए मैं उनको कहती हूँ भाई मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। काम चल रहा है, काम प्लान हुआ है, काम के वर्क ऑर्डर होंगे, एक एक चीज़ बनेगी, समय लगेगा, क्योंकि जिस योजना पे काम शुरू ही नहीं हुआ आज उसको शुरू करने की ज़रूरत है, उसको लागू करने की ज़रूरत है और तभी तो रिजल्ट निकलेगा और तभी यमुना साफ़ होगी। तो हम जो भी मेजरमेंट्स हैं उन सबको कर रहे हैं और यमुना आपको एक दिन ज़रूर ऐसा मिलेगा जब साफ दिखाई देगी और आप सब उसके किनारे बैठ कर के यमुना जी की आरती करेंगे और मन से जो आपके भाव हैं उनको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने इससे पहले एक बात कही थी कि यहाँ पे दिल्ली शहर है, सारे देश के लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और माइग्रेंट पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ एक सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर का, जिस सेक्टर के लिए हम ये आज कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और एमएसएमई सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स एंगेज होते हैं, वो एम्प्लॉय करता है उनको, और उन्हीं के बेसिस पे मेजर एम्प्लॉयमेंट इवन इन ए सिटी लाइक दिल्ली,
हालांकि दिल्ली में और बहुत तरह के एम्प्लॉयमेंट भी हैं, पर एमएसएमई सेक्टर के दम पे ही वो सारी एम्प्लॉयमेंट दिल्ली में रहती है। तो एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनको मदद करने के लिए या उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार के मन में कोई थॉट, कोई सोच, कोई नई दिशा आप लेना चाह रही हैं? आज दिल्ली में जितने उद्योग हैं, जितने ट्रेड हैं, वर्षों से बड़ी बुरी अवस्था में है। उनको जो असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे बननी चाहिए, वो दिल्ली में उसकी कमी रही। और इस कारण से आप देखेंगे कि देश भर में कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने की वजह से हमारे जितने ट्रेड हैं, हमारी जितनी इंडस्ट्री है, वो दिल्ली से बाहर का रास्ता खोजती रही। आज ज़रूरत है नई इंडस्ट्री पॉलिसीज़ बनाने की। आज ज़रूरत है आप व्यापार को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने की। आज ज़रूरत है नई वेयर हाउस पॉलिसी लाने की। हर एक समस्या जो हमारी इस व्यापार जगत की है, उसको सुनने की और सुलझाने की। मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि आज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमारे इन ट्रेडर्स का, हमारे व्यापारियों का, हमारे उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। एज ए दिल्ली गवर्नमेंट मैं इस बात को इस तरीके से कह सकती हूँ कि आज जितने भी हमारे शहर में उद्योग हैं, उनके लिए जिन नई पॉलिसीज़ को फ्रेम करने की ज़रूरत है, सरकार उनको बनाएगी। जितने भी जगह इन उद्योगों को एक सपोर्ट, एक टेक्निकल असिस्टेंस या इंफ्रास्ट्रक्चरल पूरा काम जो चाहिए उनको, वो सरकार करेगी। आज जितने हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आज आप देखिए तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। इनफैक्ट वो बहुत ही खराब स्थिति में है। अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हैं शहर के, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया और जबकि वो आपके वो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि आपके अप्रूव्ड हैं और अप्रूव्ड है और टैक्स पेइंग है। टैक्स पेइंग हर तरह का टैक्स आपको वहाँ आपको सड़क नहीं मिलेगी, वहाँ आपको ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं मिलेगा, वहाँ उनके लिए कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स नहीं है, वहाँ उनकी लेबर के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा व्यवस्था नहीं है, लाइट का, बिजली सबसे ज़्यादा रेटों में मिल रही है आज दिल्ली शहर में। तो इतनी सारी तकलीफ़ें उनके पास है। आपका कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, आपको ऑफिसर, कोई छोटे से छोटा ऑफिसर भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जाकर के कुछ भी बोल सकने की ताकत रखता है। तो एक इतना प्रेशर इंडस्ट्रियलिस्ट पे होता है कि वो क्या करे, मतलब उसको अपनी औकात जो है, ऐसा लगता है कि मैं तो एक बैगर हूँ, कि मैं अपने लिए जो सुविधा मांग रहा हूँ, एक एक पेपर के लिए, एक एक सर्टिफिकेट के लिए मुझे सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत सुलभ होनी चाहिए और पब्लिक को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे दिल्ली में आकर के काम करना पसंद करें। इससे रोज़गार भी जनरेट होगा, इससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो हमें इस सारी फ्रेमवर्क में आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज लीज पे दी हुई है, वर्षों से वो फ्री होल्ड नहीं हो पा रही, और कितने सारे लीगल केसेस इसी के कारण आते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कोई चीज़ खरीदे तो खरीदे कैसे, उसको चलाएं तो चलाएं कैसे। तो फ्री होल्ड पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, आपको हर दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अभी मतलब स्काई इज़ ए लिमिट, यहाँ जीरो से शुरू करके और कहाँ तक आपको लेके जाना पड़ेगा। पर मैं कह सकती हूँ कि सरकार हर उस काम को ज़रूर करेगी जिससे लोगों को सहूलियत हो। और चीफ मिनिस्टर, देयर country-wide the experience has been, and the Prime Minister also has been pushing for it, his government has been pushing for it, कि जितने भी अप्रूवल्स हों, चाहे वो MSME सेक्टर हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्री हो, आप खुद बिजनेस कम्युनिटी की से आती हैं, तो वो कम से कम ऑनलाइन अवेलेबल हों लोगों को। मतलब जो ये लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा करके, और वो कोई एक फोरम अवेलेबल नहीं है जहाँ पे उनको कोई टाइम बाउंड डेडलाइंस और डेटलाइंस मिली रहे हैं कि भाई इतने दिन के अंदर ये अप्रूवल आना चाहिए। इस तरह का कुछ आपको देखने चलिए अच्छा है, आपने अपने मुंह से कह दिया, पिछली पढ़ी लिखी सरकार ने कुछ भी ऑनलाइन रखा नहीं। और मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को एडमिट करती हूँ कि यहाँ तक कि कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल भी दिल्ली सरकार के पास नहीं रहा पीछे। यहाँ तक कि आप कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोई दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा भी नहीं है।
तो आज मुझे अपने बजट में इसका प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ा कि हम अपना इंटीग्रेटेड दिल्ली का एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाएंगे, जिसमें हम पूरी दिल्ली का कहाँ आपका ट्रैफिक कंजेशन है, कहाँ आपके पॉल्यूशन के सेंटर हैं, कहाँ पे आपका मतलब हर चीज़ को, कहाँ वाटर लॉगिंग के पॉइंट हैं, कहाँ पे आपका सिक्योरिटी लैब्स है, कहाँ पे आपकी लाइट की कमी है, हर चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए, उनको समाधान मिलना चाहिए। और आप हर चीज़ में देखेंगे ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, जो पढ़ी लिखी सरकारों को करना ही चाहिए था, कहीं भी किसी भी फील्ड में, मतलब अभी पीछे हमें अपने वाटर टैंकर्स को जीपीएस के साथ में असिस्ट करना पड़ा। आपका वाटर टैंकर दिल्ली में दिल्ली आज आधी दिल्ली वाटर टैंकर पे चल रही है, क्योंकि आपने पानी की पाइपलाइन तो बिछाई नहीं कि घरों तक नल के माध्यम से जल जाए। तो अब वाटर टैंकर कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा, कितनी बार चक्कर काटा, कागज़ों में पूरा पेमेंट हो रहा है, पर उसका अपीयरेंस आपको नहीं मिल पा रहा। तो पहली बार आकर के हमारी सरकार ने हर वाटर टैंकर पे जीपीएस लगाना, उसको कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से ऑब्जर्व करना, जनता को ऐप के माध्यम से उसका लोकेशन देना कि उसकी लोकेशन भी सर्च कर सकें, उसकी टाइमिंग भी फिक्स हो और उसका जितना राउंड है वो भी सरकार दे सके और उसी हिसाब से पेमेंट हो। तो आप सोचिए हमें कितनी लीकेजेस रोकनी पड़ रही है, कहाँ कहाँ रोके ये बताइए। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी आपने ये बात कर ली कि वाटर लॉगिंग का चैलेंज है बस आने वाला है अब आपके पास कुछ 45 दिनों के अंदर। वो भी बड़ा कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं दिल्ली में जो कि हर बार इंटरनेशनल शेम बनते हैं हमारे, जैसे कि मिंटो ब्रिज। वहाँ पे आपको मालूम कितने वाटर लॉगिंग के पॉइंट है दिल्ली में? लगभग 550 पॉइंट पे दिल्ली में बड़े वाटर लॉगिंग पॉइंट है। हर बार वर्षों तक आप सब ने देखा मिंटो ब्रिज के नीचे बस डूबी हुई है। ये पिक्चर एक ऐसी स्टैंडर्ड हो गया है जो हर बारिश में अखबार में फ्रंट पेज पे छपनी ही छपनी है। आपको तिलक ब्रिज पे पानी मिलेगा ही मिलेगा। आपके ऐसे पॉइंट जो आपके घरों के आसपास है, आपको वो वर्षों से उस पिक्चर को आप देखते हैं। और दिल्ली में देखिए तकलीफ किस बात की, दिल्ली वाले किसी वेदर को एंजॉय नहीं कर सकते। सर्दी आती है तो पॉल्यूशन आ जाता है, बारिश आता है तो ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग आ जाती है। अच्छा है मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री होके ये बात बोल ली। अच्छा मैं बोल रही हूँ भाई, मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म, तकलीफ जरूर है, शर्म नहीं है कि जहाँ से हमें शुरू करना है, जहाँ हम खड़े हैं, मैं कोई गलत पिक्चर पोर्ट्रेट करके नहीं आगे बढ़ना चाहती। आप गर्मियों में हीट वेव का प्रॉब्लम है, हर मौसम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, पर उसका टाइमली समाधान हो जाए, उसकी एक पूरी वर्किंग हो जाए। जैसे अब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आपने कही, आज हमारी सरकार को बने हुए 65 दिन हुए, परंतु कम से कम 5 बार दिल्ली के बड़े ड्रेन्स पे मैं खुद जा कर के खड़ी होके वहाँ पे विजिट करके आई हूँ कि किस नाले पे कितना डिसिल्टिंग हुआ है। आप मेरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे और अपने चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि पिछले 60 दिन के अंदर 5 बार दिल्ली की सभी बड़ी ड्रेन्स को मैंने खुद जा कर के, हमारे मंत्रियों ने, एलजी साहब ने जाके वहाँ खड़े होना, कितना सिल्ट का टारगेट दिया था, कितनी सिल्ट निकली, पहुंची कि नहीं पहुंची अपना ढलाव पर। उसके बाद भाई आपके सारे बड़े ड्रेन बंद हैं, भरे हुए हैं, ओवरफ्लो है। तो दिल्ली में जो 2023 की बाढ़ आई थी वो कितनी शर्मनाक थी कि देश की राजधानी में जहां नदी तो सूखी रहती है पर बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि नाले भरे हुए हैं, बड़े नाले भरे हुए हैं, इसलिए आपके पीडब्ल्यूडी के नाले नहीं खुलते, पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए हैं इसलिए आपके अंदर की नालियाँ ओवरफ्लो होती है और बेचारा व्यक्ति घर से स्टेप डाउन करने में सोचता है कि देखो पानी भरा हुआ है। और उसको लेके एक बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो गया राजेंद्र नगर में, जो 3 IAS एग्जैक्टली वो क्या था? वो वाटर लॉगिंग थी, जो आपके नाले सफाई नहीं हुए। अगर वो नाले साफ होते तो वो 3 बच्चे नहीं मरते। तो कौन ध्यान दे रहा था, कौन मंत्री जा रहा था? आप मुझे बता दीजिए, कभी मंत्री जी ने या किसी मुख्यमंत्री ने पहले नालों के ऊपर राउंड किए हो इतने? आज ये सरकार जो लोगों की, जनता की सरकार है, वो अपना देख रही है, नाले भी डिसिल्ट होने चाहिए, आपके वाटर लॉगिंग के पॉइंटों को भी आपने कर्व करना है। आज मिंटो ब्रिज पे खुद हमने घंटों खड़े होके, कैसे होगा, मैं खुद 6 टैंकर पानी वहाँ लेके गई, गिरवाया, दिखाया कि भाई पानी आपका। एक बारिश में तो ये हुआ कि सरकार ने पंप लगा दिया, जब बारिश आई तो वो पंप ही डूब गया और वो ट्रैफिक जाम के कारण ऑपरेटर पहुँच ही नहीं पाया। तो ऐसी पढ़ी लिखी सरकार भी किस नाम की। तो हमने जो इस बार किया मिंटो ब्रिज पे, एक ऑटोमेटिक पंप जो ज़मीन से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पे हमने उसको प्लेस किया, और जैसे ही पानी का लेवल एक मेजर के ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक पंप काम करना शुरू कर देगा। तो
तो ये सारी चीज़ों की तैयारी आज हमने कर दी कि बारिश आएगी तो हमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है जिसको हमें आज ही करना है। तो वी आर ऑन वर्क और आई होप कि इस बार वो फोटो अखबार में नहीं छपेगी। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में एक चैलेंज जिसकी चलते शीला दीक्षित गवर्नमेंट को, जो आपसे पहले की महिला मुख्यमंत्री थी, बहुत क्रेडिट मिला, वो चैलेंज था इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही पिछले कुछ सालों में लोगों की शिकायत ये रही दिल्ली वालों की कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे कोई खास काम हुआ नहीं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जिसको लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज आबादी बढ़ती है, आसपास के क्षेत्रों की आबादी जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, इन सब की आबादी बढ़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अब बड़े चैलेंजेस शहर में दोबारा से हैं। तो एक नए सिरे से इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो MSME से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इमेजिन करने की ज़रूरत है और उसको रीवर्क, बट एक ओवरऑल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको लगता है कि पूरा रीइमेजिन करने की ज़रूरत, टाइम आ गया है इस समय? देखिए, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज दिल्ली का जो व्यक्ति है ना, उसका दिल में छोटी छोटी चीज़ों की आशाएं हैं। वो आपसे कुछ बड़ा नहीं मांग रहा। वो ये नहीं कह रहा मुझे स्टेडियम बना दो, मुझे ऑडिटोरियम बना दो, मेरे लिए क्या ही महल खड़ा कर दो। वो क्या चाहता है, मेरी नाली साफ़ हो जाए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरी सड़क में गड्ढे ना हो, मेरा स्कूल अच्छा मिल जाए, मेरे को हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाऊँ तो ठीक ठाक मेरा इलाज हो जाए। ठीक है, आप पिछली सरकार का पूरा 10 साल 11 साल का टेन्योर देखिए। एक फ्लाईओवर, एक बड़ा रोड, एक बड़ा अस्पताल, या कोई सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया पे आपने अपने प्रोजेक्ट को ऐसे दिखाया कि हमारा एजुकेशन जो है मॉडल बहुत बढ़िया है, हमारा हेल्थ मॉडल बहुत बढ़िया है, पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर उस सरकार के द्वारा किया ही नहीं गया। उन्होंने ऐसी ऐसी स्कीम ला दी कि भी फ्री बीज को करके कि दिल्ली के लोग केवल इसमें उलझे रहें और उनकी नज़र जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाए ही ना। और मुझे ये कहने में कोई तकलीफ़ नहीं है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में आज खड़ा है, या तो वो आदरणीय मदन लाल खुराना जी के समय का है, जो उन्होंने मेट्रो शुरू करी, जो उन्होंने फ्लाईओवर बनाए, जो उन्होंने काम अपने टाइम में किए, या उसके बाद शीला दीक्षित जी ने जो उसको आगे बढ़ाया, और या फिर हमारे नितिन गडकरी जी और मोदी जी जिनके माध्यम से पूरा हमारा पेरिफेरी वे और पूरा एक्सप्रेस वे या फ्लाईओवर जो दिल्ली को मिले, बड़ा बड़ा पेरिफेरी वे जो आपको मिला, वो केवल केंद्र सरकार की वजह से मिला। आप केजरीवाल साहब का तो पूरा वो टटोल लीजिए, कोई आपको एक उद्घाटन नहीं मिलेगा। मेट्रो का शेयर कभी नहीं देती थी सरकार, आज भी मेट्रो की 6000 करोड़ की देनदारी जो उनके टाइम की है पेंडिंग है, जो हमें देनी पड़ेगी। पर मेट्रो पे अगर झंडी लहरानी हो, ट्वीट करना हो, क्रेडिट लेना हो, तो वो तुरंत पहुंच जाते थे। देखिए मेट्रो का मतलब, ये वो सरकार थी जिन्होंने मेट्रो का 4th फेज़ 5th फेज़ को लाने के लिए, मतलब टरकाने के लिए, रोकने के लिए, उसको हडल क्रिएट करने के लिए सारे काम किए कि क्रेडिट मिल ना जाए कहीं पे। तो ऐसे में उन सरकारों की क्या ही बात करें, पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की इस टाइम की टॉप मोस्ट ज़रूरत है। और मैंने जो इस बार दिल्ली सरकार का बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसमें हमारी टॉप प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर वो चाहे पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की पाइपलाइन हो, सड़कें हो, रिपेयर हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेस हो, फुटओवर ब्रिज हो, या हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग रिपेयर हो, नई बिल्डिंग बनना हो, या हमारे स्कूल का रेनोवेशन, हर चीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंसेस है। और पहली बार दिल्ली में ऐसा बजट आया जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे काम हो रहे हैं, अब होंगे, और वो सरकार उसकी पूरी केयर टेकिंग करेगी। मुख्यमंत्री जी, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूँ, 2 सवाल और पूछ लेता हूँ कि एक ग्रीन इंडस्ट्री, अब पूरी दुनिया में उसको ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रीन इंडस्ट्री इज़ द फ्यूचर ऑफ अर्बन सेंटर्स, और दिल्ली इस देश का और दुनिया का भी एक बड़ा अर्बन सेंटर है। तो आपको लगता है कि अब जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें, जहाँ पहले भी बहुत दफ़ा CNG के यूज़ के साथ में और इस सब के साथ में ग्रीन की तरफ ट्रांजिशन होने की ज़रूरत हुई, बट अब नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में ग्रीन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत अब आपको लग रही है, और उसके लिए आपकी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ मिल करके काम करना होगा, पर्टिकुलरली MSME में, जहाँ पे कि इस तरह की ग्रीन इनिशिएटिव्स की काफ़ी ज़रूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जब
ऐसी दिक्कतों से घिरी हुई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा कूड़े के पहाड़ और अलग अलग अन्य तरह की जो प्रॉब्लम्स दिल्ली में है, उसको देखें तो इस समय समाधान यदि आप कुछ कह सकते हैं तो वो ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ चलना ही सबसे बड़ा समाधान है। और इसके लिए हमें पूरे दिल्ली शहर को उस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ कर के, पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ कर के इसे अपने हाथों में लेना पड़ेगा। और इसीलिए हम अब जब जो भी योजनाएं दिल्ली के लिए बना रहे हैं वो आने वाले 100 सालों का पूरा रोड मैप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आज की जो प्रॉब्लम है वो 100 साल बाद किस रूप में आएगी और उसका समाधान आज से ही शुरू करें। तो आई थिंक कि भी ग्रीन इंडस्ट्री को हम पूरा उपयोग करेंगे और दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी, आपने लोगों को काफ़ी अपनी सरकार का रोड मैप दिया और आपकी सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनका ब्यौरा भी दिया। बट आपकी देखिए, दिल्ली और बाकी यहाँ अर्बन सेंटर्स के साथ में एक ये बात होती है कि वहाँ ज़्यादातर जनता हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनकी शायद जिम्मेदारी भी ज़्यादा बन जाती है कंपेयर टू लोग जो एक्सपोज नहीं हैं, जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया या जिनकी पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की एक जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। एज ए दिल्ली चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल, एज ए लेडी चीफ मिनिस्टर, आपका दिल्ली वालों के लिए क्या कहना है कि दिल्ली वालों को दिल्ली में रहते हुए या आते जाते समय अपनी किन जिम्मेदारियों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि उसी कोलैबोरेशन से लोग ऐसा फील कर सकें कि दिल्ली एक्चुअली एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल सिटी के रास्ते पे है। आपका दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज? ये आपने बहुत मेरे मतलब की बात कही। मुझे हमेशा से ये लगता है, देखो पूरे देश में पहलगांव की चर्चा है, मैं उससे जोड़ती हूँ इसे। जब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पूरे देश में, पूरी दिल्ली में और यहाँ इस हॉल में बैठे हुए भी जितने लोग होंगे, उस हमले को देख करके सबके दिल में ये भाव जरूर आया होगा कि मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं ही जा कर के बंदूक उठाऊं और गोलियों से भून दूं उन्हें। ऐसी देशभक्ति, ऐसा देश के प्रति प्यार सबके अंदर है। हर व्यक्ति सोचता है मुझे मौका मिले तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ, पर मैं आपको विश्वास से बता सकती हूँ किसी को मौका मिलेगा ही नहीं, ना सरहद पे जाने का, ना गोली मारने का दुश्मन को, और ना सीने पे गोली खाने का। देश के लिए मरने का एक भी मौका नहीं है हम सबके पास। देश के लिए मरने का एक भी मौका हमारे पास नहीं है। हमारे पास यदि कुछ मौका है तो देश के लिए जीने का मौका है। और अपने लिए जीते हुए, अपना व्यापार, रोजगार, नौकरी करते हुए हमें जरूर अपने देश के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। हम जब विदेश जाते हैं ना, वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, विदेश जाके हम बड़े कल्चर्ड हो जाते हैं। हम कुछ भी खाएंगे रैपर अपने पर्स में रख लेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो फेंक नहीं सकते, यहाँ तो थूक नहीं सकते, यहाँ तो बैठ नहीं सकते, इसको डैमेज नहीं कर सकते, रूल को फॉलो करना ज़रूरी है, फुटपाथ ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, रेड लाइट ऐसे नहीं जंप करेंगे, सब याद आ जाता है हमें। पर जब हम अपने देश में होते तो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, स्वच्छंद पक्षी, कुछ भी कर सकते हैं। अपना देश है भाई, अपना शहर है, फेंकिए, कुछ भी करिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि यदि हम लोग बड़ा काम ना सही, छोटा छोटा ये समझ लें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा शहर गंदा ना हो, मैं कूड़ा सड़क पे ना फेंकूं, मैं ट्रैफिक रूल्स को डिसोबे ना करूं, मैं अपने घर की मूर्ति टूट जाए तो नज़दीक के किसी पेड़ के नीचे जाके ना रखूं, कुछ और सोचूं कि इसका क्या वे आउट है, मैं अपने घर की फूल मालाएँ पूजा करने के बाद नहर में ना फेंकूं, मैं अपनी आस्था का पालन करते हुए गाय को रोटी खिलानी है तो सड़क पे ना फेंक के आऊँ। मैं मुझे एक सवाल पूछना पड़ेगा आपसे, उस पे पहले अरे मैं पूछ तो लूँ, बता तो दूँ। अब जब आपने कहा है कि दिल्ली वालों से क्या कहना चाहती हो, बिल्कुल, तो उनको समझ में आए कि भाई मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन कर रही है कि दिल्ली अपनी है। मैंने तो नेताओं को भी बोला है भाई कि ये जो दिल्ली में पोस्टर लगाते हो, वॉल रेंटिंग करते हो, सब बंद करो, नहीं करनी है। अब दिल्ली को सुंदर बनाना है, साफ बनाना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ। कभी मैंने भी करी होगी गलती,
पर हम अगर दिल्ली को खूबसूरत देखना चाहते हैं, हरा भरा देखना चाहते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्लांटेशन करें, दिल्ली को बदसूरत ना करने दें। कमर्शियल जो हम करते हैं, वॉल राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, और ये सब छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली को साफ रखने के लिए हम सबका रोल प्ले है। जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो हम करें भी ना, बस इतना अगर हमने कर लिया तो ये मानिए कि आज से दिल्ली सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली सब होना शुरू हो जाएगी। तो एक काम देश के नाम, हम सबको अपने लिए सोचना होगा और करना होगा। जी। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो गाय को रोटी खिलाने वाला वो एक इंसिडेंट आपके साथ हो भी गया, आपने सड़क पे किसी को टोका भी कि भाई ये खिलाना है तो जरा। अरे होता तो कई बार है, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कैमरा मेरे ऊपर आया। तो मैं तो इस काम के लिए हमेशा से कोई मुझे दिखता है तो टोकती रहती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं अपने मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया शालीमार बाग निगम पार्षद थी तो मैंने अपने वॉलेंटियर खड़े कर दिए हर चौक पे कि कोई डाले तो उसको पकड़ लेना और उसको रिक्वेस्ट करना कि भाई यहाँ नहीं डालना है। तो लोग झगड़ा करते थे, आपको क्या दिक्कत है जी, हम तो डालेंगे, हमें तो पंडित जी ने बोला कि पालक खिला के आना है गाय को आज, तो मैं तो यहीं खड़ा होकर गाय को पालक खिलाऊंगा, मैं तो यहीं रोटी खिलाऊंगा। तो मतलब लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप जिसे माँ कह रहे हैं, गौ माँ, उसके लिए सड़क पे डाल के रोटी खिला रहे हो, कुछ भी सामान खिला रहे हो, तो क्या ये फेयर है? कभी गाय को भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गाड़ी टक्कर मार जाएगी, और कहीं वहाँ पे फिसलन होने से होता ही रहता है, वो गाय के साथ भी एक्शन यस, व्यक्ति को भी दिक्कत, गौमाता को भी दिक्कत। ऐसा काम क्यों करना है? और वो लोग भी कल्प्रिट हैं जो गाय को सड़क पे छोड़ते हैं, एक्चुअल में तो वो ज़्यादा कल्प्रिट है। फिर उनके वो खिलाफ एक्शन ले आपकी सरकार, उनके खिलाफ एक्शन ले आपकी सरकार। देखिए ले भी रही है लगातार, अभी सिस्टम को बहुत ठीक करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। गाय सड़क पे छोड़ने वाला जो गवाला, जो दूध वाला है, वो इन्वॉल्व है। वो जो एमसीडी जिसको गायें वहाँ से हटानी है और वो नहीं हटा रहे या मिली भगत है, वो जिम्मेदार है। जहाँ से उठा करके जिस गौशाला में भेजनी है उसकी कमी, गौशालाओं की कमी, वहाँ पे केयर टेकिंग की कमी, वो जिम्मेदार है। और ऐसे पूरा सिस्टम रेनोवेट होने की ज़रूरत है। उसमें जो काम दिल्ली सरकार के पार्ट पे है 100% उसे हम पूरा करेंगे। एक नई गौशाला 40 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार बना रही है, जो कि बिल्कुल एक मॉडल गौशाला होगी। और इसके अलावा भी समाज के साथ में जुड़ करके ज़मीन सरकार दे, गौशाला लोग चलाएं, ऐसा प्रपोजल भी सरकार की ओर से है। Chief Minister, you spared some very valuable thoughts and also spared your valuable time. I know you have a busy schedule. Your government is only 65 days old, but I wish you luck from the NDTV group, and I wish you luck from all the people who have assembled here. Thank you very much for coming, Chief Minister. Thank you. Check. वाला mic.
Ladies and gentlemen, I would request everyone to kindly please settle down. Yeah. Ladies and gentlemen, I would request everyone to kindly please settle down so that we can begin our next session. We'll be breaking for lunch right after this session, so I would request everyone to kindly please settle down. Thank you very much, everyone, and thank you, Madam Chief Minister, for sharing your views and sharing the blueprint for Delhi. And we all hope that we see good governance in the coming years. On to our next session, startups are bridging gaps in efficiency, transparency, and scalability in legacy sectors like power, energy, manufacturing, and agriculture. In doing so, they are playing the role of disruptors. And that brings us to our next topic of discussion, disrupting the old, powering the new. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Vishal Pandya, co-founder, Reconnect Energy, Dr. Balram Bhardwaj, co-founder and managing director, Maclec Group, Bhuvnesh Gupta, co-founder, Poston, and Dr. Ranjit Mehta, CEO and Secretary General, PhD CCI. They will be speaking with NDTV's Sikta Deo. Today we'll be talking about disrupting the old, powering the new. How we are challenging traditional industries and using new and more efficient technologies to take them to the next level. MSMEs जो हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है, अब अपनी पुरानी मेथड्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और नए सॉल्यूशंस के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे हैं. This shift is not just about adopting new technologies, it's about making business agile, sustainable, and more competitive in today's fast evolving world. ये वक्त है पुराने systems को rethink करने का, नए models को adopt करने का और अपनी industries को future ready बनाने का. We are here to understand how MSMEs are leading this change, disrupting old practices, and embracing innovations to fuel India's growth. Joining me, Vishal Pandya, co-founder, Reconnect Energy, Dr. Balram Bhardwaj, co-founder and managing director, Maclec Group, Bhuvnesh Gupta, co-founder, Poston, Dr. Ranjit Mehta, CEO and Secretary General, PhD CCI. आप सभी लोगों का स्वागत इस मंच में. A warm welcome to all of you. Dr. Mehta, let me start by you. How are startups bridging the gaps between the legacy sectors, whether it's power, energy, manufacturing, or agriculture? Thank you. In fact, India is at a very historic crossroads where the legacy meets the transformation, and startups are leading this journey. Like when Startup India was launched in 2016, we had just around 400 registered startups. But today, as we talk, we have more than 150,000 startups in our country. We are the third largest startup ecosystem in the world. And especially we have seen during COVID, there are companies which became unicorns within 1.5 years. That is the kind of transformation, that is the kind of agility, the disruptors. Because, this is the time of collaboration between legacy and startups.
This is not the time of competition because the gap needs to be filled. Already we have seen that legacy has certain advantages, but we don't have to really preserve our legacy. We have to actually, what we have to do is we need to build our partnerships from the strength of the legacy that needs to be blended with the disruptive and innovative powers of the startup. Right. So that's how India will move forward, and truly what we have envisioned is Viksit Bharat by 2047. I think we need both, and they need to collaborate, reimagine, rebuild, and harvest the power of innovation. That's where the startups can really fill the gaps. Right. अब विशाल, my next question to you. Startups किस तरह से जो legacy sectors हैं उसको disrupt कर रहे हैं? खास तौर से आपसे जानना चाहेंगे power producers के supply chain को. Right. So energy remains one of the oldest sector, and आपने बहुत अच्छी बात बोली कि MSME country का backbone है. Absolute numbers में बात की जाए तो 40% export MSME contribute करते हैं, करीब 11 करोड़ jobs. And energy remains one of the foundational cost item for all the MSMEs. Energy में, if you go back 2 decades ago, we had vertically integrated energy utilities. Competition introduced किया गया 2003 में, where if you want to build a supply position in energy, you don't need a license. And अभी जो country में investment हो रहा है, last 2-3 year का history देखो तो majority of the investments are led by private investors in the renewable sector. And 2030 के targets अगर हम देखे जाए, we are aiming at adding 500 gigawatt of energy put together by 2030. So energy transition, जो बहुत सारे लोगों ने ये शब्द सुना होगा, what it means is that जो पहले fossil fuel based economy थी, वो transform हो रही है renewable energy driven ecosystem. Renewables में भी new ecosystem players are coming, rooftop solar, storage, electric vehicles. And वहाँ पे the opportunity for MSME is that how do you switch to getting cheaper and cleaner renewable energy supply? अगर आप textile industry ले लो, 15 से 25% आपका energy total production cost is contributed by electricity. Heavy industry में 25 से 35% है. If you switch to cheaper and cleaner renewable energy supply in a cost efficient manner, you can be a lot more competitive. There is more money in the hands of MSME, and that is where we are building digital energy platform, where currently we are working with about 3,500 renewable asset owners in the country. करीब 35,000 megawatt renewable energy production we handle in terms of prediction, dispatch, all the way till billing and settlement. And there is a fantastic road ahead in terms of the opportunity that the country offers. भुवनेश, टेक्नोलॉजी का कितना रोल आप इस वक्त देख रहे हैं, खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में? So in agriculture, we can typically see agriculture is a very long value chain, right? It is not just farmers. So it's the first leg where there is a produce. Then there is a supply chain via which this goods go to a processor. So example in case is paddy. We take it, it can't be consumed. It has to be processed into rice. So what we need is MSMEs who typically process this paddy into rice. Then the next channel is the linkage to the wholesalers, to the retail, to the consumption leg. Again, on the trader side, like in Delhi, we are primarily a trading community versus industrialist community. So on the traders side, again, this is MSME sector. Government has recently included traders, I think 2 years back, in the MSME sector to enable this growth more and more. So in agriculture, we can work on each of these legs, and each of these legs offers unique challenges, and there's a lot of opportunity as well. So from a tech perspective, when we talk about a farmer, in India, the farm holding is very small. So primarily work would be more enablement on the weather, crop insurance, so that there is a sustainable income in flow. On the processor side, which is primarily as MSMEs, a lot of focus is both from the government and from the private sector as well. So most of the startups which are out there in the ecosystem, primarily private placements, is primarily in the supply chain sector. You name us, Poshan, Dehat, Ninja Cart, all of them are working in the similar domain, where they are trying to linkage the raw material to the processor
and then process it to the next level. Right. अब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस की बात करें डॉक्टर भारद्वाज, तो ऐसे में अब हाउ आर MSMEs आर इंक्लूडिंग दैट, एंड जो पहले बदलाव हम सोच नहीं पाते थे, नाउ वी सी दोज चेंजेस. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस डन टू दिस सेक्टर? Yeah, absolutely. Thank you for asking this very straightforward question. I would like to say definitely right now the India require transition in every single stage, specifically in power sector. You rightly mentioned, Mr. Pandey, that there is a requirement to have a transition from the fossil fuels to renewables. That is first thing to do. But there is a requirement to have a disruptive technology, specifically in those sectors which are actually the backbone of 24/7 baseload power generation. Let me give you the basic example of renewable hydropower. Hydropower sector is right now getting more deprived, and it is almost stagnant. Since 2018, I don't find many hydro projects coming up to the place. There are many examples that what hydropower has done to the environment and everywhere, but there is a requirement to change the conventional hydropower technology into a sector-based technology which can generate the power from the running streams without making the big infrastructures. Similarly, in the case of solar sector, whenever we talk about 24/7 base load power, solar, wind, all are intermittent. They cannot fulfill that requirement. But there is a requirement of technology in some terms of battery storage, where you also need to focus on other than pump storage. So in such sectors, similarly in agriculture also, let me tell you one more example. Since our startup is based for renewable energy generation from running water, so we are focusing on canal-based infrastructure all across India and globally as well. I have seen many developed countries, and I personally feel the infrastructure related to the agriculture in India need to be reformed from the very basic, and the basic is the irrigation canal networks. The basic problem here is nobody knows that how much water India holds in their dams, how much water getting discharged, and how much getting reached actually to the last mile farmer. It is nobody knows. So there is a requirement for technology adoption, changing from the grassroots level and monitoring to every single aspect. So there is a disruption of technology is needed. I am totally aware. It is happening, and Yes, that's what I'm has telling. happened. Yes, the things are happening, but as far as the India is concerned, things are happening very, very slowly. So that's the problem is, and I would really request some youngsters here out there, so who can definitely try to adopt such new technologies, try to learn about such new technologies which can be the part and parcel of the supply blockchain and the infrastructure blockchain of the legacy sector, specifically agriculture and the power sector. डॉक्टर मेहता, अब ट्रेडिशनल बिजनेसेस में बहुत बदलाव देखे गए हैं हाल के दिनों में, तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म्स का रोल है या फिर डेटा का है या फिर रियल टाइम लॉजिस्टिक्स का है, वो उसने कैसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस को एम्पावर किया है? देखिए, जो भी फ्यूचर ग्रोथ यहाँ के बाद होगी, उसमें टेक्नोलॉजी विल बी एट द कोर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, ये जो पिलर्स हैं, इसके चारों ये एक सेंट्रल पिलर होंगे हमारे ग्रोथ के. आज जितने भी डिस्रप्शन आए हैं इकोनॉमी में, बिजनेसेस में, चाहे आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज कहीं पे आप भेजना चाहते हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें, दो जेम ट्रिनिटी है जिसमें जनधन, आधार और मोबाइल, जेम ट्रिनिटी, जिसने इंडिया के टोटल लैंडस्केप को, इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल दिया है और कई मिलियंस, करोड़ों लोगों को दे हैव एम्पावर्ड. ऐसे लोग जो कि एट द बॉटम ऑफ पिरामिड हैं, उनको एम्पावर्ड किया जेम ट्रिनिटी ने. सेम वे जितने अभी डिस्रप्शंस हुए हैं और जैसे बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, उसके पीछे हाथ है टेक्नोलॉजी का. चाहे आप एआई लीजिए, रोबोटिक्स लीजिए, जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा यूपीआई देखिए, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि उसने पूरे विश्व में एक डिस्रप्शन, या पूरे विश्व के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं. तो चाहे एग्रीकल्चर हो,
MSMEs हों या नया बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और द वे द थिंग्स आर कमिंग फॉर वी टॉक अबाउट CBAM जो कि अगले साल से इम्पैक्ट करेगा हमारे बिजनेसेस को, उसके लिए भी जब तक हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, अपने डेली यूज़ में, तब तक हम ग्लोबली उसको कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट लीप ऑफ ग्रोथ है इंडिया में, नेक्स्ट लीप ऑफ ग्रोथ विल डेफिनेटली कम ओनली बिकॉज हाउ फास्ट वी अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। और 3 चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। Number one, everyone today has to identify, number one, the speed with which we identify the opportunities and challenges. Secondly, speed with which we decide what to do with them, and speed with which we actually implement them on the ground. ये जो 3 S हैं, इसमें सारी स्पीड है। I mean, the world has changed so much कि वो स्पीड आप तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। यू कैन नॉट जस्ट गो लिव ऑन द पास्ट। हमें अपने जो ओल्ड लिगेसी है उसको इंटीग्रेट करना है, जो नई जो डिस्ट्रप्टिव पावर है इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की। दैट्स हाउ द बिजनेस मॉडल्स आर चेंजिंग एंड एवरीबडी नीड्स टू अडॉप्ट इट। जितनी जल्दी हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें अपने बिजनेस प्रोसेसेस में, अपने ऑफिसेज में, अपने डेली यूज़ की चीज़ों में, मेरे ख्याल से देन एवरीबडी विल बी कॉम्पिटिटिव। तभी हम ग्लोबली उसको नेक्स्ट जो ग्रोथ है हमारी इंडिया की वो तभी आ पाएगी। बिल्कुल। My next question is in fact to all 3 of you. Let me start by asking you, Vishal. अब collaborations की बात है, legacy businesses और startups का collaboration is the road ahead for our future, for our economy. What kind of collaborations can happen between the legacy businesses and startups to start with? Yeah, so fantastic question. Disruption की अगर बात करें, including some of the old age businesses, banking, after UPI a lot changed there, right? Same way in the broking business, after Zerodha, the enabling layers around access to internet changed, UPI as well as broking, right? COVID played a role. Energy में अगर देखा जाए, pain problems क्या है? One way there is compulsion to give free electricity to a much wider population. So the distribution companies get squeezed out. They can't bill them, dependent heavily on the government funding. The MSMEs, the industries, they come under increased pressure because DISCOM will keep raising the tariffs, right? They are compelled to do so because of all the political obligation. MSMEs get squeezed out there. The intervention that is needed is in terms of collaboration. We need a digital public infra. The way UPI eliminated need for a TASIC approval from banking partners, the distribution companies today are becoming like that. If an MSME wants to go and source electricity directly, which is permissible under the law, even today, not many states are encouraging it. So if you remove that approval process, make it digital, it can fast track the way energy heavy MSMEs can source cleaner energy. And of course, India has enough talent to create larger public infra around energy transactions. If you have followed the story around unified energy interface, जो नंदन नीलेकानी साहब ने अभी launch किया था in collaboration with International Energy Agency, they are also talking around same. The collaboration is needed at a policy level, the grid management level, the distribution companies who are the backbone of the economy, and of course, everybody will benefit along the ecosystem. Right. Talking about the resistance, what do you see? Is there a resistance of the legacy businesses to एक तरह से कहें तो अब वो क्या वो स्टार्टअप्स के इनोवेशंस को अपना रहे हैं कि अभी भी वो हिचक है या फिर वो रेजिस्टेंस दिखाई देता है? No, definitely. Let me tell you one thing very clearly with my own experience. I'm in the business of startup. I started 2014. It's been 10th year. Yes, last year I've been out of the startup ecosystem, but I have seen many resistance, specifically in traditional energy generation sector. If I talk about hydro, that is my favorite topic because it's my own power sector. So
there are some issues because if you bring something which is really disruptive and everybody is appreciating it in terms of internationally recognized agencies and everything, it becomes really, really hard to get that technology applicable in India in the same scenario with same policies. And if you start changing policies, that took years, even generations. So one thing is adoption at ground level. You need to change the mindset that yes, this thing. There is resistance, you're saying. Absolutely. At the ground level, specifically the policy level, where the policies are supporting those old infrastructure-based projects which are running since generations, they need to have, and because of that, the entire sector is suffering and not growing at that level that the world is growing. For example, in the US, the first project of hydrokinetic, it's a separate sector which generates power from running water. This started in 2000 only, 2001 and 2 only. In India, when we started this sector, we were the only one who's talking about hydrokinetics. Wherever I used to go, the first thing I have to discuss is about what is hydrokinetics. Then I have to focus, I have to tell them that I will not going to build any dam, reservoir, anything, nothing. Then I have to take multiple sectors in confidence. Because at same level, if you're dealing with the sector where only government driven, like hydro, where the irrigation canals, river infrastructure, everything belongs to government, even power sector is also belongs to government. Being a private company and being a startup at that level, that took a hell lot of time, efforts, and specifically in terms of policy. That's one sector. Second thing, the infrastructure requirement. If you wanted to make everything make in India, 100%, it's really, really tough task. Because one thing, you take challenge, you said really right that we have a lot of talent, specifically, but they are out of India. And if you wanted actually a talented young engineers. We have here also. No, like you, I think we have here also, but if you wanted to make anything cost competitive, you cannot afford to that talent. What China is doing, they have the talent at even very grassroots level. If you wanted to have welders, skilled welders, they have millions. If you search about in India, you find even thousands, and most of them are out of India, like they are working in Gulf countries and every other countries where the package is higher. So infrastructure sector, you require to have basic amenities or basic, skill sector need to be revived. Right. So there are many things. One last question to you. I really want to know, startups have, to Bhuvnesh, startups have agility, so legacy companies have experience. And they both have to learn from each other to move forward. Like he's saying, there is resistance, there has to be collaboration, like he said. But what are the lessons one lesson they can learn from each other to move forward together? So the lesson they can learn is that this is the only way ahead, right? So typically, like Vishal told, there has been transformation via UPI in banking sector, insurance sector, brokerage sector. Same thing is being seen in somewhat in the power sector as well, right? Similar thing we can also see in the agriculture sector as well. So one is, let's say, related to inputs delivery to the farmers. Today, most of the farmers have a crop loss, primarily because they are not able to get nearly 40% of the time the raw material, fertilizers, pesticides required for their crop. Even if they know that it has to be given, the availability is not there, right? In that channel, a lot of efficiencies are coming up with the larger players, apart from new innovations coming in, where the productivity, yield, and all of those things are being taken care of. And second thing is primarily around market linkage. The second is now we have a farmer output, how we connect it with the processors, how we can give more visibility to the farmers on the price realization, right? How they can store, how they can have visibility on the app, where they can also have money around it. So some sir mentioned about that the prime problem statement of the MSMEs is money, right? So even if there is a capex, there is something, there is the additional requirement of money which comes in. So how we can have more assets given to them, where the fintechs come in, DSAs come in, banks and NBFCs come in. So a lot of things are coming up in that direction, and there is only one way, which is primarily collaboration, right, between the two. Right. So the new is disrupting the old, and the old is powering the new. On that note, thank you so much for this lovely conversation. Thank you for joining us. Thank you so much. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, this is the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave. We have witnessed some fascinating conversations so far, and there are many more lined up. We'll be breaking for lunch, and we'll be back in exactly 1 hour with more from the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave.
मुझे ये देखो सामा क्या कर रहा है। और नेक्स्ट सेशन उनका है, अदिति का है। हाँ।
Ladies and gentlemen, I request everyone to kindly please settle down. We are about to start our next session. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave, and in the first of our post-lunch sessions, we talk about how micro, small and medium enterprises are revolutionizing healthcare and education in India. From leveraging technology to enhancing accessibility and affordability to driving innovation in last mile delivery, MSMEs are making a significant impact. Please put your hands together for our panelists, Dr. Sameer Gupta, Senior Cardiologist, Director, Metro Group of Hospital; Ajay Singh, Founder and Director, Highlands; Dr. Ankita Sabharwal, Partner, Sri Jeevan Hospital; Abhijit Sinha, Program Director, Ease of Doing Business and at Disha. They will be in conversation with NDTV's Aditi Rajput. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सेहत और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी हम सभी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका है और एमएसएमईज़ के ज़रिए ये क्षेत्र नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। एमएसएमई क्षेत्र इन क्षेत्रों में न केवल इनोवेशन को बढ़ावा देता है बल्कि सस्ती और क्वालिटी सर्विस जो है वो भी उपलब्ध करवा रहा है। सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम जो हैं उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, इतना ही नहीं ये टियर 2 और टियर 3 जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एमएसएमईज़ को इन्वेस्टमेंट को लेकर, आर्थिक मदद जो होती है उसे लेकर, रेगुलेशंस जो होती हैं उसके जो चैलेंजेस होती हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। आज के पैनल में हमारे साथ इस क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका जो है, उनके टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास एक्सपर्ट्स का पैनल है जो लंबे समय से इस फील्ड में एक्टिव हैं और चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, अपना नाम भी कमा रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट है आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराती हूँ। डॉक्टर समीर गुप्ता हैं हमारे साथ, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। मिस्टर अजय सिंह हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं हाई ग्लैंस के। अजय सिंह साहब भी हैं यहाँ पर। डॉक्टर अंकिता सब्रवाल हैं, पार्टनर हैं श्री जीवन हॉस्पिटल की। और अभिजीत सिन्हा साहब हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट दिशा के भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अभिजीत जी, अगर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँ, स्वास्थ्य की जो सर्विसेज होती हैं और जो शिक्षा होती है, एमएसएमईज़ किस तरह से एक्सेसिबल सर्विसेज दे रहे हैं और कितना फ़र्क आपने कुछ सालों में देखा है, वो ज़रूर बताएं। फ़र्क एमएसएमईज़ के लिए और हेल्थ केयर के लिए मैं कहूँगा आफ्टर कोविड लगभग सब कुछ मूल रूप से बदल गया है, क्योंकि जो एमएसएमईज़ और जो हेल्थ केयर की सुविधाएं होती हैं वो अगर अमूमन आप माने तो किसी की तकलीफ़ उनकी सर्विस होती है। और अगर आपदा में अवसर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोविड के समय में सबसे बड़ी आपदा अगर हेल्थ केयर की आप देखें तो वो कोविड थी पिछले 100 सालों में। बिल्कुल। जितनी बड़ी थी उतना बड़ा अवसर भी उसने क्रिएट किया होगा एमएसएमईज़ के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। हम कितना उस अवसर का इस्तेमाल कर पाए हैं अपनी हेल्थ केयर की फ्रेमवर्क को एमएसएमई लेवल पे सुदृढ़ करने के लिए और ताकतवर करने के लिए, मुझे लगता है ये उस बदलाव का करीब करीब तीसरा साल है, 2021, 22, 23, 24। और पिछले 3 सालों में आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड के समय जो काम किया, जिसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें डायरेक्टर जनरल का टाइटल दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ करीब 1.5 घंटे पीएमओ में बिताए और फिर उनके डिजिटल अपग्रेडेशन के ऊपर उनको किस तरह सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर शायद हमारे पास आशा वर्कर्स नहीं होती
तो जो डेथ टोल का नंबर होता है इंडियन पॉपुलेशन के प्रोटेक्स्ट में इन कंपैरिजन टू द सेम टोल दैट वी हैड इन यूरोपियन कंट्रीज़, वो काफ़ी ज़्यादा होता। सो उनको ताकत देने के लिए ज़रूरी था कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, हेल्थ केयर डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम करें, जिसमें हेल्थ केयर के डेटा को कैसे एसेटाइज कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, इसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट लेके आए। और अगले 2 साल में 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिजिटल हेल्थ केयर डेटा को और डेटा सेंटर को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अकॉर्डेंस दे दी, उनका स्टेटस दे दिया। 2023-24 में डेटा प्रोटेक्शन बिल क्लियर कर दिया, जिसके बिना हेल्थ केयर का कोई भी डेटा का प्रोजेक्ट किया जाना मुश्किल था। और 2025 में दिशा जैसे प्रोजेक्ट जो उसको एसेटाइज, मोनेटाइज और अब डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं, ये संभव हो पाएगा। और ये बदलाव थर्ड टर्म में मॉडर्न इकोनॉमिक्स 3.0 के 2024 टू 29 में वो ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे जो आपने पिछले 70 सालों में देश में नहीं देखे होंगे। डॉक्टर अंकिता, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की, एजुकेशन के क्षेत्र में, किस प्रकार से जो रीजनेबल सर्विसेज होती हैं वो एमएसएमईज दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल्स देखती हैं जहाँ पर एमएसएमईज ने दोनों क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने में कामयाबी हासिल की? जी, पहले के टाइम में होता था कि अगर किसी भी छोटे शहर में किसी मरीज़ को प्रॉब्लम होती थी तो वो डायरेक्टली बड़े जगह जाता था और अपना 1 महीना वेस्ट कर देता था, पहले इन्वेस्टिगेशंस, फिर डॉक्टरों के चक्कर, फिर मे बी ओपिनियंस। बट अब हमने ऐसे कर दिया है कि कुछ रेफरल सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पर डिजिटलाइजेशन कैमराज हैं। और जैसे मैं आँखों की डॉक्टर हूँ, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, थायराइड रिलेटेड चेंजेस, वो पिक्चर्स भी भेजते हैं अगर जनरल प्रैक्टिशनर्स, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। आपको सिर्फ छोटी छोटी, सबका टाइम बहुत आजकल अमूल्य है और उनको छोटी सी तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल दीज डिजिटलाइजेशन एंड द रेफरिंग सेंटर्स हैव बिकम अ ग्रेट हेल्प। तो वो तभी आते हैं जब वहाँ पर उनकी चीज़ हल नहीं हो पा रही है या फिर हमें उन पिक्चर्स को देख के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। So I think ये digitalization and camera and picturization has become a great role which is helping the society. बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर समीर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हेल्थ की फील्ड में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक ही कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है, फिर उसमें चैलेंजेस अलग अलग हो जाते हैं। अगर जिस तरह से डॉक्टर अंकिता कुछ देर पहले हमसे डिस्कस कर रही थी कि अगर एक 20 बेड का हॉस्पिटल है और एक अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है, दोनों के कंडीशंस बहुत अलग होंगे, दोनों की डिमांड्स बहुत अलग होंगी और दोनों के जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक जैसे नियम कायदे जो हैं वो रख दिए जाते हैं। आप पाते हैं इस तरह की दिक्कतें? आपको भी लगते हैं इस तरह के चैलेंजेस? जी बिल्कुल। जो आपका प्रश्न है कि स्मॉलर हॉस्पिटल्स एंड बिगर हॉस्पिटल्स व्हाट की जो उनको जो चैलेंजेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फंक्शनिंग के लिए चाहिए, क्या वो सेम चैलेंजेस हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो देखिए, जब हेल्थ केयर जो है एक बहुत ही रेगुलेटेड फील्ड है, इसके अंदर हर चीज़ की रेगुलेशन होती है और वो बहुत ज़रूरत भी है उन चीज़ों की। लेट्स बी वेरी क्लियर, रेगुलेशन की ज़रूरत भी है। तो जब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी अपना एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है तो उसको खूब सारी पॉलिसीज़, परमिशंस की ज़रूरत होती है। आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, आपको एनओसी चाहिए, आपको फार्मेसी लाइसेंस चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको लेबर लॉज चाहिए। तो आपको ये काफ़ी सारी जो हर्डल्स होते हैं आपको वो ओवरकम करने पड़ते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, PNDT लाइसेंस। सो ये जो लाइसेंसेस होते हैं दे आर काइंड ऑफ अ स्टॉपिंग स्टोन, दे आर वेरी ट्रबलसम कि आपको ये सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। बहुत ज़रूरी है, वंस अगेन दे वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वे आउट वुड बी इफ देयर इज़ अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम लोग जाएं और बोले जी आपको अस्पताल खोलना है, ये आपके 50 लाइसेंसेस हैं, ये सिंगल विंडो है हेल्थ केयर की, आप हमारे थ्रू जाके सारे लाइसेंसेस ले सकते हैं। सो दोज वुड बी समथिंग विच वुड बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत मददगार होगा एक हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लिए। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जगहों में होते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जैसे हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, सो मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं, एंड इन Tier 2, Tier 3 सिटीज़ दीज हॉस्पिटल्स आर कंपेरेटिवली लेस। वहाँ पर स्मॉलर सेटअप्स,
primarily run by the owner who's also a doctor are more prominent. However, the challenges across both the bigger hospitals and the smaller hospitals do remain for the policy, for all these things. And yeah. बिल्कुल। अजय सर, आपसे मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि जब हम बाज़ार की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं और किस तरह के बदलाव या सुधार किए जा सकते हैं ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो असल में हम उसे कर पाएँ, ज़मीन पर ला पाएँ? मैं फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग में बात कर सकता हूँ। जी। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज इन सेंस कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री वहाँ के लोग आते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो प्लांट को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसे जीएमपी सर्टिफिकेशन बोला जाता है। सपोज यूएस में करना है तो यूएस एफडीए चाहिए, आपको यूरोप में करना है तो यूएस जीएमपी चाहिए। और वो जो सर्टिफिकेशन होते हैं उनके काफ़ी नॉर्म्स टफ होते हैं और आपके जो प्लांट यूएस में है चाहे इंडिया में है, दोनों का सेम क्लास हो जाती हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग चैलेंज आते हैं जो ह्यूमन ट्रायल बायोक्लेंस जिसे बोला जाता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मेडिसिन रजिस्टर्ड करनी है सपोज यूएस में, यूरोप में, रेगुलेटेड मार्केट में, तो आपको बायोक्लेंस करना पड़ेगा, ह्यूमन ट्रायल करना पड़ेगा, और वो सेंटर जो होते हैं वो जहाँ पे आप बायोक्लेंस कर सकते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं यूएस यूरोप से। अगर आप वहाँ पे जाना है तो वो सेंटर बहुत ही कम सेंटर होते हैं और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जो सेंटर गवर्नमेंट बनाए और वहाँ पे उनको सर्टिफिकेशन से अप्रूव किया जाए कि जो भी एमएसएमई के जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे अपना ह्यूमन ट्रायल कर सकें और वो एक्सेप्टेबल हो सारे रेगुलेटेड मार्केट में। ये बहुत बिग चैलेंजेस हैं। अब ये जो फार्मास्यूटिकल है बहुत ही इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, क्योंकि अगर आपको इंडिया में करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट कम होगा तो चल सकता है, बट एक्सपोर्ट में तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए काफ़ी। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बड़े हाँ, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। अभिजीत सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी। एआई, टेलीमेडिसिन, डिजिटल क्लासरूम जैसी जो नई तकनीक है वो एमएसएमईज कैसे उनका इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और अभी इस मामले में शायद एक लंबा सफ़र हमें तय करना है, तो किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है? क्या आगे की राह हो सकती है? मैं अभी दिल्ली में हूँ। 67% पॉपुलेशन भारत की, उनके पास हेल्थ केयर के लिए फर्स्ट टच पॉइंट या तो आशा वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर सर्व्ड बाय देम। और पिछले 40 सालों में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जो ग्लोबल रेशियो है पॉपुलेशन वर्सेस डॉक्टर, पॉपुलेशन वर्सेस फार्मेसी एंड पॉपुलेशन वर्सेस हेल्थ केयर सिस्टम या हेल्थ केयर सेंटर, उसको मीट नहीं कर पाए। जो सीट्स थी गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है आगे आने वाली जनरेशन की, उसके प्रोजेक्शंस भी हमारे पॉपुलेशन के साथ मैच नहीं करते हैं। सो अगर आगे आने वाले समय में हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को टेक्निकली ट्रेनिंग के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से और सक्षम नहीं बनाएंगे तो शायद हम इस गैप को कभी पूरा नहीं कर पाते। और ये चेहरा बहुत साफ नज़र आया कोविड के समय में, जब बाकी की दुनिया बहुत लड़खड़ा रही थी, हम एक सक्षम पोजीशन पे थे क्योंकि हमारे पास एक हेल्थ केयर वर्कर का नेटवर्क था। अब जब उनको डिजिटाइज करने की बात करते हैं तो आपके पास 2% का जीडीपी स्पेंड है हेल्थ केयर के ऊपर, और आपको कम से कम 4 से 5% तक इंक्रीज चाहिए टू स्पेंड एंड टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको डेटा सेंटर की तरह काम कर सके। इतनी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो डेटा जनरेट होता है इंडिया के अंदर से, उस डेटा को आज भी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक्सपोर्ट में किसी मेडिसिन कंपनी को, डिवाइस कंपनी को और फार्मा कंपनी को, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, फॉर पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट मेजर्स, दे नीड दैट डेटा एंड दे पे फॉर इट। बट वेयर डू दे पे? दे पे ऑन द डार्क वेब। हर हॉस्पिटल को हैक किया जाता है, हर हॉस्पिटल के ऊपर सारा डेटा चुराने के लिए हैकर्स लगे हुए हैं और इन सब को एसेटाइज करके डार्क वेब पर बेचा जाता है। इथिकली अगर इंडिया इस वक्त उस डेटा को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके, एसेटाइज करके सब्सक्रिप्शन पे दे सके, सारे नॉर्म्स मीट करते हुए जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में किए गए हैं, देन दिस सेक्टर विच इज़ टुडे अ फिलैंथ्रोपिक सेक्टर कैन बी एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर इनटू जीडीपी।
दैट इज द रीजन वाई डिजिटल जी, इनोवेशन। मगर मैं आपसे इसी पर एक सवाल पूछूंगी जो आपका जवाब है। तो दिक्कत आप कहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हमारे पास कानून की कमी है या कानून है लेकिन उसको लागू करने की कमी देख रहे हैं? आप कहाँ पर इस चीज़ में कमी पा रहे हैं? जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है लीडरशिप की इंटेंट बहुत क्लियर है। हम्म, इतने बड़े ट्रांजिशन के लिए जिस लेवल का कंटेंट होना चाहिए, जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन स्टेट और सेंटर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज एन स्टेट चैप्टर। मैं रिकमेंडेशन भेजूं या सेंट्रल एजेंसी रिकमेंडेशन भेजें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो जाएंगे या पायलट शुरू हो जाएंगे। और बिना फिजिकल पायलट किए हुए आप इतने बड़े डिसीजंस ले नहीं सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी आपको कदम कदम पर देखनी पड़ेगी। और हेल्थ केयर का डेटा है तो मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा चाहिए उसके लिए। These are issues which are lying in the prototyping and piloting of these ambitions. और मुझे लगता है इसके लिए जो भी पायलट्स और जो भी इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने इस वक्त उठाए हैं, इंक्लूडिंग द कैबिनेट अप्रूवल फॉर वन हेल्थ मिशन रिसेंटली अंडर द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इट विल क्रिएट नॉट ओनली फ्रेमवर्क जिससे कि आगे आने वाले समय में हम कोविड जैसी महामारियों से तैयार रहें निपटने के लिए, बल्कि एक पूरा कंपार्टमेंटल फ्रेम स्ट्रक्चर बना सके जिसमें प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ तीनों के ऊपर एक साथ उनके हेल्थ पर नजर रखी जा बिल्कुल, सके। कमी हमने वहीं देखी थी कि हम तैयार ही नहीं थे। तो अगर हम पहले से तैयार रहेंगे, जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर इतनी दिक्कतें, अगर इस तरह की कोई महामारी दोबारा आती, ईश्वर ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो कम से कम हमारी तैयारी ऐसी हो आगे आने वाले वक्त के लिए कि हमें सोचना ना पड़े कि अभी अगला स्टेप क्या लेना है, हम पूरी तरह से तैयार रहें। डॉक्टर अंकिता, आपके पास मैं आऊँगी कि अभी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट और फंडिंग की क्या चुनौतियाँ आप लोग देखते हैं? क्योंकि जो बात अजय सर कर रहे थे कि बहुत सारी लेंदी प्रोसेस होती हैं एमएसएमईज़ को लेकर, और वो दिक्कतें कई बार इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपको फिर दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि आपको अपना काम करवाना है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जब आप एक स्मॉल हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हो, सो ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मच लेसर, बिकॉज आप वी आर द ब्रिज। हम जो लोकल पेशेंट है, मतलब एक नॉर्मल जैसे 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो सारे उनकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि वो बिग हॉस्पिटल जा पाएँ। So these small hospitals or nursing homes, we create a bridge or a gap between those people so that their affordability, accessibility, a friendly atmosphere, वो मतलब घबरा ना जाए। जैसे बोला जाता है कि डॉक्टर के चेम्बर में आधी बीमारी तो पहले ही ठीक हो जानी चाहिए। सो वो हम वही क्रिएट करना चाहते हैं कि पेशेंट को तंगी ना हो। बट आप समझिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स इतने कम हो गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस तो सारे सब कुछ सेम है। अगर आप 500 बेडेड हॉस्पिटल चलाएं तब भी, या 20 बेडेड हॉस्पिटल चलाएं तब भी। सो फंडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। हम अपने मरीज़ को वापस नहीं भेजना चाहते, तो हम और उस चीज़ को कम कर लेते हैं कि चलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम रहे पर पेशेंट को जो भी खुशी हो पाए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़, उन्होंने छोटे हॉस्पिटल में एक पैकेज लगा दिया है। अगर आपकी कितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी या छोटी है, पर फिर भी उन्होंने एक लिमिटेशंस लगा दी हैं जो बिगर सेक्टर्स में नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हो एंड शॉर्ट इंटरेस्ट हो, मतलब द मिनिमल इंटरेस्ट हो। सो ये सारी स्कीम्स बहुत ज़रूरी है, हम इस चीज़ को आगे अगर ले जाएँ। नहीं तो ये MSMEs जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, एंड द फ्यूचर लाइज हियर बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पॉपुलेशन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन। बिल्कुल, डॉक्टर समीर, आपका भी ओपिनियन मैं इसमें चाहूँगी। जो बात डॉक्टर अंकिता कह रही हैं, ये दिक्कतें तो है ही, और आखिर में जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेहत की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो जब आते हैं अपने मरीज़ों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, तो वो यही उम्मीद लेकर आते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, हमारा इलाज ठीक से हो जाए। यही एक मेन मोटो होना चाहिए। फिर इसमें ये जो अड़चनें हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले जो हमें चीज़ समझनी है, दैट हेल्थ केयर इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। बिल्कुल, ओके, आई रिपीट दैट, हेल्थ केयर इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। मतलब हेल्थ केयर को सेटअप करने के लिए आपको बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। चाहे आप एक छोटा क्लिनिक लगा रहे हैं तो, या क्योंकि अगर आप छोटे क्लिनिक का एग्जांपल लीजिए, आपने क्लिनिक लिया, आपने उसका रेंट पे किया, बिजली पे करी, आपने वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बिठाई, राइट।
आपका जो इनकम आप जनरेट कर पाएंगे उससे वो लिमिटेड ही होगी, राइट? नाउ यू गो टू अ हॉस्पिटल, आपने एक हॉस्पिटल सेटअप करना है। आज की डेट में अगर आप एक मेट्रो सिटी में एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट इज अबाउट 1 to 1.5 करोड़ पर बेड, पर बेड। Oh my God. राइट तो अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल आज की डेट में एक मेट्रो सिटी में सेटअप करना चाहते हैं तो आपको 150 करोड़ रुपए चाहिए ऑन एन एवरेज। ये नंबर वेरी कर सकता है 10-20%, बट मार्केट स्टैंडर्ड आज की डेट में ये है। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटी में जाते हैं, जैसे कि आपने बोला कि बुलंदशहर जा रहे हैं या ऐसे कहीं जा रहे हैं, या वेरेवर आप टियर 2 टियर 3 सिटी का में जा रहे हैं, तो ये नंबर जो 1.5 करोड़ पर बेड है ये हो जाता है आपका अबाउट 60 to 80 lakhs, मे बी 90 lakhs पर बेड, पर बेड। क्योंकि इसके अंदर आप देखिए आपका लैंड का कॉस्ट है, आपका बिल्डिंग का कॉस्ट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी मशीनें लगेंगी, आपकी दवाइयाँ आएंगी, आपका स्पेशलाइज्ड मैन पावर आएगा। सो देर आर ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल इज़ नॉट अ बिल्डिंग, सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं। यहाँ पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं, आपको क्वालिटी लानी होती है अस्पताल में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, हर आदमी अच्छी क्वालिटी देना चाहता है। हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल ये चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हर डॉक्टर और हर पेशेंट ये चाहता है, हर डॉक्टर चाहता है, हर अस्पताल ये चाहता है, वो चाहता है कि मेरा पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं अगला पेशेंट भी ले लूँ। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर अ हॉस्पिटल और अ डॉक्टर टू कीप द पेशेंट ओवर देयर, राइट? सो दिस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। नाउ ऑन इसके ऊपर तो जो अब इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसका जो पे बैक पीरियड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल, अगर आपने एक अस्पताल खोला तो जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो लगभग 2 साल मानिए मेट्रो सिटी में, और टियर 2 टियर 3 में 3-4 साल हो जाता है, और आपको आपका कैपिटल निकालने के लिए बाहर उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी लोग जिनके आप बारे में सुनते हैं, वो इस चीज़ को फैक्टर करते हैं कि यार अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये एक फिनटेक कंपनी में या एक ई कॉमर्स कंपनी में लगाऊं या मैं एक अस्पताल में लगाऊं, मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न कब मिलेगा? सो ये कुछ चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस फेस अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल, और हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने फंड्स जुटाना और इतने बड़े स्तर पर चीज़ें करना। तो अगर कोई हिम्मत भी करे तो शायद आर्थिक मोर्चे पर वो फेल हो सकता है, वो पूरी तरह से उसको पीछे हटना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ वेयर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो इनिशियली जब भी कोई शुरू करता है, जैसे आप कोई भी अस्पताल की कहानी सुनेंगे तो हर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड जब उन्होंने शुरू करा तो वो एक MSME से शुरू हुए। जी, आप टाटा का नाम लीजिए, आप अंबानी जी का नाम लीजिए, आप कोई भी अस्पताल का नाम लीजिए, कोई भी कंपनी का, वो शुरू MSME से हुई थी। तो उस MSME को सपोर्ट करने के लिए हमें सारी चीज़ें करानी है कि वो कल को एक बड़ी कंपनी बने, हमारा और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कर पाए। मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैडम ने भी बोला था, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में वो सारी टेक्निक्स हों, वो सारी फैसिलिटीज़ हों, वो सारी दवाइयाँ हों जो बाहर के देशों में हो, कि हमारा पेशेंट बाहर जाने का ना सोचे। अजय सर, यहाँ पर मार्केट जो है वो लगातार हम देख रहे हैं बदल रहा है। इंटरनेशनल लेवल की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो भी हमारे बाज़ार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उसके ऊपर फिर टेक्नोलॉजी जो है वो भी बदलती रहती है। तो किस तरह से बाज़ार और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे MSMEs जो हैं उनके सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं और दिक्कतें भी आती हैं? जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो इंटरनेशनल मार्केट डोमिनेटेड बाय द इनोवेटर्स। वहाँ पे इनोवेटर्स जितने भी हैं वो डोमिनेट करते हैं। तो एक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन आप लेके जाएंगे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन जो है उसके बेटर है या इक्विवेलेंट है। उसके लिए अब फिर मैंने वही बोलना चाहता हूँ, क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल सारे पास होने चाहिए। और जितने भी ब्रांडेड मेडिसिन है, सपोज पेटेंट एक्सपायर किए 15 ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स में सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती हैं। फिर जो न्यू ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बनती है वो उससे बेटर भी बन सकती है। हमने बहुत सारे से फॉर्मुलेशन में अपने रिसर्च सेंटर में काम किया है, जो और ह्यूमन ट्रायल पे हमने प्रूफ किया है कि आवर मेडिसिन बेटर देन द इनोवेटर्स। जी, क्योंकि वो 15 ईयर्स पुरानी उनकी टेक्नोलॉजी थी, आज 15 ईयर्स में सारा कुछ चेंज हो गया। बहुत सारे मशीन्स आ गए, एक्सिपिएंट्स आ गए, जिससे आप बेटर आप मेडिसिन बना सकते हो एज ए इनोवेटर्स के। जैसे आपने सपोज टैबलेट की साइज़ छोटी कर दी, उसका वॉल्यूम कम कर दिया। आप जैसे कि आपने डॉक्टर्स मैडम इनको जानती होंगी, जैसे आपने बायोलॉजिटी बढ़ा दी,
ब्लड में जो प्लाज्मा में जो उसके कंसंट्रेशन होता है बढ़ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी लगा दिया आपने। फिर इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं और कर सकते हैं, जो इनोवेटर से बेटर हम कर सकते हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट फिर चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने से आएगा, और सेल करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है डॉक्टर के चैम्बर में जाके कि आवर मेडिसिन बेटर देन सम अदर कंपनी। तो उसके बहुत सारे डेटा हम शो करते हैं डॉक्टर्स को कि हमारी मेडिसिन बेटर कैसे हैं। जैसे आपके सेल्फ लाइफ आपने बढ़ा दिया, सपोज 2 ईयर्स है तो हमने 3 ईयर्स कर दिया। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो ओडी, जैसे आपका बीडी डोज है, सुबह शाम 2 टाइम खाना है, उसको हमने ओडी कर दिया। आपको 24 आवर्स में 1 मेडिसिन खानी है, उसमें टेक्नोलॉजी लगाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम काम कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत सारे कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है हमें सोच भी बदलनी चाहिए और अप्रोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि इंटेंट और कंटेंट से आगे जाना पड़ेगा अगर हेल्थ केयर सेक्टर को एजुकेशन के साथ साथ बाहर ले जाना है तो। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि कोविड के समय में जब पूरी दुनिया 2 ऐसे लोगों को देख रही थी जिन्हें इन्फेक्शन तो होता है बट एक व्यक्ति की जान बच जाती है और दूसरा व्यक्ति लो इम्यूनिटी के कारण नहीं जी पाता है। मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को हेल्थ केयर के बारे में जो दे सकता है शायद कोई दूसरा देश नहीं दे सकता है। और इस इंटेंट के साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें कोविड को, तो शायद हमने क्वेश्चन पेपर ग्लोबली डिफरेंट पढ़ा हो और भारत में क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हो। ये कभी मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में नहीं था, ये हमेशा आपकी इम्यूनिटी के बारे में था। और अगर दुनिया को कहीं इम्यूनिटी मिलेगी, या जिसको आप मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं, जिसके ऊपर इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में चर्चा भी की कि 100 से ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म प्लेसेस डेवलप किए जाएंगे और उन सब में दुनिया भर के लोग आकर आयुर्वेद को समझ सकें, हमारी कॉम्पिटेंस को समझ सकें, हमारे एक्सेलेंस को समझ सकें। ये अप्रोच हमें, शायद अभी का रेशियो है 3rd लार्जेस्ट हम फार्मा प्रोड्यूसर हैं वॉल्यूम में और 11th हैं वैल्यू में। इसको उल्टा करना पड़ेगा और ये तभी तय होगा जब हम इंटेंट कंटेंट के साथ एक्सटेंट पे जाएं, सोच भी बदलें, अप्रोच भी बदलें। और गवर्नमेंट इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि श्री अन्न जैसे प्रोजेक्ट को लेकर या फूड हैबिट्स को चेंज करने को लेकर, आयुर्वेद को और सिद्धा को मेन स्ट्रीम में लाने को लेकर काफ़ी कमिटेड दिखती है और ये सही समय है कि हम इसको दुनिया तक ले जा सके। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप सभी ने यहाँ पे साझा की, क्योंकि यहाँ पर जब सेहत से जुड़ा मामला आता है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस खबर पर तुरंत नहीं जाता जो सेहत से जुड़ी खबर आती है, शिक्षा से जुड़ी खबर आती है। तो हम सब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर नीयत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने या बिजनेस करने से थोड़ी अलग बात है और लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात है। इसलिए यहाँ पर जो बातें कहीं, अगर इस तरह की दिक्कतें कम हो जाएं ज़मीन पर आकर, तो बहुत आसानी से ये MSMEs आगे बढ़ेंगे और लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो देश तो अपने आप तरक्की कर ही लेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने साझा की।
Ladies and gentlemen, before we start this next session, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, how many of you are here who cannot live without your smartphones? Raise your hand. Lovely. How many of you cannot live without your home appliances, etc.? And I'm pretty sure there are a lot of gamers also here. How many of you are gamers? Raise your hands. You see, the reason why I'm asking this is because all of this, it involves something that is a buzzword at this point of time: semiconductors. And it is not just used in your phones, in your home appliances, in your cars, but it is also very, very crucial when it comes to healthcare, when it comes to aerospace, when it comes to defense. And that is the reason why it becomes so important that semiconductor is talked about. And who better to talk about semiconductors than my next guest, Mr. Shikhar Gupta. He's the Senior Vice President, RRP Electronics. A huge round of applause for Mr. Shikhar Gupta. Mic button वाला mic. Mr. Shikhar Gupta, he's the Senior Vice President of RRP Electronics. Mr. Gupta, welcome to NDTV and welcome to this conclave. Before I ask you anything, before I ask you about your company, before I ask you about anything else, what I want to know from you is how excited are you when you hear semiconductors, and what is happening in the world of semiconductors at this point of time? Semiconductors, like you started this topic in this forum, it's like the life of all the electronics. Like we as a company group, we are into defense as well. Even the chip to run that electronics is very important. We are following the Make in India vision of our Narendra Modi, Prime Minister, and to get that chip, to make it indigenized, we got into this for manufacturing of semiconductors in India. And as of now, I'm very excited to talk about semiconductors to this forum. Lovely. Why don't you tell us about your group of companies and what exactly inspired its journey into the semiconductor industry? Sure. So our journey started in 2018, where our defense establishment led by Mr. Rajendra Chodankar, RRP S4E. So we are into weapon sights, anything which sits on a weapon, be it for a day sight, be it a night sight. We are into long-range surveillance cameras, anything which sits on a border for border surveillance, about 10 kilometers, 20 kilometers. So when we were working into this field, we were doing indigenization. We did all the electronics, mechanical parts, the wirings, but the semiconductors got stuck, and it had the huge supply chains which disrupted our supply to the armed forces, the police forces. So that was the moment we wanted to enter into this space. And now our vision, since we have been working into thermal sights for night vision, those imaging modules have a $1 billion market all over the world, and there are few countries manufacturing it. So not to depend on them and have our self-reliance, we step into this, and very soon we'll be having sensors for day vision cameras, for night vision cameras in India. It's very crucial that you mention this, because what we have witnessed in the last couple of days, the terror attack that happened. And this is why it becomes very important, like you mentioned, you are involved in a technology that can help the country in a way bettering its surveillance systems, etc. Having said that, how do you see the semiconductor landscape evolving in the country over the next 5 years? And where does your company
fit in that particular vision? So, like I talk about the government missions, like the Make in India, the Semicon India, and now India is having about more than 100 billion demand for the semiconductors. India is definitely having a major high rank in the global semiconductor mission. So we'll surely see the supply chain shifting from the all over the globe to India, because there's rising demands. Secondly, we'll see a lot of talent coming back to India. There's a lot of talent which is lying outside India. They are seeing the opportunities, the capability India is making, and they will be coming back to do their bit in India. So, and if I talk about our company, we'll be having our more OSAT lines, which we call outsourced semiconductor assembly testing lines. We'll be having fabs. Oh, wow. So where we'll be doing prototyping of the chips, the testing of the chips. So in the coming years, we'll see this evolution in India, and definitely RRP will be having their bit as well. I also want to talk about something very interesting that you mentioned to me outside while we were having a conversation. You mentioned about, I'm pretty sure you know this very little known cricketer, the god of cricket, Sachin Tendulkar. What role is Sachin Tendulkar playing in your company? Because apparently he's very closely associated with your company right now. Even his association was very close to our heart, and we never thought it will go in this way. He started his journey where he wanted to be a part of semiconductor mission in India. So he see a lot of companies coming into India for semiconductors, and I just remember one of the thoughts when he was delivering his speech, that in a sports as well, when they're in their clean room or in the back room, everything is recorded on laptops. Their analysis for the bowling, the batting, it all depends on the laptops. So he was talking like the importance of the chips in the cricket as well. So then from there, he is now our strategic investor in RRP Group, and we are blessed to have his expertise, his knowledge, and the knowledge what he holds in semiconductors, which take this company into next level. And it is always great to be associated with somebody like a Sachin Tendulkar. Absolutely. Having said that, what has been your company's biggest milestone so far? So the biggest milestone, if I talk about, we are the fastest to set up the OSAT in the state of Maharashtra. And it's currently functional, and we have already done deliveries to customers in Europe. If you like to explain what OSATs is, Yes. because a lot of people, It's I think it's a technical term, a lot of people would want to understand that as well. Yes, so OSAT is outsourced semiconductor assembly testing. So anything, there's a wafer. From wafer to chips, OSAT is involved, where you dice the chips, you do grinding, there's about kilometers of wires which is put onto them, and after that it comes to your electronics. So OSAT is that key, that from the wafers to the chips, the making the chips, the testing of chips. So it's like a big process. Can you also give us a sense of any flagship products or projects that are currently under development in your company? So as of now, we are into all the legacy products, like we call QFN packages, we call BGA packages, and recently we had a tie-up with the company Deca Technologies based in USA. So what is unique about Deca Technologies, they are into wafer level advanced packaging. Okay. So these kind of chips are used in our iPhones. So their iPhones, all the latest IoT devices, the AI chips. So we are proud to say that very soon we'll be having those capabilities and manufacturing in India through our RPS4E. And because you mentioned that, a lot of these iPhones are going to be manufactured in India in the coming years, so it also becomes very crucial for you as a company as well, isn't it? Absolutely, because we as a company to supply them the chips with that will be also on the Make in India, and the supply chain will be more eased out. You know, this government, it has been speaking about semiconductors. It has been promoting semiconductors.
What is the kind of support have you received under this government and the semiconductor policy, or any sort of incentive schemes that this government has talked about? So, like I told, we are the first in the state of Maharashtra. So, Maharashtra has blessed us with the this scheme, investment schemes, where they have given us about 12,000 crores for setting up of OSAT, which is currently live. The pilot batch is live, and in the next phase, they'll be giving us about investment of 24,000 crores for setting up of fabs itself in Maharashtra, and they are also allocating us a land over there. So, we, as of now, the state, Maharashtra, has already approved a project for the semiconductors, and we are in process for the central application, the ISM application, which we feel very soon will be out as well. And before I ask you this last question, I also want to understand from you: is semiconductor the future right now? Definitely, definitely, it's future. It's the life for the humans, like all the gadgets we talked about. We are all dependent on all the mobiles, the laptop. So semiconductor is the life, because we could see when COVID happened, the disrupt in the supply chain, the dependency on the foreign companies for the chips. And even now in the automobile sector, we see a lot of huge waitings. So semiconductors is the life, and we need to indigenize it, have the go off the dependency of the foreign companies. Wonderfully said. Having said that, what's next for your company? Is there any expansion plan? Is there any new markets that you are eyeing? What is your company's vision at the moment? So as of now, we have done some tie-ups with Taiwanese companies, AMB Taiwan, and like I talk about Deca Technologies for iPhone, the wafer level fan-out technologies. So in the coming times, we are increasing our OSAT lines. As of now, we have 2 lines. We'll be going about 5 to 6 lines. We'll be setting up fabs where we'll be doing prototyping of these chips, the thermal imaging chips, eventually going into radars and lidars. So that's a plan in the coming times. All right, Shikhar Gupta, thank you very much for sharing your views, and thank you for having this wonderful conversation. Thank you so much. Thank you so much. Aditi? Okay.
All right, our next session is titled Everyday Innovations. We'll explore how innovative solutions can be integrated into daily life to drive positive impact and promote a more sustainable future. Please welcome Aditi Rajput, who is in conversation with Nitin Agarwal, CEO, Prayag Polymers, Suresh Tyagi, Vice Chairman and Whole-Time Director, Gold Plus, Haji Kamruddin, MD, Servocon Inverters. नमस्कार, इस खास सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एवरीडे इनोवेशन की हम बात करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो आधुनिक व्यापार और इंडस्ट्री में लगातार विकास की ज़रूरत पर रोशनी डालता है। इनोवेशन केवल बड़े बदलावों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे निरंतर सुधार जो होते हैं वो भी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं और साथ ही ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के पैनल में हम ऐसे उद्योग के नेताओं से चर्चा करेंगे जो सैनिटरी हार्डवेयर, ग्लास, इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर्स, वाटर स्टोरेज के क्षेत्र में अपने आप में दिग्गज नाम हैं और अपने अपने क्षेत्रों में इनोवेशन को हर दिन अपनाकर अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे सुधारों के माध्यम से बड़े बदलाव लाने में इन्होंने कामयाबी हासिल की, उसमें ये विश्वास रखते हैं। उससे न केवल अपने उनके उत्पादों की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जो है वो भी इन्होंने जीता है अपनी मेहनत से। आज हम इनसे जानेंगे कि एवरीडे इनोवेशन का क्या अर्थ है और ये उनके व्यवसायों में किस तरह से असर डालता है। हमारे पैनल में बेहद खास मेहमान हैं। सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। नितिन अग्रवाल साहब हैं, CEO हैं प्रयाग पॉलीमर्स के। नितिन साहब, आपका स्वागत है। सुरेश त्यागी जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं और वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर हैं गोल्ड प्लस के। हाजी कमरुद्दीन साहब हैं, MD सर्वोकॉन इन्वर्टर्स के। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोगों को आगे अभी एक लंबा सफ़र तय करना है, आगे जाना है और कई बार हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि लाइफ में करना क्या है। इन सब की जर्नी के बारे में आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि कैसे इन लोग आगे बढ़े। नितिन जी, अपने पिता की विरासत को बहुत ही कामयाबी के साथ आपने आगे बढ़ाया और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनोवेशन के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? किस तरह से छोटे सुधारों ने आपके व्यवसाय में बड़ा बदलाव लाया है? कई उदाहरण भी बताना चाहें और अपने सफ़र के बारे में भी बताएं। थैंक यू मैम। एज ए प्रयाग हम लोगों का हमेशा ये रहा है, जो चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक लग्जरी है उसको इंडिया में एक अफोर्डेबल बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए कि वो मासेस तक पहुंच सके। आज हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर एक जगह के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने पिछले 15 साल के अंदर अपनी जर्नी एक 70 प्रोडक्ट से आज 4,500 प्रोडक्ट तक लेके आए और प्राय ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कहीं ना कहीं लग्जरी में काउंट होते थे बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, और हमने यहाँ इंडिया में मासेस के लिए उसको अफोर्डेबल बनाया। बहुत बड़ा एग्जांपल है उसके अंदर प्लास्टिक टैप्स हम लोगों ने ऐसा बनाया जो आज 10-10 साल तक ऐसी कंडीशंस जहाँ पे पानी बहुत ख़राब है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अच्छे से परफॉर्म करता है। नो मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस है। सीपी फिटिंग हम लोग लेके आए, किचन सिंक्स लेके आए, पाइप एंड फिटिंग्स के अंदर अभी आने वाले टाइम में हम लोग जो PP साइलेंट पाइप या कंपोजिट पाइप्स हैं जो कि आज यूरोप या US के अंदर एक लग्जरी के अंदर या प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर आता है, हमारी कोशिश है कम से कम नहीं तो हम आज जो इंडिया में अवेलेबल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनसे 30 to 40% चीपर पब्लिक के लिए लेके आएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाजी कमरुद्दीन साहब, आपके पास मैं आऊँगी। 45 सालों से इस क्षेत्र में आप एक भरोसेमंद नाम है। इनोवेशन के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या नया कर रहे हैं आप? और अपने इस लंबे सफ़र के बारे में भी बताएं। जी शुक्रिया मैम। 35 साल हमारे सर्वोकॉन को हो गए हैं और इस 35 साल की जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। और चूँकि हमने बिल्कुल शुरुआत से जीरो से स्टार्ट किया है कि ना तो हमारे पास कोई पैसे थे, ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था
लेकिन वक्त के साथ साथ हमने इसको काम को शुरू किया 1990 में, और बहुत 2-3 हज़ार रुपये से हमने अपना काम शुरू किया था। तो उस वक्त के दौर में एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो धीरे धीरे हमने इसको आगे काम को बढ़ाया। पहले आप ये समझ लीजिए जो शुरुआत हमने की थी तो अपने जॉब वर्क से काम को स्टार्ट किया था, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 1995 में फिर इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, और 2005 में हमारी ये लिमिटेड कंपनी हुई। और अगर हम आज की डेट की बात करते हैं 35 साल के काफ़ी लंबे अरसे के बाद में, तो इस वक्त हमारा काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, और करीब 5-6 हज़ार डीलर नेटवर्क है, और हम अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे पास 4 सेगमेंट हैं सर्वोकोन के। तो मेनली तो सर्वोकोन जो है ना पावर सेक्टर में जाना जाता है। अभी हम लोग जो ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं तकरीबन 50 MVA तक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं। और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में तकरीबन हमारे पास 80 मॉडल्स हैं जो रूरल एरियाज़ में सारे कैटर करते हैं, जहां वोल्टेज 50-60 भी आती हो या ज़्यादा 300 वोल्टेज आती हो, आप सब जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घरों में नॉर्मली वोल्टेज काफ़ी कम आती है। अगर हम शहरों की बात करते हैं तो अब शहरों में तो काफ़ी हद तक वोल्टेज ठीक हो गई है, लेकिन अभी रूरल एरियाज़ में वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ वोल्टेज कम आने की वजह से आपके इक्विपमेंट नहीं चल पाते हैं। तो अभी आपके यहाँ अगर 50 वोल्ट भी आती है तो सर्वोकोन के पास स्टेबलाइजर्स 50 वोल्ट से भी है, आप अपना AC चला सकते हैं। इसी तरीके से पूरे जो रिटेल मार्केट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तकरीब 5-6 हज़ार डीलर नेटवर्क है। तो सब जगह जितने रूरल में जहाँ भी आप देखेंगे वोल्टेज की प्रॉब्लम हो या वोल्टेज ज़्यादा आती हो या नहीं आती हो, तो हमारे पास तीनों सोल्यूशंस हैं कि अगर जब वोल्टेज आपके यहाँ नहीं आती है तो आप सोलर लगा सकते हैं। तो सोलर का भी बहुत बढ़ता हुआ क्षेत्र है, काफ़ी तेज़ी के साथ में ऊपर उभर रहा है, तो आप सोलर का भी कर सकते हैं। और यानी हर तबके का आप लोग ख्याल जी रखते जी, हुए हमारे चल रहे पास सर्वोकोन के पास हर एक सोल्यूशन है, जी। इसलिए कहते हैं सर्वोकोन रखे सब कंट्रोल में। हैं। बढ़िया। सुरेश त्यागी जी, 1985 से जो सफ़र आपका शुरू हुआ, तो आपने ग्लास इंडस्ट्री में उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके उद्योग में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर दिन कुछ नया जोड़ा जाए, और अपना सफ़र जो शुरू हुआ उसके बारे में भी बताएं। हम लोगों ने एक बहुत छोटे से स्केल से अपनी इंडस्ट्री को शुरू किया। हम 2 भाई संस्थापक हैं इसके, और 500 रुपये से हम लोगों ने ये बिज़नेस शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रेडिंग स्टार्ट की ग्लास की, ट्रेडिंग से प्रोसेसिंग पे गए, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पे आए, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोगों को जो हम प्रोसेसिंग कर रहे थे उसमें हम लोगों को पूरा ग्लास नहीं मिल पाता था। हम लोग टेम्परिंग करते थे, गाड़ियों के ग्लास बनाते हैं, लेकिन जब ग्लास नहीं मिला तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपना ग्लास बनाएं। हमारे पास उस टाइम पैसे की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन कुछ सपोर्ट मिली और हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, और आज हम लोग 5 प्लांट लगा के इंडिया में 2nd नंबर पर हैं कि 5 ग्लास मैन्युफैक्चर हैं, जिसमें से हम अकेले इंडियन हैं। गजब। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इंडियन मार्केट हमारे को बहुत सपोर्ट करती है, और जो आज इस स्टेज पर हम लोग हैं, ये एक मेहनत और दूरदर्शिता हमारी ये है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं। पीछे मुड़कर देखने का तो इसलिए वो नहीं मिला कि आप जितने आगे बढ़ेंगे, पीछे को मुड़ कर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना कुछ खोएंगे। आप आगे को चलते रहिए, साथ तो आपके बहुत लोग हैं, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितिन जी, वापस एक बार मैं आपके पास आऊँगी। यहाँ पर ये बताइए कि इनोवेशन जो है वो रोज़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे सुधार हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बड़े बदलाव करने में, और ग्राहकों तक पहुँचने में, उनका भरोसा जीतने में, उन्हें संतुष्ट करने में। किस तरह से आप नए नए सुधार या छोटे छोटे सुधारों के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं, और कितना फ़ायदेमंद वो साबित हो रहा है आपके लिए? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा गुरु, टीचर एक कंज्यूमर है। हमारे पास एक मिड टर्म टीम है जो कंज्यूमर तक, डीलर्स तक, एंड यूज़र्स तक पहुंचती है, समझती है प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, उनके सजेशंस क्या हैं, उस चीज़ को लेते हुए प्रोसेस के अंदर चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते हैं। एक बैकएंड टीम है जो हमारे आज प्रयाग में लगभग हम 1500 लोगों की फैमिली है जो इस ब्रांड को यहाँ तक लेके आए हैं। एक एक प्रोसेस को चेक करना, उसके अंदर टीम का इन्वॉल्वमेंट देखना, उन लोगों को कैसे आसानी करना है, प्रोसेस को कैसे बेटर करना है, वहाँ से कैसे चीज़ें, या तो प्रोसेस से कुछ पैसा बचेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दोनों चीज़ों को देखते हुए टीम बहुत अच्छे से काम करती है
और कहीं ना कहीं हर साल के अंदर एक कोशिश रहती है 3 से 4% हम लोग प्रोसेस से कहीं ना कहीं कॉस्ट बचाते हैं और टीम की एफिशिएंसी और ईज टू वर्क उनको दिया जाता है। जी, कभी कोई नए एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा डर लगता है, एक नर्वसनेस होती है कि अगर इसको उस तरह से मार्केट में लिया नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्या होगा? किस तरह से उस पर काम कर रहे होते हैं? मैम बिना उसके तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। 2 तरह के रिस्क लिए जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म है जो कि ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं उससे आपको डे टू डे बिजनेस में ग्रोथ आती है। सेकंड, आज हमने प्रयाग ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर के अंदर, अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में नया क्या आएगा, वो कैलकुलेटिव रिस्क है। एक टाइम पे ये सोचा जाता था कि जो साल में 2 साल में कमा रहे हैं सोचेंगे नहीं कमाया, उस चीज़ को देखते हुए कैलकुलेटिव रिस्क को लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। सुरेश जी, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप भी अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी इस तरह से आप जब लोगों से जुड़ रहे होते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं? देखिए, वो तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने होते हैं। उसके बिना आपकी इंडस्ट्री कहीं भी ग्रोथ नहीं करेगी। जी, आपको डेली सीखने को मिलेगा, मार्केट भी आपको सिखाती है। बिल्कुल। मैंने एक बहुत छोटा सा वो देखा है कि इंस्टीट्यूट आपको एमबीए की डिग्री देता है, आपको सर्टिफिकेट देता है, आपको प्रॉपर मार्केट सिखाती है। जब आप मार्केट में पहुंचते हैं, कस्टमर आपको सिखाता है, माल बेच कर के आना खाली सेल्समैनशिप नहीं गिनी जाती, आप उसको बेच आए, उसकी पेमेंट ले आए, तो तब आप वहाँ पर कंप्लीट हुए। सबसे बड़ी बात कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों ने शुरू से आज तक जो कंपटीशन देखते आ रहे हैं, हम उसी कंपटीशन में ही काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्टेज पर आज पहुंच रहे हैं कि हम लोगों ने अभी कर्नाटक में एक यूनिट लगाई है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लगाई है। कहीं पर भी आज तक इतने कम टाइम में प्लांट नहीं लगे हैं वर्ल्ड में, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कहीं भी या रिपोर्ट ली हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमने इतने कम टाइम के अंदर और 3 प्लांट हम लोगों ने वहाँ पर लगाए, जिसमें एक सोलर ग्लास है। सोलर ग्लास के लिए अभी तक इंपोर्ट मैक्सिमम ग्लास होता है, लेकिन अभी 3-4 लोग यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड है। तो सरकार से भी उसमें हेल्प मिल रही है और हमारी सेविंग भी है हमारी कंट्री की कि भाई कम से कम जो हम लोग यहाँ ग्लास बना रहे हैं उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी वस्तु है। और पर्यावरण का भी सुरेश जी कुछ खास ध्यान रखा जाता है जब इस तरह की नई चीज़ें की जाती हैं, नए प्लांट्स लगाए जाते हैं? ये जब हम लोगों ने ज़मीन परचेज की तो एक 100 एकड़ में, एक दूसरी 200 एकड़ में, इसमें सिंगल कोई पेड़ नहीं था 5 फीट का भी। अच्छा। और कम से कम आज उसमें कई लाख पेड़ हैं जो हम लोगों ने खुद ने लगाए। और आज वहाँ का माहौल देखने के बाद 100 किलोमीटर तक शायद इस टाइप की कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी। जो रोज़गार वहाँ से पैदा हुए और जो हम लोगों ने एनवायरनमेंट को देख करके वो किया, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है, आसपास के लिए भी है, जो इंडस्ट्री को करना चाहिए। और वो हम लोगों ने वहाँ पूरा किया। हम लोगों ने आसपास के एरिया को जितना डेवलप किया मैं सोच नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है ये। हम लोगों ने ये सोच करके नहीं था कि भाई हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। वो टाइम टू टाइम जो नई चीज़ आप कह रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ आपको करना होता है। ये उसी का पार्ट है कि आपने ऐसी जगह खरीदी, उसमें इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती थी। वो इंडस्ट्री, वो जो ज़मीन थी वो इस टाइप से थी। जब हम लोगों ने देखा कि 1 साल हो गया उसको लेवलिंग करते हुए और वो प्रॉपर लेवल नहीं हो पाएगी क्योंकि जो ज़मीन है वो 100 एकड़ है, तो हम लोगों ने टाइम ऐसे हिसाब से लिया कि उसकी फर्नेस 6ठी मंजिल पे लगा दी, जो शायद वर्ल्ड में अकेली फर्नेस है, वरना फर्नेस सब ग्राउंड फ्लोर पे होती है। जी जी। सरकार का बहुत इतना अच्छा सपोर्ट था। मैंने इस टाइप के ऑफिसर नहीं देखे जिस टाइप का ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर है, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, कि अगर रात को भी कहीं 1 बजे फ़ोन किया तो वो लोग अवेलेबल हैं। अच्छा। तो मैंने इस टाइप की सपोर्ट, काम तो सब करते हैं, इंडस्ट्री लगवाती गवर्नमेंट है, आदमी नहीं लगा सकता। अगर आदमी चाहे, शुरू में बहुत दिक्कत आई, धरने प्रदर्शन इस टाइप की बहुत चीज़ें हुई, लेकिन सरकार से सपोर्ट मिली और आज वो इंडस्ट्री खड़ी है। और उस एरिया में दूर दूर तक आप कहीं भी जाएंगे, जो हम लोगों ने रोजगार का सिस्टम बनाया, हम लोगों ने सारे फ्रेशर लिए। 90% मेरी इंडस्ट्री के अंदर फ्रेशर हैं। और ये ग्लास इंडस्ट्री में दूसरी जगह मैंने अभी तक कहीं सुना नहीं है कि कोई इस तरीके से रोजगार के लिए अपनी सोच को रखता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत बड़ी बच्चे बात है सुरेश जी, क्योंकि पर्यावरण का भी खास तौर से आप ध्यान रख रहे हैं इसमें, और लाखों पेड़ आपकी तरफ से लगाए गए हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ बात है। हाजी कमरुद्दीन साहब, थोड़ा सा अब हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ें कि बाज़ार में जब आप कूद जाते हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे होते हैं,
वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बिल्कुल गला काट प्रतिस्पर्धा कई बार चल रही होती है। ऐसे में मार्केटिंग प्रमोशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। किस तरह से जब आप प्रमोशन के लिए जाते हैं, क्योंकि बात ये है कि अल्टीमेट गोल ये है कि ग्राहकों तक पहुंचना है, ग्राहकों का भरोसा बनाए रखना है, क्या कोशिशें की जाती हैं जब प्रमोशन की बात सामने आती है? ऐसा स्पर्धा तो बहुत ज़रूरी है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं आएगी। किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ग्राहक ही हमें बताता है, समझाता है कि साहब उनके में तो ये चीज़ है, आपके यहाँ नहीं है, या आपके यहाँ है तो वहाँ पे नहीं है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है और ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ में ही काम होता है। और आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो नो डाउट लोग मांगते हुए आते हैं। आज हम सर्वोकोन की बात करते हैं कि तो हमने जो शुरुआत की और करते हुए आज आगे आए हैं, तो जो भी हमारे यहाँ बड़े ब्रांड थे आज हमें वो बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पहले अपना मार्केट में कब्जा किया हुआ था। तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट हैं, अभी हम 3 साल और 5 साल की अनकंडीशनल गारंटी पे भी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो साथ में सर्विस, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो अभी सर्विसिंग में हमने बहुत सारे सुधार किए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम 24 घंटे के अंदर सर्विस प्रोवाइड करवा दें, और नहीं तो 48 घंटे में तो आपको ज़रूर सर्विस मिल जाती है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि हमारा मानना है अगर हम कस्टमर को, ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, रेट रिजनेबल देंगे, तो हमारे साथ ज़रूर आएगा। तो यही वजह है कि हमने अपनी क्वालिटी को अच्छा किया और रेट को कम किया, सर्विस को भी बहुत अच्छा बढ़ाया है। उसकी वजह से आज मार्केट में सर्वोकोन की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रोडक्ट होने की वजह से उसका भी एक बेनिफिट मिलता है कि अब एक ही ब्रांड के नीचे अगर हम 4-5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कंपटीशन उसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो वो भी एक वजह है कि इसकी वजह से हम लोग आज मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। साथ में निरंतर हम इसमें अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज बेटर करते हैं और इसको कम कीमत में किस तरह से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जैसे भी हमारा नया प्लांट और एक स्टार्ट हो रहा है, तो उम्मीद है कि अगले महीने तक हम लोग उसको चालू कर पाएंगे। तो उसमें भी हमने 20 MVA तक के सर्वो सोलर ट्रांसफार्मर जो है कि उसको हम सोलर ट्रांसफार्मर वहाँ बनाने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सोलर का है। और सोलर के अंदर अभी जैसे रूफटॉप भी हम लोग कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा जो है ना, अभी हम ट्रांसफार्मर भी दूसरे लोगों को सप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी में भी आपने एक बड़ा प्लांट, जी। यूपी में भी आपने इन्वेस्ट किया हाँ, सोलर यूपी प्लांट। में अभी हम लोग कर रहे हैं, गाजियाबाद हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। ये। तो वहाँ पे ये प्लांट हम लोग अभी दूसरा वाला चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग हापुड़ में ही हैं और वहाँ पे अभी इंडस्ट्रियल एरिया में सारा ऑलरेडी चल रहा है हमारा प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो अभी आपने बात बताई है, तो मेनली जो होती है ना, हम अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना रहे हैं, साथ में गाँव देहात तक हमारा प्रोडक्ट जाए, क्योंकि जितने रूरल एरियाज हैं वहाँ भी वोल्टेज की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उस पर भी हमारा मेन फोकस है कि हम लोग उसको अच्छा कर सकें। साथ में जो दूसरे और जो बाज़ार में दूसरे प्रोडक्ट हैं उससे हम कैसे बेहतर बन सकते हैं उस पर भी काम करते हैं और निरंतर इसके लिए हम लोग अपनी R&D करते रहते हैं। पूरी टीम्स है उस पर काम कर रही है। तो ये जो लगातार निरंतर जो काम करते रहना है वो चीज़ है जो आपको लगातार बनाए रख रही है, रुकना नहीं है। हाँ, यही रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम कैसे और बेहतर दे सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा कस्टमर अगर खुश है तो आपके प्रोडक्ट को कोई रोक नहीं सकता, आप उसको जरूर आप आगे बढ़ेंगे जाके। नितिन जी, अब अगर थोड़ी चुनौतियों की बात करें, दिक्कत की बात करें, क्योंकि जब आप इतना बड़ा बिजनेस रूल कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो वो आसान नहीं होता। कई सारे फैक्टर्स का आपको सपोर्ट चाहिए होता है, कई सारे अप्रूवल होते हैं, कई सारे लाइसेंस के मामले होते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकारी चीज़ों में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है, कहाँ कहाँ आप लोग दिक्कतें महसूस करते हैं और आपको कहाँ लगता है कि सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि सरकार ये कहती है कि बहुत कोशिशें की जा रही हैं ताकि बिज़नेस जो है वो आसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ें। देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने काफ़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया। सिंगल विंडो बोल रहे हैं, काफ़ी जगह हुआ है। फिर भी अभी काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, लेबर के लिए आपको अलग जाना है, पॉल्यूशन के लिए अलग जाना है, टैक्सेशन के लिए अलग जाना है, पावर के लिए अलग जाना है। फिर भी लेकिन जो पहले एक समय लगता था कि 1-1.5 साल लगता था कि इंडस्ट्री में सारे अप्रूवल लाने में, आज वो चीज़ें 3 से 4 महीने में होता है। एक टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आज भी हमें आज इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा होना है। जिस तरीके से आज डायनामिक्स चल रहे हैं, यदि गवर्नमेंट ऐसे टाइप्स उन कंट्री से लेके आए जहाँ वो टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है और यहाँ पे वो सस्ते में आ सके, तो हम एक बेटर चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर और सुधार होंगे तो आगे बढ़ने में तेज़ी आएगी, स्पीड पकड़ेंगे बिजनेस इस तरह से। बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आपसे भी मैं करना चाहूँगी, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
देखिए, जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो चुनौतियाँ तो इंडस्ट्री में आएंगी, छोटे काम में भी आती हैं और बड़े में भी आती हैं। तो ये तो एक रूटीन है आपका। आप अपनी अगर बढ़ोतरी करनी है तो उन चीज़ों को छोड़ करके और आप अपने काम में निरंतर बढ़ोतरी करें। जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमने एक प्लांट लगाया, फिर 2 लगाए, हम हर 3 साल में एक प्लांट लगा रहे हैं। हमारी जो प्लानिंग है इसको ऐसे ही आगे लेकर के जाने की है। तो जब तक आप उस चीज़ को सोचेंगे कि ये इसमें प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो आएगी, बिना प्रॉब्लम के आप घर से बाहर निकालिए तो निकलते ही स्टार्ट हो जाएगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। हो सकता है आपको गाड़ी ना मिले, ड्राइवर ना आए, कुछ और दिक्कत हो जाए। तो उस चीज़ों को छोड़िए और निरंतर अगर आपको बढ़ना है तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप अपनी बढ़ोतरी की साइड रहिए। दूसरी चीज़, हम लोगों ने कुछ चीज़ों में जो इंडस्ट्री का नई चीज़ों का हमने खोज कर रहे हैं जी। अभी तक हमारी इंडस्ट्री में कहीं भी जो हमारी चीज़ें वेस्ट हैं, जैसे हीट हमारी वेस्ट होती है, अभी हम लोगों ने एक प्लांट लगा रहे हैं जो ग्लास इंडस्ट्री में पहली बार लग रहा है। हमारे को वहाँ से 4 से 5 मेगावाट के करीब बिजली मिलेगी, तो वो हमारे लिए एक सेविंग है और आगे दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी उसके अंदर आएंगी। जो ग्लास कलट होता है मार्केट के अंदर, हमारे यहाँ से जो भी मटेरियल आ रहा है बाहर कोई भी वेस्ट नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन नहीं है। जो हम ये कलट बाहर जो मार्केट में होता है ग्लास, आपने देखा होगा दुकानों पर ग्लास टूट जाते हैं, तो वो इकट्ठा करके कंपनियों को बेचना चाहते हैं, जो हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक मार्केट में वेस्टेज नहीं है और हमारे लिए यूज़ हो गया है, तो ये भी उसी का पार्ट हुआ। तो हमारे लिए कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है और उसको आप छोड़ दीजिए कि दिक्कत तो आएंगी, आप बढ़ते जाइए, आपका रुकने का सवाल ही नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, आपकी नेक नियति ठीक होनी चाहिए, आप फेल होने वाले में कभी नहीं है कहीं पर भी। बहुत शानदार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जर्नी के बारे में बताया और शायद हम सबको यहाँ पर ये सीख ज़रूर मिलती है इन तीनों मेहमानों से कि दिक्कतें तो आ रही हैं लेकिन ये लोग रुके नहीं हैं और तभी इतने बड़ा नाम इन लोगों ने अपना एक यहाँ पर कमाया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बच्चों को बोलना चाहूँगा जी जी कि आप बेटा, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, 100% सक्सेस होंगे। और हम भी आप ही की तरह हैं, आप लोगों के पास तो बहुत अच्छी एजुकेशन है। मैं और मेरा ब्रदर 12th पास हैं और हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं जो आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं। तो आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए, आज तो बहुत हेल्प मिलेंगी आपको हर तरीके से। माइंड में ये नहीं रख करके चलना कि शायद ये हो नहीं पाएगा, आप ये सोचना ये 100% होगा। आपके पीछे आपके गार्जियन भी हैं और अगर हमारी इंडस्ट्री से कहीं भी आपको लगता है आप कभी विजिट कीजिए, आप सभी लोग इनवाइट हैं, उनसे भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी। Ladies and gentlemen, with this we come to the end of an exciting day of insightful discussions, practical solutions and collaborative vision building for a robust MSME ecosystem. Ladies and gentlemen, thank you for joining us today for the Delhi chapter of the NDTV Emerging Business Conclave. I would once again like to take this opportunity to thank our sponsors. The NDTV Emerging Business Conclave is co-presented by Panasonic and Motorola. Our strength partner, Ambuja Cement, banking partner, SBI, driven by Volkswagen, eyewear partner, Titan Eye Plus, special partners, Axis Mutual Fund and RRP Electronics, co-powered by Agarwal Namkeen, Zupi, Prayag Bathware, Gold Plus Group, Amba Shakti, Sri Giriraj Sweetie Supari, Protens Antacid Gel, Servocon, Rungta Steel and Vectus Tags. Thank you very much.